And now we will take a look at two more basic topics. First one is called translation of axis, also referred to as shift of origin. So the situation is extremely simple. Okay, first you people look at the red two lines, which basically are the original or old coordinate axis. Now suppose we shift the origin to some other location. Okay, then what will happen to the point P here? Okay, we know that because the red axis have been moved into some other location, and if we now consider that as our new pair of axes, then P's coordinates would change, isn't it? And because we have taken, in this particular case, we have taken both the axes closer to P, we expect that the coordinates of P would decrease, considering that it remains in the first quadrant of both coordinate systems. And we can easily prove this. Okay, we can easily prove that if this is the old x coordinate, if this is the new x coordinate, okay, then small x is actually capital X plus something, and that happens to be the x coordinate of the new origin with respect to old coordinate system. That's as easy as it gets. Okay. A fancier word for this is transformation. Okay. A fancier word for this is a transformation. We transform the coordinates from one system to other system. Okay. Cool. So I hope you understood that, how the derivation is done. Now there are some uses of this translation of axis. One use you people may already be knowing, and that is to analyze the equations of conic sections in their simpler forms. Okay. So this is it. Use is to view the given equation of curve in a simpler form. Look, curve exists even without equation. That's what we used to do in school. ट्रायंगल है, लाइन है, सर्कल है, और भी कर्व्स थे, तो उनके इक्वेशन पता होने की जरूरत नहीं है हमको. But we yesterday saw that coordinate geometry has this power of solving geometry problems using algebra techniques. इसीलिए इक्वेशंस की जरूरत है. तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके हम उसको एनालाइज कर सकते हैं. ओके, सो this 10th problem, you read it, you tell me whether you can solve it on your own. If yes, I will tell you one more use of shift of origin and then we will go to the next topic. तो यह एक बार आप पढ़ लेना ये प्रॉब्लम. अगर आपको लग रहा है कि ये आएगा तो मैं नहीं करूंगा यहाँ पे. If you think we need to solve it, I will. We could give this a try, sir, on our own. Yeah, all you need to do is you need to replace x by x plus h squared, y by y plus k, okay, yeah, minus 7 equal to 0. And they're saying that terms containing linear powers are missing. Okay, so linear powers are missing means you'll say equate coefficient of capital X, not capital X squared. Equate coefficient of capital X to 0. Equate coefficient of capital Y to 0. Solve, get H and K. Okay, now those who haven't responded, I think you can solve this on your own. It's pretty trivial, right?
Okay, now I want to tell you one more use of this shift of origin. Okay, let me put it here. So this use of shift of origin is in solving some differential equations. Okay, and not all of course, but one specific type of differential equations. तो मान के चलो आपके पास एक ऐसा differential equation है dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c2. शायद आपने ये differential equations में देखा होगा. I don't remember me telling you this, but yeah, anyways, let's say we are given this differential equation. Okay, अभी इसका प्रॉब्लम ये है कि ना कि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, ना कि इसको हम होमोजीनियस बोल सकते हैं, क्योंकि C1 और C2 दोनों हैं. तो हम क्या करेंगे, we will shift the origin. Okay, so we will transform y to capital Y plus k and x to capital X plus h. ये करने के बाद हमारा जो dy by dx है ना, वो चेंज नहीं होगा. Because among these 6 letters here, y capital Y k, x capital X h, k and h are constants, so they don't really play any role. ठीक है, तो इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम h और k ऐसे निकालते हैं ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए. ओके, वी सिंप्लीफाई numerator and denominator such that no constant terms remain in numerator and denominator, then differential equation transforms to homogeneous differential equation. और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स. काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है वो, लेकिन पता होना ज़रूरी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से, विच इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, द डिफरेंशियल इक्वेशंस बिकम्स easier to solve. ठीक है, if you want I can give you a numerical on this as homework on shift of origin. एक सब मैं आपको दे दूंगा, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी प्रैक्टिस रहेगी. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है क्या शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में? नहीं सर. Yeah, it's very clear. Cool. Now there is another topic which is not, so to speak, there in the syllabus. It's called rotation of axis. अब ये rotation of axis, this is also a transformation in the coordinates. For example, suppose we have a point P here. Okay, suppose we have a point P there. तो इसके जो old coordinates है वो कैसे निकालेंगे? Our usual process by dropping the perpendiculars, right? So this would be x and this would be y. Okay, now if we rotate x-axis in anti-clockwise direction by an angle theta, and if we do the same thing for y-axis, oh sorry, this should have been y mu. Okay, so this angle would also be theta, simple geometry. Then P may be specified by a new pair of numbers, new pair of coordinates. Okay, so I'm just dropping the perpendiculars here, and now these points where
the perpendiculars meet the new axis, ये हो जाएंगे p के नए कोऑर्डिनेट्स। तो ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है अभी कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को निकालना स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के का इस्तेमाल करके एंड थीटा ऑफ कोर्स। तो it's easy. You can try this if you want, but we are more interested in finding the coordinates of p in terms of small x small y and theta. ठीक है, ये शायद मैट्रिक्स आपने देखा होगा मैट्रिसेस में। ओके, सो टू गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स we either use matrices or complex numbers. How? If you want to determine the new coordinates using the matrices, the transformation matrix, another fancier word, transformation matrix is cos theta sin theta negative sin theta cos theta. Okay, cos theta sin theta negative sin theta cos theta, and just multiplied by the coordinates, old coordinates x. This can also be done using complex numbers where we use the Euler's formula. So capital X plus I capital Y is small x plus I small y into e to the power minus I theta. ओके, तो ये एक आपको थोड़ा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ये कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में, ओके, जैसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में ये था, है ना, तो अगर हम लोगों को नए चाहिए तो हम x माइनस एक्स करते थे, राइट, वी वुड सबट्रैक्ट। स्मॉल y was capital Y plus k, so कैपिटल y is स्मॉल y माइनस k। वैसा ही यहाँ पे अगर नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ओके, इफ यू वांट न्यू कोऑर्डिनेट्स, देन दैट ऑन द अदर साइड यू डू हैव दैट नेगेटिव साइन। तो आपको कैसे उसको मेमोराइज करना है वो आप कर दो। प्रूफ ऑफ कोर्स है इसको, आप नहीं करेंगे प्रूफ, लेकिन प्रूफ है उसका, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, यू कैन वर्क दैट आउट, यू आर इंटरेस्टेड। ओके, दिस इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। अभी ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मैं अगर आपको वो बताऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी। तो इसका मेन यूज़ है along with the shift of origin. I tell you the use. Okay, to identify the type of conic. Okay, to identify the type of conic from general equation of second degree. ओके, तो ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. Okay, so what you do is you shift the origin to what you call as center of the conic, and then you rotate the axis so that it transforms to the standard form. Okay, to identify the type of conic from general equation of second degree by shifting and rotating, by shifting the origin and rotating the axis. इसके बाद क्या होता है? Okay, this equation changes to, now it depends, I mean, if you want you can have it as y squared equal to 4ax capital X squared by capital A squared plus or minus capital Y squared by capital B squared equal to 1. तो एलिप्स हो गया या हाइपरबोला हो गया। सर्कल को रिकॉग्नाइज करना आसान है। Sometimes it also simplifies to xy equal to constant, which is a rectangle in hyperbola. तो ये इसका यूज है। आगे अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोर्स लिया तो ये सब चीजें आपको आएगी। ठीक है,
But who knows, they might ask you a very simple but yet tricky problem on the rotation of axis. So you know the formula at least. You can spend more time on thinking how to solve the problem and not on deriving the rotation transformation. Okay, तो इसका एक problem अभी हम solve करेंगे. Sometimes these problems can also be obtained by using common sense. Let's see. If a point P43 is rotated through an angle theta in anti-clockwise direction about the origin, then the coordinates of P in the new position. Now here what they're doing is they're not rotating the coordinate axis, they're actually rotating the point. Okay, they're actually rotating the point. Okay, so what will happen? Pay attention. Let's draw the circle first. Okay, let's draw the circle first. Let's let this be the origin, the x-axis and the. Now P4, 3 is the point that you have got. Okay, P4, 3. So larger x coordinate, smaller y coordinate will be somewhere here. Okay, so you know this angle is acute now because it is the case for all angles of all points in the first quadrant. However, because its x coordinate is larger than its y coordinate, you know that this angle theta is less than 45. Raise your hands if you understand that. Theta here is less than 45 degrees because x is greater than y and both are positive. तो अभी अगर हम इस पॉइंट को अबाउट ओरिजिन रोटेट करेंगे तो जो न्यू पोजीशन होगी वो y एक्सिस के राइट को ही होगी, isn't it? Because theta is less than 45, theta plus 45 will be less than 90 after rotation. What does it mean? मतलब हमारा पॉइंट कहीं पे तो रह गया. Alright, अभी कुछ चेंज होगा क्या? Can we determine the coordinates of point P dash by merely looking at the options? Yes, it's option A. Because theta plus 45 is still less than 90, the polar coordinates of point P are telling us that theta will not be different. Isn't it? Theta will not be different. Rather, I would say cos theta and sin theta will not be negative. Okay, so theta plus 45 less than 90, therefore x and y both will be positive. Okay, x and y both will be positive. So क्या आएगा उसका option? Okay, so that's what we would usually do. But what if we had some options where both x and y coordinates were positive? So how would you go about solving such a problem? अभी तो हमने ऑप्शन से एलिमिनेट किया, लेकिन अगर हम लोगों के पास वो ऑप्शन से एलिमिनेट करने का ही ऑप्शन नहीं है तो कैसे करते हैं? कैन यू टेल मी हाउ वुड यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस? अगर मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, हाउ वुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम? Yes. Is the question clear? The question is, had I asked you to determine its actual y coordinate, actual x coordinate, how would you go about doing that? Yes. So isn't the actual y coordinate just given like 4, 3? Where? So what exactly do you mean by the actual y coordinate? Isn't the point already given? No. What I'm saying 4, is 3. no. What I'm saying is P is rotated through angle 45, so it will move to a new position, right? Yes, sir.
So I'm saying without eliminating the options, how will you determine the new x and y coordinates of p or p dash? That is my question. Oh, Okay. And Shrey. So we would see whether the y coordinate is greater than the x coordinate. नो या यू ऑल सी हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है ना अभी जो अभी हम कर रहे हैं वो इन चारों ऑप्शंस के लिए सही है. करेक्ट. क्यों सही है? क्योंकि हमारे पास है एक ही ऐसा ऑप्शन जिसमें अभी जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं वो सब एप्लीकेबल. लाइक आई सेड इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू आर सेइंग इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी ग्रेटर देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. राइट. अगर हम लोगों को उन्होंने ये सिंपल क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अगर ऐसे पूछते वो, then product of coordinates of p in new position is, तो इसको कैसे सॉल्व करते आप और कुछ नंबर्स दे देंगे आपको. ये अभी सर वो जो मैट्रिक्स था उससे सॉल्व करते हैं. हाँ उससे सॉल्व कर सकते थे 7/2 और 4 ऑप्शंस है ना. मैट्रिक्स से कर सकते हो लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अच्छा ठीक है पहले मैट्रिक्स से करेंगे. फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स एनालिटिकली. यस दनिश गो अहेड. एंगल क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री है तो हाँ थीटा को पॉजिटिव लेंगे और 45 पाई/4. नहीं 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 नहीं. सी इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना पॉइंट को रोटेट कर रहा है एक्सिस को रख के वैसे ही रख के. गॉट इट. यस. तो अगर हम लोग ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट फिक्स रख के एक्सिस को रोटेट करेंगे तो हमारा एंगल -45 हो जाएगा. गॉट इट. नहीं समझा सर. देखो -45 मतलब क्लॉकवाइज 45. हाँ बिकॉज सी लुक हम लोग दिए प्रॉब्लम गिवन इज वी आर रोटेटिंग p टू p डैश. करेक्ट. यस सर. लेकिन हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है यहाँ पे ये पॉइंट्स के रोटेशन की बात नहीं कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट रोटेटिंग द एक्सिस. गॉट इट. यस. Now in your case or in our case rather, if you apply the transformation with theta 45, it would mean that point P will now be in the fourth quadrant. अगर ये एक्सेस तुम रोटेट करते हो 45 से ज्यादा तो फिर P एक्सेस के नीचे चला जाएगा and it is not happening, we know that. Got it? It is staying in the first quadrant. Is that clear? हाँ सर समझा. जैसे रिलेटिव मोशन में होता है ना वो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे. सो instead of taking theta as 45 degrees we should take theta as -45 degrees. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? Because rotating point in anti-clockwise direction is equivalent to rotating axis in the clockwise. Has everyone understood this? Yes, sir. Okay. तो क्या था वो मैट्रिक्स? cos -45 1/√2. फिर sin -45 था वो. नेगेटिव साइन एंगल को है, साइन को नहीं है.
साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव साइन थीटा, सो नेगेटिव 1/√2। यहाँ पे फिर 1/√2 आएगा वो, और यहाँ पे तो 1/√2, राइट। तो रोटेशन मैट्रिक्स में थीटा को -45 डालना है, 45 नहीं डालना है। आई होप यू गॉट दैट। फिर क्या आ गया आपका 4 - 3, तो 1/√2 और 7/√2। Have you understood this? Yes, sir. Got it. Now got it, right? अच्छा, तो I had another approach to solve this problem, and that was using polar coordinates. Okay, that was using polar coordinates. I don't know whether you thought about this, but this could also be a way to solve it. Okay, what is our new, old theta? Or let's say it's a theta 1. Okay, nothing old, let's say theta 1. Theta 1 is tan inverse of 4/3. Sorry, 3/4. Okay, tan inverse of 3/4. What is theta 2 or theta nu? It is tan inverse of 3/4 plus pi/4. Correct? And if you calculate the distance between origin and the points, you will realize that the distance is not changing. The distance is still 5. Is that clear? Yes, sir. तो मैं ये सोच रहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट से अगर हम करेंगे तो हमारा x कोऑर्डिनेट न्यू विल बी 5 into cos of tan inverse of 3/4 plus pi/4. आई नो ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन ये भी एक मेथड है। y is equal to what? X is r cos theta, y is r sin theta. करेक्ट। और ये tan इनवर्स ऑफ 3/4 को आप लोग sin इनवर्स ऑफ 3/5 और cos इनवर्स ऑफ 4/5 भी तो लिख सकते हो ना, करेक्ट? Because if you take that angle theta here and try to present it as angle of a triangle, right triangle, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो हाइपोटेन्यूस हो गया 5। तो अगर tan थीटा है 3/4, तो sin थीटा 3/5, cos थीटा 4/5। तो जैसे जैसे आपको लगेगा वो फॉर्मूला, तो वैसे वैसे आप tan इनवर्स को रिप्लेस करो cos इनवर्स से, या उसको रिप्लेस करो sin इनवर्स से। तो हम इसका y कोऑर्डिनेट निकाल के देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज दैट? साइन ऑफ a प्लस बी साइन a cos b। ओके, अभी साइन a को निकालने के लिए मैं उसको 3/5 ले सकता हूँ। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a 4/5 साइन b। तो ये आ जाएगा 7/5√2 इंटू 5, so that will be 7। और वैसे y x कोऑर्डिनेट का भी आप कर सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मल्टीपल वेज ऑफ Yes. सॉल्विंग। पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस से किया, लेकिन एंगल नेगेटिव लेना पड़ा। वो एक नई चीज़ हमको सीखने को मिली कि अगर पॉइंट हम एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो एक्सिस रोटेट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन, अगर पॉइंट के पोजीशन चेंज ना करें तो। और तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट से भी यूज कर सकते, ठीक है? सो Sir, हाँ, यस। I didn't understand the statement that when you would rotate the points in let's say clockwise direction, the axis rotates anti-clockwise. No, no. You can achieve the same effect by using two different rotations. If you are rotating the point, don't rotate the axis. Okay. But if you are keeping the point fixed, rotate the axis in the other direction. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Right? Makes sense? Yes, sir. Yeah. Okay. So that's what I'm saying. I'm not saying that we are rotating both.
either point in one direction or keeping point them axis in the other direction. ठीक है? Okay, so method 1 is here, which is what I would do if we're solving this problem in exam. Method 2, as an illustration of how to use that transformation matrix, and method 3, using polar coordinates, giving you the same answer. Okay, all right. Okay, now let's solve some locus problems from nest. तो इसमें आपको थोड़ा straight lines का लगेगा. I hope you have revised, because we are going to start the revision of lines after this. Let's see. Consider the set of lines in the plane at a unit distance from the origin and intersecting both x and y axis. Let S be the set of midpoints of the segments of these lines joining their point of intersection with x-axis and y-axis. Then S is set the conic, no, not conic, curve 1 upon x squared plus 1 upon y squared 4, 1 upon x squared minus 1 upon y squared 4, x squared plus y squared 4, y squared equal to 4x. अच्छा, तो इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो लाइंस है वो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है, एंड वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी such lines. Precisely speaking, this set of lines actually represents the set of tangents to unit circle centered at origin. Raise your hands if you get that. If I draw a unit circle whose radius is 1, और अगर मैं इस रेड सर्कल को सब डायरेक्शंस में, सब जगह पे जहां पर भी पॉसिबल हो सके टेंजेंट्स निकालूं, तो मुझे एक एनवलप मिलेगा टेंजेंट्स का. ओके, आई विल गेट एनवलप, एंड दैट एनवलप विल बेसिकली बी the required set, right? This is unit circle. तो इसमें हमने कौन सी इफेक्ट यूज की जो हमको पता थी स्कूल की? Length of perpendicular drawn from the center of the circle to a tangent is equal to radius. Correct? Okay. तो अभी हम लोगों को क्या करना है? Let S be the set of midpoints of segments of these lines joining their point of intersection with x-axis and y-axis. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा एडवांस लगेगा, तो हम लोगों को इस ऐसे लाइंस का इक्वेशन निकालना पड़ेगा. ओके, नाउ आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, बट यू कैन एक्चुअली मॉडल और पैरामीटराइज यूनिट सर्कल एज cos theta comma sin theta. ये आपको पता है cos square theta plus sin square theta equal to 1? Yes? Yes, sir. It's polar coordinates for circle. R1 है उसका. और अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ओके, लेट्स से इफ वी कंसिडर अ पर्टिकुलर पॉइंट whose coordinates are sin theta and cos theta, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 1. ये सबको क्लियर है क्या? हालांकि मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप लोग ये यूनिट सर्कल लेके इसका dy by dx निकाल के अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा. यस, एनी प्रॉब्लम? सो सपोज दिस सर्कल, द टेंजेंट्स इक्वेशन इज x x1 प्लस y y1 इक्वल टू 1, एंड x1 is cos theta and y1 is sin theta. तो ये सबको क्लियर है क्या? अगर नहीं क्लियर है तो आई विल एक्सप्लेन इट. Clear, sir. Clear? ये क्लियर है. परफेक्ट. Cool. Now what is S? Another set is there.
Okay, now you realize that theta can be between 0 and 2 pi. So theta is, so to speak, a parameter. Let S be the set of midpoints of segments of these lines joining their point of intersection with x and y axis. मतलब बेसिकली हम लोगों को इसके इंटरसेप्ट निकालने, ये जो लाइन है हमारी इसके. ओके, सो कैन वी फाइंड इट्स इंटरसेक्शंस विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस? यस, इसका x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा sec थीटा कॉमा 0, और इसका y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा 0 कॉमा कोसेक थीटा. Raise your hands if you understood that. Perfect. Okay. अभी थोड़ा थोड़ा आपको ये हो जाएगा कि भाई कोसेक सेक है तो साइन कॉस भी आएंगे. बेसिकली साइन कॉस है तो उसका रिलेशन शायद यूज करना पड़ सकता है. ठीक है. ओके. नाउ let S be the set of midpoints. Okay. So suppose M is a point which belongs to us. Okay. M is a point that belongs to us. और हम लोगों को इसके x और y कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन चाहिए. तो let's say xm. Use midpoint formula. Sec theta plus 0 by 2. What is ym? 0 plus cosec theta by 2. करेक्ट. तो अभी हम लोगों को थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा so that we can get a relation between xm and ym, and that's pretty easy now. Okay, what can I say? I can say that sec थीटा को LHS को लेके आओ तो वो cos थीटा हो जाएगा, और xm को वहाँ पे सेंड करो तो it will be 1/2. Okay, it will be 1/xm, और ये कोसेक थीटा को RHS से LHS को लेके जाओ तो वो साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 pi. And now you know what to do, don't you? Cos squared theta plus sin squared theta is 1, तो थीटा को एलिमिनेट करो. क्या आ जाएगा? 1/4x squared plus 1/4y squared equal to 1. तो x squared y squared डिनोमिनेटर में एडिशन 4, ऑप्शन है. क्लियर है? Yes, sir. It's clear, right? Okay. The same problem can also be solved. I mean, this equation by using the normal form of equation. I will tell you that today. Okay. One more on locus. No, you read it. If you think you can solve it, I won't take it. You read it. Okay. Yes, sir. We can do the same forms. You can do it, right? Cool. No, I don't exactly remember which option is right, but it's either C or D. Okay. Yeah, please take it as homework and solve it. Even if you cannot solve it, there's absolutely no need to worry. I will send you the solution. That's one part. And second part is when you solve problems which you haven't solved before, that is where your true learning is going to happen. क्योंकि तब आप ये स्टेट में जाओगे कि ये मुझे पता है और ये मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे. Okay, so please try the problems on your own. That will be of immense help. Even if you solve 2 or 3 problems independently, I think that's some achievement. Cool then. So we'll return to these locus problems later as well in circles and conics, but as of now, let us discuss straight lines. Okay. So the remaining discussion on lines will mostly be
just stating the terms and simplifying. Okay, now let's start with inclination and slope. Can anyone define inclination for me? Yes. हाँ श्रेय बताओ. So it's the angle the line makes with the positive direction of x. Yes, it's the smallest angle the line makes with positive directions of x. So this is theta 1. This is theta 2. And we always start measuring it from positive x-axis to the line. So this is theta 3. Okay, so always remember inclination is angle and slope is tan of the inclination. Slope is ratio or trigonometric ratio particularly. Okay, तो slope का standard symbol m है and it is tan of inclination. And you may have learned this already, m is equal to tan theta. Correct? So except for vertical lines, all lines have their slope defined. Okay. Now there is one more way of finding the slope. Okay. There is one more way of finding the slopes, and what is that? Slope is also change in the y coordinate upon change in the x coordinate. ये सबको पता है ना? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Yes. Yes, sir. Yeah. This is also the average rate of change of y with respect to x. For lines, doesn't matter, average and instantaneous rates are same. तो इसका dy by dx भी m ही है और delta y by delta x भी है. ठीक है. Cool. Now I think we should emphasize a bit here on the line as locus of a point. तो अभी ये locus of a point का जो कल definition देखा था, we said that it is a set of points satisfying some geometrical condition. Correct, set of points satisfying some geometrical condition. तो line के लिए geometrical condition क्या है? ओके, तो लाइन के लिए ये geometrical condition ये है कि अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो उस लाइन पे और अगर आप उसका स्लोप निकालते हो वो सेम है. ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन हियर? द geometrical condition is that okay, inclination of segment joining any two points on the line is always the same. In other words, tan of that is also same, so delta y by delta x is also same. And all the forms of equation of line are based on this simple geometrical condition. Okay, let's try to visualize this. Suppose this is x-axis, and you might say we already know it, and I know it's true because in the definition of inclination also we have said line angle made by the line with positive direction of x-axis. Okay, but suppose you want to decide whether a given equation represents a line or not. Okay, तो आप क्या करो, 3 पॉइंट्स ले लो. कोलिनियरिटी का कंडीशन तो देखा ही था, लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर yb माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स है, ये अगर कांस्टेंट आया और ये अगर सेम आया वाई सी माइनस वाई बी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स बी, फिर भी आप कह सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. क्यों? क्योंकि स्लोप तो सेम ही होता है. So you got another condition for collinearity.
by finding delta y by delta x for two pairs of points. Clear? Slope of line is always constant. Yes? Yes, sir. Cool. So we'll now go through the equations. If you know the equations, please tell me. What is the standard equation of a vertical line? X equal to constant, right? And for horizontal lines, y equal to constant. Everyone knows this, right? Yes. Yes. Okay. Suppose we know the slope of the line, and suppose we know coordinates of one point on the line. What is the equation? Yes, what is the equation of the line? Y1 is equal to next one. No. No, I'm not asking the relation between y1, x1 and n. I'm saying what is the equation of the line which must have x and y in it. Y minus y1 equals m into x minus x. Yes. तो अगर हमने एक्स वाई या कोई भी पॉइंट लिया तभी स्लोप वही आएगा. That's what we have used there. Inclination of segment joining any two points on the line is always same, or delta y by delta x equal to constant. And we had said that line is a locus, so we say let xy be any point on the line. इन सभी इक्वेशंस के लिए ये कॉमन स्टेटमेंट है ना? Got it, Mangalam? Y minus y minus m into x minus x1. That's the thing. Okay. Yes, sir. Got 2 it. points form. Suppose we are given coordinates of 2 points on the line. How do we determine the equation? It's easy. We Equate this. yes, correct. ठीक है, तो क्या चेंज हो गया इसमें? ये m था यहाँ पे, उसके बदले सिर्फ y2 माइनस y अपन x2 माइनस x1. ठीक है ये? ओके. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अच्छा, one thing here. Let me make it clear what exactly is an intercept. Okay, a line can have two intercepts. Okay, and intercepts are actually coordinates. So suppose our line intersects y-axis at a point. Its x coordinate is by default 0 and its y coordinate is called y-intercept. Okay, suppose our line meets the x-axis at this point, then its x coordinate is called as x-intercept. ठीक है? These being coordinates can be negative, positive, or simultaneously be 0. Okay, cool. So if we are given the slope, say m, अभी ये जो हम इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, ये यूजुअली y इंटरसेप्ट होता है. Okay, this is usually y intercept denoted by small c. The equation is y equal to mx plus c, often used in physics practicals also. ये सबको पता क्लियर है ना? It's slope point form only. Y minus y1 is y minus c up equal to m into x minus x1. x1 0 है क्योंकि इसमें y coordinate नहीं है. Sorry, x coordinate 0. Clear? Slope intercept form. सभी में x, y ये variable point है, but it sticks to the line, it never leaves. Then we have double intercept form. तो double intercept में क्या है? a, 0 is intersection with x-axis. 0, b is intersection with y-axis. और इसको combine करके हम बनाएंगे
double intercepts form. You can use 2 points form there as well, but it's more convenient to have it in this form. X upon a plus y upon b equal to 1. You can try proving it or obtaining it using slope intercept form or 2 points form. ओके तो अगर आप लोग इससे familiar नहीं हो तो प्लीज आप एक बार इससे go through करिए from NCERT book. That's why yesterday I was asking you to come up with the revision of this before we begin today's session. Okay, cool. Okay, so this is interesting. This is normal form. अभी जो हमने नेस्ट का PYQ सॉल्व किया वो x cos theta वाला वो इससे हो सकता है. Okay, so this is normal form. So what do we know in the normal form? In the normal form, we are given P as the length of perpendicular from origin to the line. Okay, and alpha is the angle made by the perpendicular with x-axis. तो अल्फा ये लाइन का स्लोप नहीं है, अल्फा है वो परपेंडिकुलर ने किया हुआ है. Got it? So suppose this is your line. Okay, let me zoom in now. Suppose this is your line and you are dropping a perpendicular from origin on this line. Let us say m is the foot of the perpendicular, so length of OM है p, small p. Okay, and this angle is alpha. Okay, that angle is alpha. So when we have such a case, then we get the normal form of equation. अभी इसमें normal का meaning है perpendicular. Okay, you know that. So the equation of the line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. So if you want a lines equation, or if you want a set of lines whose distance from origin is let's say 2 units, तो उसका equation हो जाएगा तो वहां पे वो यूनिट सर्कल था इसलिए यहाँ पे 1 लिया. Got it? That is how normal form is useful in some cases. Followed? अभी इसमें से कुछ फॉर्म्स जो है ना वो 3D में प्लेन्स के लिए भी आते हैं. Okay? Let me just add that. In 3D coordinate geometry, equations of plane or I would say equation of plane in different forms resemble above forms. For example, normal form. वो प्लेन में होता है Lx plus My plus Nz equal to P. श्रेय तुम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो ना? Yes, sir. तो ये तुमको था लाइंस और प्लेन्स में याद आया क्या? नॉर्मल हाँ से याद आ रहा है. ओके, सो वो P होता है डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to plane. Okay, now here we had got the double intercept form. Here we can call it triple intercept form if you want. X upon A plus Y upon B plus Z upon C equal to 1. Okay.
फिर और क्या है? या वही दो फॉर्म्स, ठीक है, कूल। तो आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू टू प्रैक्टिस standard problems on normal form, double intercept form, slope intercept form, 2 points form, slope point form, and these vertical and horizontal lines. ठीक है, because that will eventually be useful to you in other problems. ठीक है, अभी आखिरी फॉर्म डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? लुक, थीटा इज इंक्लिनेशन here. So if theta is known, it means it cannot change. Okay, for a line it cannot change. x1 y1 is any point on the line. तो यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है? r is the parameter. Okay, r is the parameter. In other words, suppose we have a line like this, which is making an angle of theta with x-axis. Okay, and suppose we have a point x1 y1. Okay, तो अगर मैं हमारा जो भी पॉइंट है वो अलग अलग लोकेशंस पे लूँ, ओके, तो मेरे r के वैल्यूज चेंज हो जाएंगे. लेट अस से दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3. ये r4 जो अभी हमारा हम दिखाएंगे ये नेगेटिव है. ओके, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली पॉजिटिव. इनफैक्ट व्हेन r becomes 0 you get x and y as the point where you are located currently, x and y. करेक्ट? तो यहाँ से यहाँ तक r4, यहाँ से इस पॉइंट तक r5, और यही यहाँ से यहाँ तक r6, and r4, r5 and r6 are negative. Correct? And because the slope is same, okay, because the slope is same, we can say, yeah, in fact, we can use vectors here in some sense to arrive at the result. Okay, how can we use vectors? Look, मान के चलो हम लोग इस पॉइंट पर जाना चाहते हैं. Okay, suppose we want to go there. ठीक है, say we want to go from A to B. We know the distance between AB. The distance between AB is R2. Okay, distance between AB is R2, and we want to go to point B. We want to find the coordinates of B using coordinates of A and the fact that the distance AB is R2. तो कैसे इसको कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. A bar is x1 I cap plus y1 j cap. Okay, अभी A bar जो हमारा वेक्टर है, let's say origin is here. Okay, let's say origin is here. Suppose this is A bar. तो B bar निकालने के लिए हमको A bar में AB bar वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, है ना? Right, we would like to add AB bar vector to A bar so that we'll get B bar. Right, so let's write it using triangle law. अभी AB bar क्या है? अगर इस एंगल को आप थीटा ले रहे हो, इस एंगल को, तो ये एंगल भी थीटा ही हो गया ना, दिस एंगल. तो AB bar आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मिल जाएगा. पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरह ही लगभग हो गया वो. इट विल बी r3 cos theta I cap plus r3 sin theta j cap. Correct? What will be r3 cos theta? The horizontal component. What will be r3 sin theta? The vertical component. तो दोनों को ऐड करके AB पर आपको मिल जाएगा. And that's exactly what you are saying there. Correct? So xb will be x coordinate of A plus r3 cos theta, y coordinate of B, y coordinate of A plus r3 sin theta.
Okay, sometimes they ask you to find the coordinates of a point on a line which is, let's say, at let's say 3 units from me. तो अप्रोच कैसे करना है समझ नहीं आता, तो एक्चुअली वो पैरामेट्रिक फॉर्म का प्रॉब्लम होता है, राइट? इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. Clear? Yes, sir. Good. Okay, now we come to the general form of equation of line. This form is important because in all the subsequent formulae for angle between two lines, distance between two lines, distance of a point from a line, then in pair of straight lines, standard equations, we need general form only. Okay, so in this general form, we have all the terms in the equation of line, including the x term, the y term, and the constant term, if any, on one side. Okay, that's the general form. Ax plus by plus c equal to 0. Okay, from this we can arrive at multiple results. First of all, let me tell you the slope. Slope is minus a by b. अभी ये स्लोप कैसे माइनस ए बाय बी हो गया? इजी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करो. बी वाई को ले लो माइनस ए बाय माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइड बाय बी, so minus a by b plus minus c by. ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो हमारा स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाय बी. दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज टू फाइंड द स्लोप इट्स नेगेटिव ए बाय बी. अल्टरनेटली आप इसका डेरिवेटिव लेके भी स्लोप निकाल सकते हो अगर भूल गए कि कैसे करना है. डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो a इंटू 1 प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0. इम्प्लिसिट किधर हो गया ये, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस ए बाई बी. क्लियर? कैन वी फाइंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट तो निकल गया, इट्स माइनस सी बाई बी, राइट? ये वाला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सेकंड. एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? y को 0 डालो तो माइनस सी बाय. Okay, and any form you take, the previously discussed forms, it can always be simplified to general form. ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना? Yes. No, sir. Let's solve some very simple but basic problems on straight lines. First, for specifying a straight line uniquely, how many geometrical parameters should be known? 1, 2, 3, 4. 2. अभी इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप? ax प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0 है, करेक्ट? आप कहोगे तीन पैरामीटर्स लगेंगे इसको, लेकिन नहीं लगते हैं 3 पैरामीटर्स. उसके 2 एक्सप्लेनेशन है. एक तो कोई भी नॉन जीरो पैरामीटर से डिवाइड करो. So you actually need b by and c by, which are ratios, so only 2 parameters. इसका और एक एक्सप्लेनेशन यहाँ से भी आएगा. ये जो भी फॉर्म्स है इसमें हम लोग 2 ही चीजें बता रहे हैं, स्लोप पॉइंट, 2 पॉइंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, in normal form alpha and p, है ना? And in this parametric form we are specifying theta and x and y, so it's as good as only 2 parameters. ठीक है? So remember, for a line you need to know 2 geometrical parameters only. ठीक है? Okay. अभी ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके स्नेल्स लॉ पर भी ये कर सकते हैं. In the adjacent figure, equation of the refracted ray is, a ray is coming at an angle of 45 degrees with negative x-axis. It is undergoing refraction at 1,0. It is bending towards the normal and making an angle of 30 degrees. Refracted index भी निकाल सकते हैं इससे, लेकिन equation of refracted ray निकालने के लिए क्या लगेगा?
पॉइंट तो रेडी है, स्लोप चाहिए, है ना? वी नीड टू नो द स्लोप, x माइनस। क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? क्या हम लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? दिस पॉइंट इज a, और हमारी जो लाइन जो उन्होंने अभी दिखाई है रिफ्रैक्टेड, वो ऐसी है। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degrees विथ वर्टिकल, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइन। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। सो दिस विल बी tan, and how much is tan 120? minus root 3. तो y equal to minus root 3x plus root 3. Okay, minus root 3x plus root 3 will be equation of refracted ray. A possible question would be something like that. Possible MCQ in physics. Instead of giving angle of incidence, angle of refraction, they may give us refractive index. तो यहाँ पे हम लोगों को स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ता just to find the refractive index. ठीक है? Is this clear? Yes. Yes, sir. Cool. Okay. ये आता है क्या सबको? Acute angle between two lines. Do you know the standard formula? If yes, please tell me. If theta is the acute angle between the lines, how to find tan theta? I don't know this. You don't know this. This is very basic. Acute angle between two lines. Who knows the formula? Tan theta. So M1 minus M2 1 plus M1 M2. Yes. Where M1 and M2 are slopes. Oh, this is okay. I've seen this, but I don't know it is this the acute angle between the lines. You have seen this before, right? Yes, sir, I've seen it before, but I didn't know it was this particular. Yeah, acute angle between two lines मतलब यही formula. Okay. Let's solve this. The triangle formed by the lines x plus y equal to 0, 3x plus y equal to 4, x plus 3y equal to 4 is isosceles, equilateral, right angled, none of these. Okay. Now, the condition for perpendicularity is m1 into m2 equal to -2. तो अगर वो आ गई तो राइट एंगल्ड है प्रूव हो जाएगा. राइट एंगल्ड है तो इक्विलैटरल नहीं हो सकता. आइसोसेलेस है क्या चेक करना पड़ सकता. Okay, so this is for perpendicular lines, m1 equal to m2 for parallel lines. और m1 m2 -1 कहाँ से आया? 90 है अगर एंगल तो ये 0 हो जाएगा. That's why it has come. ठीक है, तो बताओ पहला लाइन का स्लोप क्या है? x plus y equal to 0 का. Yes, minus a by b, so -1. 3x plus y equal to 4 स्लोप क्या आ जाएगा? minus a by b minus 3. X plus 3y equal to 4. What is the slope? Yes, please. -1/3. है ना? -1/3. तो परपेंडिकुलर है क्या ये लाइंस? No, they're not perpendicular because none of them
Rather, if we take any two of the three slopes, we don't get -1, we get 1. कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पे माइनस साइन आता तो वो हो सकता था. ठीक है, तो कैसे करोगे अभी आप इसको? अप्लाई द फॉर्मूला. लेट्स टेक दीज टू, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, 2 by 4, तो ये 1 by 2. Now let's take these two. अभी इक्विलैटरल भी नहीं है वो, क्योंकि tan थीटा फिर 1/√3 आता. कौन है? m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So it will be -3 plus 1 -2 by 3, 4 by 3. दोनों का tan सेम आया, क्या मतलब हुआ इसका? So it's an isosceles triangle. Isosceles. Okay, it is an isosceles triangle. -1, okay, इसका भी निकाल देंगे, 1 और 3 का tan थीटा. एक मिनट, हमने किसका निकाला? ओ सॉरी, L1 और L3 का ही निकाला है मैंने, माय बैड. L1 और L3 का ही निकाला है. So let's find it for L1 and L2 then. Sorry, L2 and L3. L2 and m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. -9 plus 1 -9 plus -8, तो 4 हो गया है. Oh no, sorry, 4 by 3, 4 by 3. -8 by 3. What? Cool, तो यार आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ठीक है ना, अक्यूट एंगल सेम है तो आइसोसेलेस हो. इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, किसी को? Yes, sir. या ये पता है सबको, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हाउ टू फाइंड इट? Yes, suppose we are given a point. And suppose we are also given a line. How far is the point from the line? तो ये डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, इसके प्रूफ में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है. कैसे निकालेंगे इसको? Do you know the formula? Mod ax1 plus by1 plus c upon root a squared plus b squared. You know this or not? Yes, sir. पता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन 4 पढ़ो और बताओ कैसे कर सकते हो. ओरिजिन से ही स्टार्ट करो. आई थिंक एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस वुड बी बेटर. लग रहा है ओरिजिन ही आएगा, चेक करो. पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 लाइन्स. या वही आ रहा है. यस, इक्विडिस्टेंट. Yes, sir. अभी ना अगर हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते ना, ऑप्शंस नहीं होते, तो कैसे करते हैं? प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल है वो, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 लाइन्स निकालना, राइट? उसका एक अप्रोच ये है, देखो,
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 लाइन्स, इसका क्या हम सिचुएशन विजुअलाइज कर सकते हैं? इक्विडिस्टेंट को कर सकते हैं। देखो, I'm not saying we should be doing it by that method because that method is very lengthy, but it is possible without finding the without knowing the options. Can we determine the point? Yes, we can, but I'm just giving an outline of the procedure. Okay. Consider this in circle. Okay. तो अगर आपने 4x plus 3y plus 10 equal to 0 वो लाइन 5x minus 12y plus 26 equal to 0 लाइन 2 और लाइन 3 7x plus 24y minus 50 equal to 0. अगर ये तीनों लाइंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो आपको वर्टाइसेस मिलेंगे ABC. हम लोगों को चाहिए एक ऐसा पॉइंट जो तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है, so that must be the in center of the triangle. Raise your hands if you get that. Right, it has to be the in center because इन सेंटर से किस तीनों साइड्स को अगर एक सर्कल निकाला जो टच कर रहा है तो वो सेमी सर्कल. एंड डिड वी नॉट राइट अ फॉर्मूला फॉर इन सेंटर्स कोऑर्डिनेट्स यस्टरडे? ax1 plus bx2 plus हाँ, वो फॉर्मूला से आ जाएगा फिर. ठीक है. So it's doable analytically also without eliminating the options. But I think most of you will do it by eliminating the options, isn't it? तो एक नोट लिख देंगे यहाँ पे. Preferred way is eliminating the options. Preferred way is eliminating the options, but solvable analytically by in center method. Okay, solvable analytically by in center method. ये फॉर्मूला पता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का? mod of c2 minus c1 divided by under root a square plus b square. Correct. So the situation will be this. दो लाइंस आपको दिए रहेंगे. These could be two diametrically opposite tangents also. Okay. Now the thing is, to determine the distance between these two using the formula, we should be very careful. These could also be banks of a river in case of physics problem. Okay, distance between the lines. You need to make sure that A and B are identical. जैसे अभी इस प्रॉब्लम में देखो, distance between the lines 5x plus 3y minus 7 equal to 0 and 15x plus 19y plus 14 equal to 0. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि पैरेलल लाइंस है, -5/3 दोनों का स्लोप है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में a1 और b1 3 है और दूसरे इक्वेशन में a2 और b2 15. So formula cannot be applied directly. Okay. Either multiply first equation by 3 or divide second equation by 3.
दोनों में से एक तो करना पड़ेगा आपको बिफोर यू अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि अगर हमारे पैरेलल लाइन से ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू 0, तो इनका जो डिस्टेंस है वो है मॉड c1 माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपने ये सेम नहीं लिए, मतलब a को 5 b को 3 लेके ही सॉल्व किया, तो फिर आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, मतलब यू विल नॉट गेट द राइट आंसर। सो यू ईदर मल्टीप्लाई first equation by 3. In this case c1 will become minus 21 and c2 will remain 14. In this case, if you divide the second equation by 3, c1 will remain negative 7 and c2 will become 14 by 3. Either way you do it, you will get the same answer, but make sure that a is same for both lines and b is also same for both lines. Correct? And one more thing, as far as possible fractions को avoid करो, तो ये प्रेफर करो इससे। आंसर वही आएगा लेकिन फ्रैक्शन के कैलकुलेशंस में एरर होने के ज़्यादा चांसेस होता है, तो आप लोग फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करना ही प्रेफर करो ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। करेक्ट? तो ये कंप्लीट कर देंगे अभी। क्या हो जाएगा फिर डिस्टेंस? c1 माइनस c2, तो माइनस 21 माइनस 14। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो फिर 5 और 3 नहीं ले सकते हो आप, ए बी क्या लेना पड़ेगा आपको, ए बी 15 और 9। करेक्ट? So it will be 225 plus 80. Okay, 225 plus 81. Can you simplify that? Yes, numerator will be 35. Denominator will be 306. It's divisible by 9. तो 3 को कॉमन लेके 9 साइड डिवाइड करेंगे उसको। Yeah, 35 by 3 root 34 okay. ये followed है? Yes, sir. Yeah, these are all standard types. Okay. I want to take 2 more topics. Actually, we are running out of time. Anyways, we'll take this and then we'll stop. Linear inequalities के दो versions, ax plus by plus c greater than 0 and ax plus by plus c less than 0. Apart from their involvement in straight lines, they're also useful in linear programming problems, that is LPP. ठीक है? तो इसका logic काफी आसान है. If a point doesn't lie on a line, okay, if a point doesn't lie on a line, then of course it will either lie on this side or it will lie on this side. Okay, now we cannot say a priori that this region is greater than 0 and this region is less than 0. We cannot say. Or decide करना पड़ेगा. Okay, so let's try to answer this question. The points 2, 1 and negative 3, 5 are along the line. Same side, opposite side, can't say none of this. Obviously, we can say whether they are on the same side or on the opposite sides. तो none of these भी नहीं हो गया. तो कैसे कर सकते हो इसको? Easy. If ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c, ax1 plus by1 plus c, ax2 plus by2 plus c have same sign, then x1 y1 and x2 y2 lie on same side of line ax plus by plus c equal to 0.
अगर एक का पॉजिटिव आया दूसरे का नेगेटिव आया तो अपोजिट साइड, दोनों का नेगेटिव सेम साइड, दोनों का पॉजिटिव सेम साइड। गॉट इट? तो चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 2,1, 3 into 2 minus 2 into 1, ये +1 को छोड़ देंगे, उसमें कुछ ओके वेट वेट वेट, नहीं साइन का इशू है ना, मैग्नीट्यूड का नहीं है। 3 into 2 minus 2 into 1 plus 1, तो ये पॉजिटिव आया। ओके अभी दूसरा 3 into -3 minus 2 into 5 plus 1, ये नेगेटिव आया। तो क्या कंक्लूजन है? अपोजिट साइड्स। चेक इट। (2,1) -3,5, तो दोनों के बीच में से लाइन जाएगी, जानी चाहिए अगर हमारा एनालिसिस सही है तो। 3x minus 2y plus 1 equal to 0. See, they indeed lie on the opposite side. Yes, so that's pretty easy region to be recognized. तो देखो, जिस पॉइंट जिस रीजन में 2,1 है वहां पे पॉजिटिव आया, so for our line 3x minus 2y plus 1 greater than 0 is this region, because 2,1 lies on, because 2,1 produces positive side. No need to verify it for any other point, it will always be there. तो ये हो गया उसका दूसरा साइड। ओके क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। कल हम लोग ये फैमिली ऑफ लाइंस का एक टॉपिक देखेंगे, फिर एंगल बाइसेक्टर का देखेंगे एक, और उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का थ्योरी थोड़ा सा है वो ख़त्म करके फिर वी विल गो टू more advanced MCQs on straight lines. We have spent more time on locus and straight lines because we need them in circles, conics and also in other topics. Cool. तो स्टार्ट करेंगे सर्कल से। हमारे 3 टॉपिक्स हो गए थे इसमें 2D ज्योमेट्री में। फर्स्ट इज वी डिस्कस्ड द लोकस, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइंस किया था, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी किया था। एंड इन बिफोर वी स्टार्टेड लोकस हमने कुछ फार्मूले भी डिस्कस किए थे। 2 of them were the section formula and distance formula. Okay, तो ये दोनों फॉर्मूले आज हम सर्कल्स में यूज़ करेंगे। And today's lecture will be mostly a theory lecture. We will not be solving any MCQ. उसकी वजह ये है कि I don't want to solve just formula based direct MCQs. Okay, तो हम पहले theory डिस्कस करेंगे, and I think there is enough theory of circles today to be discussed. ठीक है, तो let's start. Look, you people have already studied circles, and even before we study circle in 2D geometry, इससे पहले भी हम स्कूल में सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, आर्क्स और उन सब चीज़ों के बारे में। तो आई हैवंट इंक्लूडेड दैट इन दिस डिस्कशन। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक नोट ऐड कर देता हूँ उसके लिए। ओके, in school, and by school I don't mean 11th 12th, okay, I mean till 10th. In school we study circles, properties of arcs, inscribed angle theorem, which also abbreviates to IIT,
then tangent secant theorem, etc. How many of you remember these? किसी को याद आ रहा है क्या ये, या नहीं याद आ रहा है? Inscribed angle theorem, at least who remembers inscribed angle theorem? No one? सर ऐसे नाम से याद नहीं है। अच्छा, तो नाम से याद नहीं, ठीक है ना, तो आर्क रिलेटेड कोई भी थ्योरम सर्कल का बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा स्कूल का रिवाइज करिए। इसी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, रिसेंटली इन IIT 2024 एक ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था, वो प्योर ज्योमेट्री पर बेस्ड था। और नेक्स्ट में तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर है। ज्योमेट्री मीन्स 2D ज्योमेट्री एक्सक्लूसिवली वहाँ पे नहीं देते वो लोग। ओके, द प्रॉब्लम इज प्योरली ज्योमेट्रिकल, so they expect you to solve it either by using techniques of geometry or by using 2D coordinate system. तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्कूल का रिवाइज करो। नहीं आया तो मैं आपको मतलब मे बी एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको एक सेपरेट शीट सेंड करूँगा जहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी रही। ठीक है, कूल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर्कल एज लोकस ऑफ अ पॉइंट से। वी नो दैट लोकस इज a set of points, okay, in xy plane और in xyz space। हमारे लिए xy plane फिलहाल क्योंकि 2D है, satisfying certain geometrical condition। ओके, तो सबसे पहले आएगा सेंटर रेडियस फॉर्म। वी नो इन 2D geometry we study curves as equations। ओके, तो suppose the center is at h comma k and suppose the radius is a। ओके, द रेडियस इज a। तो क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे? लॉजिक इज सिंपल, if you take any point on the circle, okay, if you take any point on the circle, CP distance is going to be constant, and that distance is going to be a। okay, ये बहुत आसान है। तो that is the geometrical condition। How do we convert it to an equation? We first square it and then use distance formula, correct? तो वो हो जाएगा x minus h squared plus y minus k squared equals a squared। Is that clear? Yes, यहाँ इस पे किसी को कोई Yes. डाउट है? Yeah. Now I will also be mentioning the formulae and the facts that we will borrow from 2D, that is as in the formulae as well as straight lines। तो इसके आगे का जो फॉर्म है ना, उसमें आपको एक फैक्ट लगेगी जो हमने परपेंडिकुलर लाइंस के लिए यूज की थी। ओके, सो दिस इज सेंटर रेडियस फॉर्म x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to x square। ठीक है, ओके। And meanwhile, if anyone has any doubts here, please ask me, okay? Don't hesitate. Unmute yourself or raise your hands. अच्छा, now this next is a diameter form। तो यहाँ पे हम लोगों को दो पॉइंट्स देंगे वो लोग। Okay, this diameter form is like this। Okay, so we will be given 2 points, x1 y1 and x2 y2, और हम लोगों को ये बताना या ये ढूंढना है कि what will be the equation of the circle, okay, what will be the equation of the circle whose one of the diameters, okay, whose one of the diameters is contained, okay, is contained on the line joining x1 y1 x2 y2, but not just that, x1 y1 and x2 y2 themselves are end points of that diameter।
ओके तो इसका जो लॉजिकल अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच वो क्या रहेगा? बिकॉज ए बी इज डायमीटर, distance AB will be 2 times radius. Clear? और सर्कल का जो सेंटर रहेगा that will be x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. And this will take you back to center radius form. और उससे भी आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल. लेकिन अभी हम वो चीज़ नहीं यूज करेंगे. हम अभी कौन सी चीज़ यूज करेंगे? We know that if we take any point on the circle and join it with the endpoints of any diameter, the angle subtended is always 90 degrees. Raise your hands if you remember this. Okay, ये 90 रहेगा. Everyone, you know that. Okay. Now to simplify things, what we notice is AP will always be perpendicular to BP. Correct. AP will always be perpendicular to BP, which then means slope of AP into slope of BP equal to maximum. ये फैक्ट हमने स्ट्रेट लाइंस में यूज की थी, रादर प्रूव की थी. स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस. तो देखो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज किया, है ना? सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स दैट वी स्टडी सेपरेटली एज आई वुड से प्रीरिक्विजिट्स, वो सब चीजें अभी हम यूज करेंगे. ओके कूल. तो बताओ अभी स्लोप ऑफ एपी क्या होगा? यस, व्हाट विल बी स्लोप ऑफ एपी? y minus y1 upon x minus x1 multiplied by slope of bp y minus y2 upon x minus x2 equals -1. करेक्ट. तो क्या करो, x minus x1 और x minus x2 को RHS को send करो, and we can do it because this is multiplication here. And on simplifying, or rather on getting it to LHS again, you will get this form. Okay, that's called the diameter form. If you know the endpoints of diameter, you will directly get the equation of the circle. I have told you how it can be found without using diameter form or without using this, by first finding the radius and then finding the center. इसमें किसी को कुछ डाउट है? No, sir. Clear? Cool. Yeah. Now we go to the general form. Okay. Now we have seen this in pair of straight lines that the general equation of second degree in x and y is capable of representing a point, pair of straight lines, circle, ellipse, parabola and hyperbola. So there are 6 different curves that it can represent. Okay. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए कुछ कंडीशंस थी, वैसे सर्कल के लिए भी कुछ कंडीशंस है. ओके. तो सर्कल के लिए जो कंडीशंस है ना, those conditions are very straightforward and we can actually even logically arrive at them by comparing it with the center radius form, because a circle cannot exist without a center and a radius. Correct? A circle cannot exist without that, है ना? तो अगर हम जनरल फॉर्म को सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें वो कंडीशंस आसानी से मिल जाएगी. तो उसमें से एक कंडीशन ये है कि कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 1 इज A should be equal to B.
That means the coefficient of x squared and the coefficient of y squared should be same. देखिए आप यहाँ पे तो 1 है. Okay, sometimes what happens is the coefficients g and f are fractions, or 2g and 2f, or even c. So to make everything integer coefficients, we tend to multiply it by some LCM of those numbers. So a and b may be not equal to 1, लेकिन a और b same चाहिए. Okay, a or b should be same. And secondly, h should be 0. Okay, so no xy. Correct? There should not be any xy term in the equation. Then it can represent a circle. Okay. तो क्या आपको ये याद आ रहा है क्या कि if this red equation represents a circle, okay, represents a circle, how do we find its center and its radius? Does anyone remember that? ओके तो ये जो अभी मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ ए बी 1 हो और एच 0 तभी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. यस प्लीज, इसका सेंटर और इसका रेडियस किसी को पता है क्या? -g, -f. Yes, Danish, very good. Minus g minus f, and radius will be √g square plus f square minus c. x. Okay, now this radius is telling you something. The moment you see root, okay, what should ring in your head? That expression there should never be negative. Okay, that expression should never be a negative. तो इससे भी आपको 3 केसेस मिल जाएंगे. कौन से 3 केसेस मिल जाएंगे? If g squared plus f squared plus or minus c is positive, it actually represents a circle. If this is equal to 0, it represents a point. Which point? Minus g comma minus f. Why only point? Because as the value of g squared plus f squared minus c starts decreasing and tends to 0, the circle starts shrinking to a point. और जब वो exactly 0 होगा तब हमारी जो राइट हैंड साइड है ये वाली ये 0 हो जाएगी. इसका मतलब x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k का स्क्वायर give you 0 with xy real, which implies that these two terms should individually be 0. तो एक ही पॉइंट रहेगा जो वो कोऑर्डिनेट्स जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करे. ओके, एंड देन इफ यू टेक इट नेगेटिव then there is no point in xy plane meeting that requirement. So that equation, the general form, can represent nothing. Nothing का मतलब there will not be a single point in the xy plane whose coordinates will be satisfying that equation. Got it? It may have, rather it will have roots in complex numbers. Okay, x and y complex, but we are not interested in that. We're only interested in real numbers. Raise your hands if you get that point. ठीक है, आपको अगर ये ग्राफिकली चेक करना है तो हम अभी करेंगे. Look here. Okay. तो x squared plus y squared plus 2gx plus 2f plus c equal to 0. ठीक है, तो अभी देखिए आप when g and f are 1, okay, when g and f are 1, minus g minus f is the center. At the center you can see it's minus 1. ठीक है, तो I know that कि c पॉजिटिव है अभी,
तो जैसे मैं c को इंक्रीज करूंगा तब ये सर्कल जो है ये -1 को श्रिंक होगा, बिकॉज इट्स g स्क्वायर plus f squared minus c. That's currently 1. Hence the radius is 1. Now, if c is decreased, the circle is going to expand. Look, its center is not changing. Its center is still -1, -1 because we are not changing. Okay, because we are not changing the center. We are not changing g and f. Okay, तब अभी आप देखिए c को कम कर रहा हूं तो सर्कल एक्सपांड हो रहा है. Okay, but if I increase c, the circle is shrinking. Okay, the circle is shrinking and eventually a point will come जब g square plus f square c से इक्वल होगा, मतलब c2 होगा. जब c2 होगा तब हमारा सर्कल पॉइंट को श्रिंक होगा. Exactly a point. And for values of c greater than 2, you will not see anything happen. क्यों? क्योंकि कोई भी रियल नंबर से इक्वेशन फिर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना? इज दिस क्लियर? Yes, sir. या एंड देन इसका तो आपको समझ में, ठीक है. नाउ देयर कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन. ओके, वो पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है? The possible question could be on inequalities at values of GFC. ओके, कुछ मिक्स्ड कंसेप्ट कर सकते हैं वो लोग यहाँ पे. कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे देंगे और उसको जी एफ और सी से कंबाइन कर सकते हैं. ओके, जस्ट अ थॉट. तो आ सकता है पॉसिबल एमसीक्यू. ठीक है, अच्छा. तो जनरल फॉर्म ही अभी हम ज़्यादातर डील करेंगे सर्कल्स को, लेकिन ऑफ कोर्स इट आल्सो हैज सम अदर फॉर्म्स. फर्स्ट अमंग देम इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म. नाउ do you remember in lines also we had studied parametric form, and now for circles also we are going to study parametric form. Okay, and this form comes closer to bodies which are traveling along that particular path in physics, rectilinear motion में या फिर circular motion. अभी rectilinear motion में ज़्यादा problem क्यों नहीं आता? Because in rectilinear motion we take the trajectory of the path as x-axis itself, which means the point doesn't require its y-coordinate to be specified. It remains 0, a constant. But if the motion is along a line which is not along x or y axis or neither parallel to them, then we will need the parametric equations of the line, where parameter is often time. Okay, so in this case that parameter is actually the angular position of the object. Okay, we'll see that. कैसे इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है. We use the identity sin squared theta plus cos squared theta equal to 1 and we multiply it by r squared. So we get r squared cos squared theta plus r squared sin squared theta plus r squared. Okay, so these will be the parametric equations. Let's say x is equal to h plus r cos theta and y will be equal to k plus r sin theta. For a circle, one rotation is enough. Okay, लेकिन कोई बार multiple rotations भी हो सकते. Okay, so when theta is between 0 and 2 pi or within any interval of length 2 pi, we'll get a full circle. Okay, we can also check this. Yeah.
Okay, now how to check it? To check it, let's first consider that we have here x and y coordinates of the center and here is the radius. Okay, so let's do it. X coordinate plus इसका radius है g squared plus f squared minus c into cos of theta. तो अभी मैं t theta को t ले लेता हूँ, comma, and now we will have minus h plus g squared plus f squared minus c sin t. Okay, so अभी आपको अच्छा एक मिनट, let us hide the circle. 6 0 2 2 ठीक है, let's hide this. तो जब मैं h को 0 ले रहा हूं, wait, ये गैस को, oh sorry, wait, my bad, I mixed up the notations. Wait, x coordinate है यहाँ पे minus f होना चाहिए था, yeah, and t should change between 0 and 2 pi. Okay, if we delete this, okay, wait, यहाँ पे हम कोई और लेटर ले लेंगे. Yeah, let's consider b as our parameter. Yeah, okay. Now as I change b, you can see that it is going to revolve around that circle. Okay, अभी मैं circle को भी अंदर ला रहा हूँ. Look, let us increase the thickness here of the point. Yeah. Now as I change this b, okay, you can see that it is revolving around the circle. Okay, which means that is indeed the parametric form of equation of the circle. Okay, any doubt here? 0 to 2 pi is enough because that will cover one revolution. Yes, is there any doubt here? No, sir. No, right, okay. Now interestingly, if you take y equal to minus f there, okay, when b becomes 0, the point reaches there. Okay, and when b becomes 2 pi, when b becomes pi, वो यहाँ पे आएगा half का diameter and then it again touches. ठीक है? Good. So that's the parametric form. Also useful in UCM. Or in general circular motion, but also useful in UCM where theta becomes omega t. Okay. Now this next topic is not exactly related to equation of a circle, as in it doesn't give you any form. Lekin it's important to know the relative position of a point with respect to a circle. Remember, we have done this for a straight line. So, okay, तो straight lines के लिए क्या था, थोड़ा उसको भी याद करेंगे. Suppose the equation of the straight line is u equal to 0, then all points here have u greater than 0, all points here have u less than 0. Okay, I hope you people remember that. Similarly, we have got it for a circle. Okay, we have got it for a circle. So suppose the equation of the circle is s equal to 0. Okay, suppose the equation is s equal to 0. So for all points inside the circle, okay, for all points inside the circle, the value of the left hand side of the
equation of the circle will be less than 0. On the circle, obviously, S2 is equal to 0. And for points which are outside the circle, S1, let's say, will be greater than 0. And this is clear even from the fact that center is inside the circle all the time. तो center के लिए वो value 0 ही होगी ना. So for center it will be, yeah, sorry, less than 0. Okay, it will be less than 0. Okay, so as you go away from the center, that value of expression S will continue to increase. Okay, it will become 0 at the circumference, and beyond that it will be positive. Is it clear? Yes? Yes, sir. Got it, right? Okay. Cool. And now we come to another major chunk which doesn't exist for straight lines. वो है tangents and normals, क्योंकि line खुद ही उसको tangent होती है at any given point. So let us consider the tangents and normals to circle. ये facts भी, इसके बारे में कुछ facts है, ये भी आपने स्कूल में पढ़े थे, स्कूल ज्योमेट्री में, जैसे कि radius itself is a normal, okay, and radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. Okay, तो ये स्कूल में पढ़ा था, प्रूव भी किया था कुछ सिमिलरिटी या ऐसे कॉन्ग्रुएंस यूज करके, बट वी हैव नाउ अ मोर पावरफुल टूल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, ओके. तो डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल when the circle's equation is in its general form, x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Suppose x1 y1 ये सर्कल के ऊपर है, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है. ओके, suppose we have a point which is on the circle. How can we draw the tangent there? Well, we do have the calculus method which says dy by dx निकालो, वो उसका slope हो जाए, है ना. We do have the calculus method. We'll be discussing it shortly. But suppose this is the tangent. Okay, so to get the equation of the tangent, we make the following changes in the equation of the circle. We of course don't want the second degree terms here, तो हम उसको कर देंगे x squared को x1, y squared को y1. अभी इसको कैसे करेंगे? 2gx, 2x को यूटिलाइज करो, इट विल बी g इंटू एक्स प्लस x1. 2f के लिए करो f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0. Is this clear? This thing is also common to ellipse, parabola and hyperbola too, in their standard forms at least. Okay, did you understand how we changed x squared to x1, y squared to y1, and then the respective changes follow for 2gx and 2f? Yes, at least did you recognize the changes? Yes. Yes, sir. Okay, cool. Let's verify this quickly for some point. कहाँ निकालेंगे इसको? Okay, let's do it on GeoGebra this time because it is easier to take a point. Okay, so consider करो x squared plus y squared say minus 4x minus 6y, let's say minus 5 equal to 0. Got it, sir? Okay, I would like to have a point on it. Okay, so GeoGebra is calling that point as A. Okay, so look what changes are we going to make.
x into x coordinate of A plus y into y coordinate of A. Okay, minus, look now, it's minus 4x. I'll take only 4, 4 by 2, so 2, x plus x coordinate of A, minus 3 क्योंकि वहाँ पे 6 है, y plus y coordinate of A, minus 5. अभी जब मैं इक्वल टू 0 करूँगा इसको, we should get the tangent at A. See, is it tangent at A? It is. Okay. Now, if I actually find the tangent there, okay, tangent to the at A to the conic equation 1, it should overlap with our blue line. It is. It is overlapping with our blue line. और जैसे मैं ये पॉइंट ए को चेंज करूंगा ना, वैसे वो tangent भी रोटेट होगी. Okay, the tangent will also rotate like that. And that is also ruling without slipping. Okay, so yeah, that's it. x1 plus y1 plus g into x plus x1 plus f into x y plus y1 plus c equal to c. ठीक है, तो that's how the tangents behave. Normal के लिए I will not recommend you to memorize the equation of the normal. Tangent का निकाल के आप उसका slope और वो सब कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, any doubt in the tangent's equation? Yes? No? Take it. Now let us go to a circle centered at origin. तो origin के लिए ना g और f ये दोनों 0 हो जाएंगे. In which equation? In this equation. This will be 0, this will be 0. And it's better to write this to the other side. So it becomes x squared plus y squared equal to e squared. Tangent is x1 plus y plus. And look, because it is centered at origin, okay, because it is centered at origin, the normals would also be the lines y equal to mx. Okay, the normals would also be of the form y equal to mx, and the slopes would also be immediately known. ओके, कैसे निकाल सकते हैं उसके स्लोप्स? मान के चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. सपोज ए के कोऑर्डिनेट से एक्स ए वाई ए, तो आपका m1 हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा. वैसे m2 का भी आप निकाल सकते हो. ये नॉर्मल्स है. ओके, कैन वी फाइंड द टेंजेंट स्लोप इमीडिएटली? यस. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 वुड बी minus xa by y. क्यों? Because radius and tangent are always at right angles. If slope of the radius is y upon xa, slope of the tangent should be negative 1 upon that. तो वो minus xa upon y निकाल सकते. और यहाँ पे normal का equation भी आप देखिए. It's easy to recognize it here. It's actually 2-point form only. y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. तो वो 0 है यहाँ पे, तो उसकी बात नहीं हो. क्लियर? सेंटर एट ओरिजिन के लिए कैसे करेंगे? हाँ सर. Okay. Yeah, a calculus approach is a general approach to find slope of tangent. Okay, so suppose we have got f of x comma y equal to 0 as our equation, not necessarily a conic, कोई भी equation हो सकता है, कोई भी curve. तो using implicit differentiation,
which is a technique in derivatives, using implicit differentiation and the fact that slope of tangent is equal to the derivative at that particular point, slope point form gives the required equation. ये हमने किया था applications of derivatives में. Y minus y1 is equal to dy by dx at x1 y1 into x minus x1. ये कैलकुलस अप्रोच सभी कॉनिक्स के लिए कॉमन है और इनफैक्ट कोई भी कर्व जो स्मूथ हो. ओके, फिर नॉर्मल का भी आप निकाल सकते हो. LHS RHS सेम रखिए, सिर्फ स्लोप को रिप्लेस करिए -1 dy by dx. क्लियर? दैट्स द कैलकुलस अप्रोच टू फाइंड द स्लोप. ओके, तो ये थोड़ा बेसिक थ्योरी था. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली, लेकिन अभी थोड़ा हम एडवांस करेंगे. 1 सेकेंड. Rejoining my mate. 1 second, just got disconnected. Okay, now a common topic among circles and lines is, when can a line be considered as a tangent to a circle? Okay, and it often gives rise to an equation which is called the condition for tangency. The main condition is very simple. Suppose this is the center. There are 3 cases in which a line can interact with a circle. Condition 1, it is a chord, also called as secant. Condition 2, tangent. And condition 3, neither of them. Okay, and all these conditions can be arrived at geometrically by using the simple fact that if we draw perpendiculars, okay, and if we let the points to be called as P1, say ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, P1 here, P2 here and P3 there, and suppose the radius is R. तो पहली कंडीशन क्या है for a secant or a chord? CP1 should be less than R. For tangent, CP2 should be equal to R, and for none of them, CP3 should be greater. Do you realize this? When the length of the perpendicular is less than radius, तो obviously वो secant हो जाएगी. इसका मतलब if you solve the equation of the circle and the line simultaneously, आपको 2 points मिलेंगे. Okay, then if it is equal to the radius, the distance from the center, if it is equal to the radius, then it will give you 1 point only. Okay, and then in other cases it will be none of them. Cool? Any doubt here? That's the main condition. Okay, let me add it here. Length of perpendicular drawn from
center of the circle is equal to, or to the line is equal to radius, तब वो हो जाएगी tangent. ओके, दैट इज द मेन कंडीशन. अभी ये कंडीशन को यूज करके कोऑर्डिनेट्स के साथ हम एक और इक्वेशन बनाएंगे which is generally considered a standard type in NCERT level mathematics, which is this. Now this is important because the same condition is there with slightly modified format in ellipse and hyperbola. Okay, so suppose our equation is x squared plus y squared equal to a squared, the standard form, and the line is y equal to mx plus c. ये लाइन हमारे सर्कल को तभी टेंजेंट होगी जब c squared is equal to r squared into m squared plus 1. Let me remind you that this actually has two values of c. One will be plus r root m squared plus 1 and second will be minus r root m squared plus 1. And why not? You know that. Okay, because for a circle and a given slope there are two parallel tangents possible. Correct, there are two parallel tangents possible. दोनों के स्लोप्स सेम ही रहेंगे. जैसे कि अगर एक टेंजेंट हमने यहाँ पे निकाला तो दूसरा टेंजेंट हम यहाँ पे निकालें. ओके, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, अगर आपने इसका डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा डायमीटर. Okay, distance will be 2r if the radius is r. Okay, or this will always be true whether the center of the circle is at origin or not. The distance between two parallel tangents is always equal to diameter. Okay, लेकिन अगर ये origin है तो फिर c के वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते. Okay, is there any issue with this? No, sir. Clear. Clear. Okay, fine. So if you want, we'll check it once here on GeoGebra. इसको डिलीट करेंगे. तो सबसे पहले हम x squared plus y squared equal to, okay, let's take r squared या a squared ले लेते इसको. ठीक है, a की वैल्यू है, let it change from 0 to 5. ठीक है, as we increase a, it will clearly be increasing in radius. Okay, अभी हम ले लेंगे y equal to mx plus c. अब c के लिए हम क्या करेंगे? Look, for c we will use the condition. Okay, we'll use the condition. So we'll say y is equal to mx plus r times root of m squared plus 1. ये पहली टेंजेंट हो गई. ओके, अगर मैं इसको एडिट करके यहाँ पे लिखूं माइनस, तो मुझे दूसरी टेंजेंट मिलेगी. Please look carefully. Although now GeoGebra is showing us numbers 1 and 2.9, actually वो plus a root m squared plus 1 है और minus a root m squared plus 1. Correct? Which means अगर मैं a करूँगा change, if I increase a, then the circle will grow in size and the lines will get farther apart. You know that already. But interestingly, if we change m, then the lines will rotate. Okay, अगर मैं m को बढ़ाऊंगा तो tangents एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगी, और अगर मैं m को कम करूंगा तो tangents दोनों क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे. Look, first let us increase to see the clockwise rotation. Oh, sorry, I told you that. Sorry.
स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है. एंड इफ आई डिक्रीज देन the tangents will get horizontal. Okay, and if I continue to decrease, then the tangents will make obtuse angles with x-axis with negative slopes. ठीक है, और ये चलता रहेगा. Cool. अभी इंटरेस्टिंग लेना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ये कंडीशन कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं. ओके, बिकॉज देयर आर टू tangents possible. Mixing condition of tangency and joint equation of pair of straight lines. आ रहा है समझ में कैसे प्रॉब्लम जो पहले कभी नहीं देखा वो ऐसे डिजाइन कर सकते हैं. क्लियर. आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का जॉइंट इक्वेशन दे देंगे एंड सी दोज लाइंस कैन नेवर पास थ्रू ओरिजिन बिकॉज दे विल ऑलवेज बी पैरेलल. ओके, सेंटर दिया रहेगा ओरिजिन सपोज. टू मेक थिंग्स इजियर आपको पैरेलल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन दे देंगे. ओके, एंड बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, डू यू रियलाइज दैट अगर जॉइंट इक्वेशन है तो ए बी माइनस एच स्क्वायर 0 होगा. ये भी पूछ सकता है. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ पॉसिबल जॉइंट इक्वेशन ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू गिवन सर्कल. तो वो पैरेलल, ये जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है. पैरेलल, पैरेलल के लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, 0 या 180. तो टैन थीटा का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओके, टैन थीटा का, उसमें एच स्क्वायर माइनस ए भी था न्यूमरेटर में रूट में. या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में भी आपको मैंने बताया था, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ओके, इन द डिनोमिनेटर इट इज ए बी माइनस एच स्क्वायर. ओके, एच एफ माइनस बी जे ऐसा कुछ होता है. फॉरगेट अबाउट दैट. द फैक्ट इज और द पॉइंट इज, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 0 ही चाहिए ताकि वो जस्टिफाई कर सकेगा कि हमारे टेंजेंट्स पैरेलल है, वो कभी इंटरसेक्ट, सॉरी, yeah. So if you take these as the parallel tangents, okay, you don't want them to intersect anywhere, right? Now if you don't want any tangents to intersect, what does it mean? It means they should be parallel. AB minus s squared, the y coordinate of the denominator and the x coordinate of the denominator, it should be 0. तो वो condition है, ठीक है. तो yeah, that's how they can form a new question, okay, by combining this with pair of statements. ठीक है, cool. So let's, इसमें कुछ डाउट है किसी को? No, thank you. Now this is, I would say, JEE level content, but want to cover it, so let's do it. इस नोटेशन को हम कहेंगे S1 and T notation. Okay, and you'll immediately realize why are we calling it that way. These are not equations. Okay, S1 and T are expressions. Okay, S1 and T are expressions. S1 corresponds to the expression where you have a circle and you have a point on it, or that's not necessarily a point on the circle, but you just have a point and you have substituted the coordinates of the point in the LHS of the equation of the circle. Substituting x1 y1 in equation of, or rather LHS of equation of circle. When we discussed the relative positions, okay, when we discussed the relative position, यहाँ पे हमने वो दिखा था,
अगर 0 है तो सर्कल पे है, लेस देन 0 है तो अंदर है, पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो बाहर. एग्जैक्टली. ओके, S1T नोटेशन. Okay, cool. Now S1 says x1 squared plus y1 squared plus 2gx1 plus 2fy1 plus c1, and the T notation says, so T notation resembles tangent equation. प्लीज नोट यहाँ पे जो x1 y1 ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है ना, वो सर्कल पर ही चाहिए ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है. ओके, x1 y1 need not be on the circle. Please let me highlight. x1 y1 need not be on the circle. Okay, x1 y1 need not be on the circle. It can be outside the circle and inside the circle. अगर वो on the circle है तो s1 0 हो जाएगा और t इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा टेंजेंट का इक्वेशन. ओके, इसको सिर्फ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ. इफ इट इज ऑन द सर्कल देन s1 becomes 0 and t equal to 0 will be tangent. Okay, s1 0 is always satisfied because it is on the circle and t equal to 0 will be tangent. ठीक है, तो अभी ये S1 और T नोटेशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे के कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स आई विल सपोर्ट देम विद सम एग्जांपल्स एंड सम कमेंट्स. ओके, प्रूव भी कर सकते हैं इसको, बट फिलहाल हम सिर्फ वो कंडीशंस क्या एग्जैक्टली हमें बता रही है ये चेक करें. ठीक है, ओके. तो S1 is basically an expression with no involvement of x and y, so it's a constant. Rather, if you have x1 y1 then S1's value will get fixed. If we go to tangents, rather T notation, then it will be a linear expression in x and y resembling the LHS of tangent. Okay, now the use of S1 and T is multifold, so let's discuss some of them. First is, suppose you have a circle. Suppose you have a circle and let's say x1 y1 is an interior point. Okay, suppose x1 y1 is an interior point and you would like to find the equation of that chord where x1 y1 happens to be the midpoint. तो आप कहोगे कि इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ. Okay, suppose this is the midpoint. Suppose this is the center. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? This will be tangent. Sorry, perpendicular. And then you can say, I know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. I can find the slope of this. Okay, slope of what? Slope of this. Okay, and then I can take minus 1 upon that to get the equation, to get the slope of this red line, और उसके बाद मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ, फिर मुझे कॉर्ड मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन we can also find it by just equating S1 with T. तो हम ये थोड़ा चेक करेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए. What are we going to do? We will be given equation of circle and a point which is inside the circle. Okay, which is inside the circle. We would like to check whether S1 equal to T indeed gives us equation of a chord. Okay, equation of a chord where x1 y1 is the midpoint of the chord. Okay, x1 y1 is the midpoint of the chord. Okay, let's see. Let's now
take some general form x squared plus y squared. अभी मैं deliberately g 2g और 2f को इवन ले रहा हूँ, नहीं लिया तो भी चल जाएगा, सही 4x माइनस एक्स वाई माइनस ले लूँगा ताकि सर्कल क्लियर हो जाएगा, से 5 इक्वल टू 0. तो ये हमारा सर्कल है. ओके, कैन वी फाइंड इट सेंटर? यस, द सेंटर विल बी 2,3. ठीक है, अभी हम लोगों को इसके अंदर एक पॉइंट लेना है. लेट अस टेक इट एज 4,6. ओके, तो दिस पॉइंट कैन ईदर बी आउटसाइड और इनसाइड, anywhere, and can also be on the circle. Okay, it can also be on the circle. अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? s1 इक्वल टू टी ये लेना है आपको, s1 इक्वल टू टी. ठीक है, तो पहले मैं ले लूंगा s1 को. ओके, s1 वुड बी x coordinate of b squared plus y coordinate of b squared minus 4 into x coordinate of b minus 6 into y coordinate of b minus 5. And as expected, this has turned out to be negative because b is inside the circle. minus 8 है. अब b को कहीं पर भी आप लेके जाओ, as long as you don't let it leave the circle, वो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही नेगेटिव ही रहेगी. सर्कल पे आया तो 0 होगी, सर्कल के बाहर आया तो पॉजिटिव. ठीक है, कूल. अच्छा, अभी आपको क्या चेक करना है? अभी आपको चेक करना है s1 इक्वल टू टी. ओके, तो अभी मैं जाऊंगा t की तरफ. t इज x1 प्लस y1, तो हमारा b है वो y इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ b x इंटू x1 प्लस y इंटू y1. ठीक है, अभी क्या है हमारा? माइनस g इंटू ब्रैकेट x प्लस x1 माइनस f और जो भी है वो इंटू ब्रैकेट y प्लस y1. ओके, फिर हमको मिलेगा -5. ओके, एंड दिस शुड बी इक्वेटेड विथ a. वाई a? बिकॉज a हमारा है s और RHS है हमारा, LHS है हमारा t. तो अभी आप देखिए, ये जो पॉइंट b है, ओके, point B is actually the midpoint of the chord. Okay, this is actually the midpoint of the chord. If you're not convinced, we can prove it using GeoGebra. So let this green line, which is equation 2, intersect the circle equation 1 to get C and D. तो अभी अगर मैं midpoint निकालूंगा, कौन से सेगमेंट का? DC का और CD का. तो वो जो कोऑर्डिनेट्स है ना पॉइंट E के, you can see it because E has got overlap with B, and it's no wonder that if we shift B, you can see that B remains always as a midpoint of CD. Okay, B remains midpoint of CD. One. Secondly, आप E के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करो. E एक्चुअली मिडपॉइंट है, वो और B सेम रहेंगे. Look, it's 0.421, 0.421 as x coordinate. Okay, now it will become the center. तो जैसे भी आप उसको शिफ्ट करोगे, you'll always get E or that B to be the midpoint. Okay, anywhere you go. And this motion is very complicated. You can use physics to analyze it. It's a 2D motion. But the point is, S1 equal to T gives you the equation of the chord of a circle where that given point is the midpoint. Raise your hands if you at least visualize what is happening. क्लियर है सबको? परफेक्ट.
Cool then. Well, of course, as we let A tend to be, there won't be a unique chord because there will be infinitely many such things. That's why you can see it haphazardly rotating here and there. Cool. तो ये हो गया chord with a point. Okay. Now let's talk about what we call as chord of contact. Chord of contact. अभी ये chord of contact क्या है? Okay. Chord of contact. Look. Suppose we have a circle. Suppose we have a circle. Okay. Suppose we have a circle. And we have a point outside the circle. पहले केस में हमारा जो पॉइंट था वो अंदर था सर्कल के, अभी हमारा पॉइंट बाहर है. ओके, सपोज दिस इज आवर पॉइंट P x1 y. ओके, x1. नाउ सपोज वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स. दो टेंजेंट्स पॉसिबल है बाहर से, यू नो दैट, स्कूल लेवल चॉप्टर. मान के चलो दिस इज T1, सपोज दिस इज T2. ओके, let's say, okay, let me not call it T1, T2, let's call it tangent 1 and tangent 2. Now, because these two tangents are going to intersect the circle at two different points, if we join them, okay, if you join this point of contact and this point of contact, okay, क्या मिलेगा आपको? आपको वो चीज़ मिलेगी जिसको हम कहते हैं chord of contact. Chord of contact. Okay, and suppose you call this point as A and this point as B, then you can prove using geometry that PA is equal to PB, and that is the length of the tangent. See, you know that tangent is actually a line, लेकिन इस केस में हम tangent को segment consider कर रहे हैं from the point P जहाँ से आपने tangent निकाला to the point of contact, and these 2 points tell us that PA PB are equal to root of S1. Okay, S1 मतलब सर्कल के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आपने डाला x1 y1 and you know that S1 is going to be positive. Why? Because P outside है. If P were on the circle, then S1 would be 0. If P were inside the circle, then S1 will be negative. But if P is outside, then it will be positive. तो उसका रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ tangents. ओके, लेंथ ऑफ tangents. और chord of contact का इक्वेशन क्या हो सकता है? chord of contact का t equal to 0. t equal to 0 मतलब tangent. ओके, t equal to 0 मतलब tangent. tangent मतलब tangent का इक्वेशन, लेकिन वो tangent नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि P सर्कल पे नहीं. ओके, so what does it then give? It actually gives a chord of contact. Let's see. ओके, लेट्स see. क्या करना है? सर्कल लेना है, एक पॉइंट लेना है जो सर्कल के बाहर है, उससे आपको टेंजेंट निकालना है. जो जहां पर भी वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन निकालनी है. उस लाइन का इक्वेशन हमें पहले से पता है. क्या है वो? t equal to 0. Let's check. Let's keep the circle there. Okay, so let me now hide this part. Okay, maybe I'll hide everything here. Okay, look now, I'll take B outside. Okay, I'll take B outside the circle. Okay, I would like to draw the equation. I'd like to draw the tangents from B to the conic equation. ठीक है, तो मिल गया आपको tangents. चाहो तो उनके कलर्स हम चेंज कर देंगे. let's change the color to red. ठीक है, let's change the color to red. तो जैसे B चेंज होगा वैसे वो tangents भी चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अभी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले AB निकालना और उसमें से पास होने वाली लाइन को निकालना. ठीक है, so let's first set line through 2 points. तो पहला पॉइंट रहेगा intersection between circle and F.
दूसरा पॉइंट रहेगा इंटरसेक्शन ओके लुक्स लाइक दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग इट बट ठीक है हम अलग से करना पड़ेगा हमको आई थॉट इट वुड बट इट ओके इट्स नॉट गिविंग मी सो द इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट इज सर्कल सेकंड ऑब्जेक्ट इज एफ तो वो ऊपर का मिल गया अभी हम लोग फिर से इंटरसेक्ट कमांड यूज करके दूसरे रेड टेंजेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे सर्कल के साथ इक्वेशन 1 G. Okay, now we would like to find the line passing through the points capital F and capital G. That is our line of contact or chord of contact. Chord of contact. अभी इसका इक्वेशन जो है ये हमको पहले से पता है. It is t equal to 0. t equal to 0 मतलब ये t equal to 0 है क्या हमारे पास? ये है x ये इक्वेशन 2 को देखिए. Okay, look at equation 2. Okay, oh wait, what is this? This is, yeah, this should be changed to 0. ये a को था, this should be changed to 0 now. So I'm going to do it here. Okay, that became line H. अभी आपको दिख तो नहीं रही है वो लाइन. Okay, तो ये तीनों लाइन्स में से किसी एक लाइन को ओवरलैप कर रही है. Right? Which one? Line H. Let us change the color of this line. Let us change it to blue. Let's say pink. What do you see? Pink line, which happens to be the line of intersection. Okay, which happens to be the line of intersection of the points of contact. Okay. Oh wait, what happened to that? इसको हमने 0 किया था ना? Wait. Yeah, it's the same line, the green line. Okay, it's the same line as the previously pink Q. T equal to 0 is the equation of chord of contact. क्या situation था? B was a point outside the circle. B point है outside the circle. दो tangents निकाले, shown in the red color. F and G happen to be the points of contact. उनको join किया, एक लाइन मिली जिसका इक्वेशन लाइन H से हम लोगों को मिला. अभी हमने क्या किया? We went to circle's equation and coordinates of B and we let the command x1 plus y1 minus 2 into x plus x1 minus 3 into y plus y1 minus y equal to 0 रहा. ये कमांड क्या बोल रही है? t equal to 0 बोल रही है. ग्रीन वाली कमांड t equal to 0. इससे क्या हो रहा है? इससे हम लोगों को और एक लाइन मिल रही है जो एफ जी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ओवरलैप हो रही है. करेक्ट, विच मीन्स वो हो गई हमारी chord of contact और ये हमेशा ही सही रहेगा. You can see that no matter where you take B, it will always be the same. Isn't both the green line and the pink line, they will always overlap. Raise your hands if you understood that. Okay, and if you enter the circle, then there won't be tangents, right? Cool. तो वो हो गया chord of contact का. अभी आप P2A1, P2A और P2B भी निकाल सकते हैं. वो हो जाएगा root of S1. Okay, वो हो जाएगा root of S1 because you know that S1 is going to be positive. अभी आप चेक कर सकते हो. We will skip it for time. ठीक है, तो पहले क्या देखा? S1 equal to T देगा ऐसे chord का इक्वेशन जो मिड पॉइंट है उस chord का. दूसरे में देखा t इक्वल टू 0, पॉइंट बाहर है सर्कल के, वो हमें दे रहा है chord of contact. तो दोनों में chord ही है, एक बाहर से एक अंदर से. ठीक है. ओके, नाउ विल गो टू दिस टॉपिक. दिस इज इजी. सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली. Okay, circles touching externally, let the centers be C1, C2, let the radii be R1, R2. The distance between C1, C2 in this case will be R1 plus R2. Can you tell me the point
of contacts, coordinates, or at least the procedure to find it. Which formula will you use now? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पी के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए? सेक्शन फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, लाइंस का हो गया, सेक्शन फार्मूला भी आ गया. व्हाट विल इट बी? r1x2 plus r2x1 upon r1 plus r2, r1y2 plus r2y1 upon r1 plus r2. Raise your hands if you got that. It's pretty straightforward. ठीक है? Okay. Let's go to circles touching internally now. Okay, let's go to circles touching internally. We don't know which one has a larger radius. Let's say C1 has a larger radius. ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग P के coordinates बता सकते हो क्या? Yes, you can. Letting R1 to be greater than R2. Okay. इस coordinates में क्या change होगा? Anyone? What will Can change? use section formula, but external. Yes, perfect. Section formula for external division. Negative, 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 negative. Is that clear? ये internal Yes, है. Yeah, this is internal. And this one here, section formula for external division. Cool. अच्छा. Okay. तो ये और एक I would say topic है. Not sure how relevant it is, how much relevant it is to IISER aptitude test. Next में शायद पूछ सकते हैं इसके बारे में. Okay. तो the thing is, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है x1 y1 and x2 y2, we know that just like through a single point infinitely many lines can pass, similar to that, through 2 points infinitely many circles can pass. Okay, तो कैसे उनको विजुअलाइज कर सकते हैं हम लोग? सपोज दिस इज अ लाइन. आई एम टेलिंग विद एनालिटिकल अप्रोच. आपको चाहो तो आप ये डिटर्मिनेंट का फॉर्म भी याद रख सकते हो. Suppose this is x1 y1 one point, and suppose this is x2 y2 the other point. And what do you know? You know that there are infinitely many circles, okay, passing through these points, and all of them will have their centers located here. Make sense? So the circle of least radius हो जाएगा ये. ओके, कुछ ऐसा. अगर आपने सेंटर यहाँ पे चुना, मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ अभी, तो आपका सर्कल कुछ ऐसे दिखेगा. ओके, तो आपको अभी ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है. क्या दिख रहा है? कि सेंटर्स जो है lie on line which is perpendicular bisector of line, or I would say of segment, joining x1 and x2. So corresponding to every point on this line, corresponding to every point on that line, there will be one unique circle passing through x1 y1 and x2 y2. So you'll get an infinitely many circles, okay, passing through x1 y1 and x2 y2.
उनका कंडीशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एक ही पैरामीटर आपको वहाँ पे लगेगा, वो पैरामीटर है लैम्डा, एंड दिस इज द इक्वेशन x माइनस x1 प्लस y इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये डायमेट्रिक फॉर्म का ही है। ओके जब ये मिड पॉइंट हो जाएगा तब ये डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी क्या? नहीं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू या वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो पहली रो है वो हो जाएगी r1 प्लस r2 अपॉन 2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। ओके और लैम्डा भी जीरो। ओके तो as you change lambda you'll go on getting different circles. Cool. That's a family of circles through x1 y1 and x2. ठीक है। Now I don't know how is this going to be a stretch into your memory. I'm not recommending you to memorize the blue formula, but ये पक्का आप याद रखिए, ये वाला पार्ट, ताकि आपको एटलीस्ट ये समझ में आए कि लाइन जो है उनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एक्चुअली हो रहा है हमारा सेंटर वाला लाइन, ऑल द सेंटर्स विल लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। ओके कूल। एक मिनट, इसका ये पोलर भी जेई का ही टॉपिक है, नॉट सीन एनीथिंग ऑन इन आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट और इवन नेस्ट। एक काम करेंगे, विल स्किप पोल एंड पोलर फॉर टाइपिंग, विल रिटर्न टू दिस टुमारो। ओके ये हम कल देखेंगे, रेडिकल एक्सेस भी हम कल ही देख लेंगे। या नाउ वी कम टू system of circles. This has direct connection with family of circles through x1 y1 and x2. Okay, so pay attention. Okay, suppose we have two circles whose equations are s1 equal to 0 and s2 equal to 0, and suppose they intersect. Okay, suppose they intersect. Two different points. Okay, suppose they intersect at two different points. Show them. Okay, तो इनका जो intersection है, that will be a pair of points, correct? That will be this pair of points. This. And as we know, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो थ्रू दोज टू पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स कैन पास, है ना? तो उसी का हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। ओके, s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है, ये दो चीज़ें आप ध्यान से सुनना और या समझना। फर्स्ट थिंग इज अबाउट नोटेशन। ओके, फर्स्ट थिंग इज अबाउट नोटेशन। सो हियर s1 equal to 0 and s2 equal to 0 contain x and y and represent circles. This is not like s1 equal to t where where s1 was, क्या था s1 वहां पे? s1 was this, ये नहीं है वो। ओके, दिस नॉट दैट। यहाँ पे s1 में x1 y1 है, ये वहां पे नहीं है। वैसे s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे s1 एक इक्वेशन है, s2 एक और एक इक्वेशन। ओके, दूसरी चीज,
recall that suppose you have two lines. Do you remember that we were getting actually a system of lines or a family of lines whose equation was u plus lambda v equal to 0 passing through the common point of intersection? तो ये हो गया फैमिली ऑफ लाइंस, ये हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स. दोनों के इक्वेशन में सिमिलरिटी देखिए. Isn't it or aren't they similar? U plus lambda v 0, s1 plus lambda is equal to 0. They are indeed similar. Okay, they are indeed similar. अभी हम चेक करेंगे कोई भी दो सर्कल्स पिक करके. Look. Okay, do it on Desmos now. Yeah. तो पहले एक सर्कल ले लेंगे कोई भी. Okay. All we need to make sure is that the circles should be intersecting. Okay. So intersect for it. Good. Now what do we want? We want s1 plus lambda s2 equal to 0. ठीक है. तो ये प्लस अभी लैम्डा के बदले हम l ले लेंगे उसको. ओके. अभी मैं इसका कलर रेड करूँगा और इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ाऊँगा. ओके. तो आप ये समझ लेना कि अच्छा हम ग्रिड भी हाइड कर देंगे. एक मिनट इसको. लेट्स हाइड द ग्रिड एंड ऑल्सो द एक्सिस. Okay, I think that is not going to make any difference. Now observe that no matter what value of L I take, okay, no matter what value of L I take, I will always go on getting circle which passes through the point of intersection or points of intersection of the two circles. You know? And here also you can see those limiting things. जैसे भी हमारा L 0 की तरफ जा रहा है तो हम लोग 0 पे वो ब्लू सर्कल मिलेगा. और जैसे L पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है तब आपको दूसरा सर्कल मिल रहा है जिसका LHS लैम्डा या L के कोएफिशिएंट के है. कोएफिशिएंट है वो. ओके. s1 प्लस लैम्डा s2. ये लाइन के बारे में भी था, मैंने आपको बताया था. राइट. इट्स द सेम थिंग. लुक 0 पे वो दूसरे सर्कल की तरफ जाएगा और जैसे ये हम बढ़ा रहे हैं इसको, you can see that at some point the radius is becoming so large. Okay, the radius and the circle will also get bigger and bigger, and at some point it is like a straight line. Okay, this circle is going to represent a straight line which is actually the chord passing through both points. और -1 के अगर उस तरफ जाएंगे तो कर्वेचर उल्टा. ठीक है. तो इसका वो जो कंडीशन है ना कि हाउ डिड वी गेट दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या ये कॉर्ड ऑफ इंटरसेक्शन, इसका एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता है क्या? ओके. कैन एनीवन गिव मी एटलीस्ट द रीजन व्हाई इट इज अ सर्कल, व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट सर्कल, अगर L और लैम्डा का वैल्यू -1 है तो. यस प्लीज. What will be the explanation behind that? Question clear है क्या? Question समझ लो. If you take any value of L, it is giving us a circle. But if we take value of L as -1, it is giving us a straight line. इसका geometrical explanation क्या हो सकता है? Yes, any suggestions for that? Look, it's easy.
अगर आपने लैम्डा का वैल्यू ले लिया -1, if lambda equal to -1, we see that x squared and y squared from S1 cancel x squared and y squared from S2. Therefore, we get a line S1 minus S2 equal to 0. ना अगर ये आपको इक्वेट करोगे तो ये चला जाएगा ना, x1 x2 x squared y squared x squared y squared, तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. Okay, you'll get a straight line whose equation you know. Is it clear? तो लैम्डा सभी ये भी पॉसिबल एमसीक्यू हो सकता है क्या? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा, how many values of lambda let s1 plus lambda s2 equal to 0 represent a line. Now to solve this question, you need not know what actually the general representation is. The general representation क्या है? It is going to represent a circle passing through the points of intersection of the two given circles, s1 equal to 0 and s2. लेकिन इसमें एक वैल्यू ऐसे आएगी जहां पे वो इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन एक लाइन है, क्योंकि रेडियस उसका इनफाइनाइट हो गया. क्यों रेडियस इनफाइनाइट हो गया? क्योंकि एक्स स्क्वायर चला गया वाई स्क्वायर. रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड दैट. क्लियर? ओके. And now we are moving on towards conic sections. Okay. Well, usually when we look at conic sections, we study three of them: the parabola, the ellipse, and the hyperbola. But here on your screen, you see that there are many other conic sections possible, but we usually don't study them. I will tell you what we call those conic sections which we don't study extensively as conic sections. ठीक है? तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे टोटल 7 possibilities है. Okay, so I'll just highlight them: circle, ellipse, parabola, hyperbola, point, a single line, and a pair of straight lines or a pair of intersecting lines. Okay. In all these 7 figures, you can see that there is a cone. This cone is called double right circular cone. Okay, this is called as double right circular cone. It is called double because usually when we draw a cone, we only show its vertex and something like this. लेकिन ये इसका मिरर इमेज ऊपर भी ड्रॉ करना पड़ता है. Hence it is called as a double right circular cone. ठीक है? Fine, and then we have a plane. And depending on how the plane meets or intersects the cone, we get different conic sections. ठीक है? तो सबसे पहले इनमें से जो लास्ट 3 है ना, उस पर बात करेंगे. If you look at all of them, the point, single line, straight line, and a pair of intersecting lines, in all of them you will see that the plane is passing through the vertex. Okay. So if you see here, the plane is actually passing through the vertex of the cone. Okay. So when we have such a situation, when our plane passes through the vertex, those conics are called as degenerate conics.
आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस नहीं है उनको. Okay, as far as the conic sections are concerned. Okay, we like, for example, take point. There is nothing much to be discussed that. Okay, single line, we have discussed single line extensively without referring to cones, correct? Then pair of intersecting lines or pair of straight lines we already studied. तो ये जो तीन कर्व्स है ना, या ये जो तीन कोनिक सेक्शंस है, ये है तो कोनिक सेक्शंस, but we will put them in the family of degenerate conics, as in we'll not study them, or we can say they're not as significant as the rest. ठीक है. So the only thing that you should remember here is the plane must pass through the vertex of the cone. Okay, तो पता नहीं अभी इस पे कैसे आ सकता है, लेकिन ये याद रखना कि इफ प्लेन मीट्स द कोन ओनली एट द वर्टेक्स, देन ऑब्वियसली द इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट, एंड when the plane is actually tangent to the cone's surface, then we get a single line, and for all other orientations we don't get a hyperbola, but we get a pair of intersecting lines, correct? Then we will come to circle. अभी सर्कल में क्या है? Come to the first figure, this one. So in circle, the plane meets only one part of the cone, okay, and that actually makes an angle of 90 degrees with the axis of the cone. मतलब ये angle 90 है. कौन सा? Plane with axis, plane perpendicular to axis. और जब ये प्लेन एक्सिस को परपेंडिकुलर नहीं होगा तब हमें एलिप्स मिलेगा, करेक्ट? इज परपेंडिकुलर टू द कोन एक्सिस we will get circle. If it is oblique to the cone axis, then we will get ellipse. Have you people visualized these two? Perpendicular है तब circle, oblique है तो ellipse. Have you visualized these two, circle and ellipse? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Okay. Now the cases of parabola and hyperbola are a bit different. Let's start with the hyperbola case. Okay. The case with the hyperbola is that no matter what angle the plane makes with the axis, the plane is going to cut both halves of the cone. Okay, that's the requirement. So it could either be a hyperbola or a pair of straight lines. But now you can see that, visualize this. The moment you take that plane closer to the axis, and the moment it passes through the axis, ये जो भी curves हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ये eventually straight lines बन जाएंगे, pair of straight lines. Okay, so in both hyperbola and pair of intersecting lines case, the plane is going to intersect both the parts of the cone. But in the case of pair of straight lines, the plane also passes through vertex. वैसा यहाँ पे नहीं है. Okay, the plane doesn't pass through the vertex, it's happened. Okay, and then we come to parabola. So the feature of the parabola is that the plane indeed cuts only one side of the cone, and it is parallel to the side of the cone or that curved surface, but is not tangent. Okay, तो hyperbola और pair of intersecting lines में एक feature common है, वो ये है कि वो जो intersecting plane है वो cone के दोनों parts को intersect कर रहा है. Okay, and the difference between them is in pair of straight lines, the plane passes through the vertex, and in hyperbola it doesn't. Now let's come to the case of parabola and straight line. In both these cases, if you see the orientation or the angle made by the plane with the axis, that is same. In this case, we are saying the plane is parallel to the side. There also we are saying the plane is tangent to the cone. It's parallel to the side. But again, the difference is straight line में the plane passes through the vertex. In parabola, it doesn't pass through
ठीक है. Circle and ellipse are closed curves. Parabola is you can think of it as a single large ellipse, semi-ellipse you can say. Then hyperbola is a curve which has two branches. Then pair of straight lines, but can't really say anything about that. But we have discussed a pair of straight lines as an independent topic after we discussed straight lines. ठीक है, तो ये इनका जो नाम है कोनिक सेक्शंस, वहाँ से वो कैसे इवॉल्व होता है वो ये पिक्टोरियली हमें डिपिक्ट करता है. ओके, नाउ प्लीज रियलाइज दैट although these are intersections of a cone with a plane, it also implies that each one of them is going to lie on cone as well as on plane. Now because each one of them lies on the plane, हम इन सब कर्व्स का स्टडी प्लेनर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग थ्रू आउट अवर discussion and problem solving on conic sections. So let's make that point clear now. Although these curves are obtained in a 3D setting, सेटिंग क्यों? क्योंकि डबल राइट सर्कुलर कोन तो प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है ना. ऑल्दो दीज कर्व्स आर ऑब्टेन्ड इन अ 3D सेटिंग, दे लाई on a plane. Therefore, we employ 2D coordinate geometry. For their study. ठीक है, मतलब है तो वो कर्व्स 3D में सेटिंग 3D सेटिंग में वो फॉर्म हुआ है, बट we can study them as 2D objects because all of them lie on a plane which actually intersects the cone. ठीक है, तो अभी हमारा आएगा x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, वो सब चीज़ें अभी आएंगी. ओके, now these conic sections also share some common terminologies which will be applicable to not only parabola but also to ellipse and hyperbola. Okay, so there are two things which we will be discussing first. First is called the focus directrix property, and the second is a set of terms that apply to all three: parabola, ellipse, hyperbola, like focus, then double ordinate, उसके बाद लेटस रेक्टम, वो सब चीज़ें. ठीक है, so we'll start with the focus directrix property. Okay, so now we have entered from that 3D geometry setting, cone था, intersection हो रहा था plane से, to the 2D setting because all these curves are 2D curves. ठीक है, तो अभी इसके डेफिनेशन में कोनिक सेक्शंस के डेफिनेशंस में हम लोग सिर्फ 3 ही कोनिक्स कंसिडर करेंगे: पैराबोला, सॉरी, पैराबोला, इलिप्स एंड. ओके, क्या डेफिनेशन है? सो वी डिफाइन दीज conics as locus of a point. Now when we say locus, what have we studied there? It should satisfy some geometrical condition. We also saw that most of the geometrical conditions involved distances. एंगल्स भी थे लेकिन ज़्यादातर थे डिस्टेंसेस, है ना.
So here also we will make use of distances. Okay, so locus of a point which maintains the ratio of its distance from a fixed point called focus now the standard letter is S. Okay, so it's locus of a point which maintains the ratio of its distance from a fixed point called focus S to its distance from a fixed line called directrix. Okay, the standard symbol is D. अब ये D डिस्टेंस नहीं है. ओके, ये डिस्टेंस, ये D एक लाइन है जिस लाइन को हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स. ऑफ कोर्स बोथ द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स आर इन द सेम प्लेन. ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. Locus of a point which maintains the ratio of its distance from a fixed point called focus to its distance from a fixed line called directrix is a conic section. Okay, is a conic section. Okay, now do we give any specific name to that ratio? Yes, we do give a name to that ratio. उस रेशो को हम कहेंगे eccentricity. Okay, which ratio? This is the ratio of two distances. तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा. इसमें और एक फॉर्मूला भी लगेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन के लिए वो ax1 प्लस by1 प्लस c वाला फॉर्मूला. करेक्ट. So typically distance from a fixed point, let's call it SP, divided by distance from a fixed line called directrix, let's call it PM. This ratio is constant for a given conic. अभी इस रेशो के तो 0 to infinity सब वैल्यूज हैं, है ना. तो do we categorize the values of the ratios? Yes. This constant is, okay, let's first name this ratio. This is called as eccentricity of the conic. Okay, this is called as the number eccentricity. तो अभी मैं इसके तीन ही कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा. When the eccentricity is equal to 1, we get the parabola. When eccentricity is greater than 1, then we get hyperbola. And when eccentricity is less than 1, but it can't be negative, so also 0, it is ellipse. Now one thing with which we should understand here is, यहाँ पे E जो है ना, E, ये कैलकुलस वाला E नहीं है. Just in case if you have that doubt in your mind, this E is different from the E that we use in calculus in e raised to x function. Okay, so what is the definition as focus directrix property? एक पॉइंट रहेगा जिसको हम कहेंगे फोकस, एक लाइन रहेगी जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स. हमारा जो पॉइंट रहेगा, जो वेरिएबल पॉइंट है ना, बिकॉज इट इज ऑन द लोकस, its distance from the focus and its distance from the directrix, ये दोनों डिस्टेंसेस का रेशो जब सेम होगा, पॉइंट भी मूव हो रहा है, तब हमें कोनिक सेक्शन मिले. When that ratio is greater than 1, we will get hyperbola, equal to 1 parabola, less than 1 ellipse. ठीक है. If you open your chapter on gravitation,
I think there they have mentioned the eccentricity of the elliptical orbit of Earth around Sun. Okay, check gravitation. For eccentricity of Earth's orbit. I think it is very close to 0. That's why we consider it a circle approximately. ठीक है. पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कुछ पढ़ा है क्या हमने फिजिक्स में? Yes. This parabolic trajectory comes under projectile motion. Okay. And we haven't yet seen wave optics. We shall study that soon. तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. आई होप यू पीपल विल remember the name at least. So there you actually have those alternate dark and bright bands called fringes. तो उसका जो geometrical condition है ना, the path difference is some multiple of the wavelength. That path difference S1p minus S2p, okay, that is actually the necessary condition for hyperbola. Okay, तो अभी मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिया है फिजिक्स में जहाँ पे हम ये कर्व्स का यूज करते हैं. Okay, the fringe pattern, Young's double slit experiment. So how many of you knew that in that experiment we actually have hyperbolic fringes and not linear fringes? Anyone? You knew? Oh, okay, good. Cool then. तो अभी हम इसका एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे. ओके, विच विल बी कॉमन फॉर ऑल कोनिक्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. ठीक है, तो अभी ध्यान दो. What are the things that we need? Again, we need only two things to determine a conic unique. हमको लगेगी एक लाइन जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स. ओके, then we will need a point, we call it focus, and of course this will be our variable point. करेक्ट. अभी हमारा जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है वो क्या है? SP upon PM should be constant. Okay, now what is SP? SP is by distance formula under root x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to E times mod. अभी ये PM है हमारा. Okay, this is our PM. What is it? AX plus BY plus C upon under root A squared plus B squared. Have you followed this? SP equal to EPM. तो ये हो गया इसका general equation. Now you can square this. Okay, you can square this. Okay, so this is the general equation of conic. Okay, this is general equation of conic. And also note that this equation contains x squared, it will contain y squared, it will also contain xy because of this. It will also contain some single degree terms
with x and y, and it will also contain c, the constant term. Okay, so this general equation of conic has an alternate representation. जो हमने पैरो स्ट्रेट लाइन्स में देखा था वो था ax squared plus 2hxy plus by squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Okay, which is a second degree equation in x and y. यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? This point P will move in the xy plane, but its distance from the line and its distance from the focus, both of them will also change. But what will not change is the ratio of the PM to SP or SP to P. Okay, that ratio is called eccentricity E. Any doubt in this? Yes. यहाँ तक clear है ना? This part is common to all conic sections. And now we go to the next common part, which is the terminologies. Okay. All right. If you don't have any doubt, then we can go to these terms. Okay. Firstly, let's talk about the axis. Axis is nothing but axis of symmetry. Okay. Axis of symmetry. Parabola has only one axis. Ellipse and hyperbola have two. Okay. What is vertex? Vertex is the point or points of intersection of conic and axis. Okay. Now we come to double ordinate. I will first define them, then I will show them for parabola, ellipse and hyperbola. Okay. What is a double ordinate? Double ordinate is the line or chord which is perpendicular to axis. Okay, that's all. What is focal chord? Chord passing through focus. Okay, chord passing through focus of conic. Or what is latest rectum? It is double ordinate through focus. Okay. So let's now study them in the context of parabola first, then we will go to ellipse and then we will go to hyperbola. Okay? Okay, let's take the miniature figures only. Acha. So this is going to be the axis. Okay, this is going to be the vertex. Line or chord perpendicular to axis of the conic, so there will be many such double ordinates. Correct. Now we can prove this, that the focus of the parabola lies somewhere here. Let's call it F or S, anything is okay. So green is the double ordinate
and let me use blue color for the focus. Okay, तो मैं कोई भी एक chord draw करूँगा. Chord has the same meaning as it has for circles. Okay, तो ये हो गई मेरी focal chord. And then how about the latest rectum? Let us choose well, this color for that. Okay, so the latest rectum, ये तो focal chord भी है और double ordinate भी है. Okay, so it will be vertical. ठीक है, that is latest rectum. Axis, vertex, double ordinate, focal chord, latest rectum. Okay, now let us again revisit these terms and try to describe them for an ellipse. Okay. Okay, so इसके कितने एक्सेस पॉसिबल है? Ellipse has 2 axes of symmetry. ठीक है, axis 1, axis 2. How many vertices are possible? 4 vertices are possible. V1, V2, V3, V4. Okay, line or chord perpendicular to axis of the conic. Can either show them like this or you can also show them like this. ठीक है, what is focal chord? Focal chord is the chord passing through focus. अभी ellipse के 2 focus होते हैं, foci होते हैं, वो हम ellipse में डिस्कस करेंगे ज़्यादा, तो अभी हम सिर्फ इसको ब्लैक कलर में यहाँ पे दिखाएंगे. Okay, somewhere here. So let's call them F1, F2. तो कोई भी एक chord, कोई भी एक फोकस में से पास होगी तो उसको हम कहेंगे focal chord. I think we have used blue color for that. Okay, that's one of the many focal chords. And what is the latest rectum? Latest rectum is the chord, the focal chord that is perpendicular to the focus. तो इसमें 2 आते हैं इसको. Okay, that's how it looks. So that is for ellipse, and similarly you can get it for hyperbola. ठीक है, तो मैं आपको वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप घर पे कंप्लीट करना वो. Let us just draw the hyperbola. Yes, tell me whether you can show these details, these 5 terms for hyperbola. If yes, I will go to parabola. If no, then I will also do the same for hyperbola. आ जाएगा क्या आपको? हाँ सर, हो जाएगा. हो जाएगा ना एक्सेल. अभी मैं इस पे क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ? Some of these terms are often confusing. Students, including me, sometimes we get confused between double ordinate and latest rectum. For focal chord, there is nothing to be confused. The meaning is very clear. It should pass through the focus. Okay. Sometimes we also get confused between vertex and center. Okay. If we have multiple axes of symmetry, whenever they intersect, that becomes the center of the conic. That is possible only for ellipse in this case and
circle. Okay, but vertex and center are not same. Okay, yeah, so आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, तो आप भूल भी गए फॉर्मूले तो डेफिनेशन से आप क्विकली उसको डिराइव कर सकते हो. ओके, cool. So these are 5 terms which apply to all conics. Now let us begin our discussion on exclusively parabolas. Okay, cool. तो पैराबोला का जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो क्या है, उसका एक्सेंट्रिसिटी. ठीक है, द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of parabola is that its eccentricity is 1. Okay, its eccentricity is 1. Now parabola can be in any orientation, but see, look, the existence of the parabola is independent of the coordinate system. Okay, in fact existence of any of the conics. लेकिन हम क्या करेंगे, हम पैराबोला को हमारे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट करेंगे ताकि उसका जो इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. सी वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक has a much more complicated form, and it incorporates everything. It incorporates circle, ellipse, parabola, hyperbola, pair of straight lines, and in some cases only a point or a straight line. ठीक है, लेकिन फिर रिकॉग्निशन के लिए या प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम थोड़ा सा ईजियर कॉन्फ़िगरेशन चूज करेंगे. सो फॉर द पैराबोला व्हाट वी डू इज वी टेक द एक्सिस एज एक्स एक्सिस, ओके, एंड वी टेक द वर्टेक्स एट ओरिजिन. Okay, we take axis as the x-axis and vertex at the origin, so the focus now comes on the origin. Okay, and the directrix goes to the other side of the y-axis, as you can see. Okay, so these are the standard, I would say, locations. The focus goes to the point a comma 0, and the directrix is the line x equal to minus a or x plus a equal to 0. ऐसा नहीं है कि यही पैराबोला है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड फॉर्म. ओके, नाउ इफ यू वांट वी कैन डिराइव इट्स इक्वेशन. शैल वी डिराइव इट? ये आपको पता है. Tell me, if you want, we can derive the equation right here. If no, I will just write down the equation. Yes sir, let's derive. Let's derive. Okay. Cool. तो क्या है derivation का logic? Which equation should we start with? We should start with SP equal to EPM. SP is equal to EPM. यहाँ पे ये पॉइंट M है हमारा, वो सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है और लाइन L हमारी डायरेक्ट्रिक्स है. ठीक है, अच्छा, तो व्हाट इज SP? रूट x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि फोकस का y कोऑर्डिनेट 0 है. एक्सेंट्रिसिटी इज 1. Now PM, who will tell me the expression for PM? Yeah, tell me. This is the equation of the line. The coordinates of the point are xy. So वो क्या है, ax1 plus by1 plus c, है ना? तो it will be 1 into x plus 0 into y plus c upon root of
1 squared plus 0 squared. Raise your hands if you understood this. ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, सब समझा ना सबको? परफेक्ट. अभी क्या करना चाहिए? स्क्वायर कर देंगे. So we will get x squared minus 2ax plus a squared plus y squared. So I have simultaneously squared and expanded the bracket equal to. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो x plus a ही आएगा because there is no y term there, but you are squaring it, so it will be x squared plus 2ax plus a squared. And now you can see that a multitude of terms is getting cancelled, particularly the x squared term, the a squared term. Shift minus 2ax to right side, which gives you the equation of the parabola, which you know, y squared equal to 4ax. Raise your hands if you understood this, the derivation. Okay, I hope you have derived this equation earlier, but anyways, if you haven't, this is how it comes. अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने जानबूझ के लिए, example, axis of symmetry as the x-axis. Second, focus on the x-axis, but it comes naturally. Then vertex at the origin. ओके तो ये हमने पहले स्पेसिफाई किया कि भाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स ओरिजिन है, और उसके बाद हमने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के लोकेशन बताया, और उसके बाद आपका इक्वेशन आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स रिकॉल that in functions or in graphs of functions particularly, we have said that if our equation contains even powers of x, then it is symmetric about even powers of y, then it is symmetric about x-axis. And you can see that this parabola's equation is y squared equal to 4ax, जो जिसमें even powers of y है. Okay, y squared, which means it must be symmetric about x-axis. It is true. ठीक है, तो जो functions में हमने सीखा था वो भी थोड़ा यहाँ पे काम आएगा, as you can see. ठीक है, so this is the most frequently studied form of parabola in mathematics. So all the results that we will now see, okay, they could be for the parameters of focal chord endpoints or standard equation of tangent. All of them will be applicable to this parabola. Just like in the case of circles, we applied or wrote down all the results for circle whose center was at origin. वैसा इसका है. हालांकि इसके और भी 3 फॉर्म्स है, बट दैट इज जस्ट रोटेटिंग द एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्रीज, तो वो भी हम देखेंगे. ठीक है, okay, so these are the 4 standard forms. First one, which we already discussed, this is y squared equal to 4ax and it also has another form which is y squared equal to minus 4ax. Okay, y squared equal to minus 4ax, where you have the directrix on the right side of y-axis and the focus on the left side of y-axis. Okay, फिर आती है बात vertical parabolas की. So this is x squared equal to 4ay and this is x squared equal to minus 4a. ठीक है, इन सब का डेरिवेशन एक ही फॉर्म में है, वो है sp equal to epm, where eccentricity is 1. ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका कोई भी एक इक्वेशन लेके डिराइव कर सकते हो, ये है ये, या फिर आपको पता है कि यू आर जस्ट डूइंग
the replacement of x by y and y by x. ठीक है? ओके, तो अभी हम कोई भी एक पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालेंगे. ठीक है, लेट्स डू इट. We'll start with the standard parabola only. What is latest rectum? Latest rectum happens to be एक मिनट, कौन सा कलर यूज किया था वही कलर यूज करेंगे अभी फिर से. Latest rectum is focal chord but which is perpendicular to the axis. That's what the definition is. Double ordinate through focus. ठीक है, तो उसके लिए वो ब्लू कलर यूज किया था. Try to find the length of the latest rectum now for parabola. तो कुछ ऐसे दिखेगा वो. Can we find the length of latest rectum? Yes, it's easy. Okay, now both these points, the end points of the latest rectum, they will have their x coordinates a because they will lie on the vertical line, right? And what about their y coordinates? How will we find their y coordinates? The y coordinates are easy to be found. यहाँ पे a डाल दो तो आपको मिलेगा 4a squared, तो y coordinates आएंगे 2a minus 2a. तो length of the latest rectum would be 4. क्लियर है ना ये? यहाँ से यहाँ तक 2a है. And because of symmetry, when you go to the other side, it's also 2. Clear? Have you got this? Yes, sir. Okay. तो ये जो y squared equal to 4ax है, इसमें 4a क्या है? Length of latest rectum. So if I ask you what is the length of the latest rectum of y squared equal to x, you will say it is 1. Okay. Cool. Now we go to some things including the parametric equations. Okay. तो हम y squared equal to 4ax यही parabola रखेंगे. First is parametric equations. Now what exactly do we do in parametric equations? In parametric equations we express both the coordinates x and y as functions of a third variable called the parameter. है ना? तो for y squared equal to 4ax, the parametric equations are as follows. X is equal to 8t squared and y is equal to 280. Okay. अभी ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसके लिए एक ही जवाब है, वो है ट्रायल एंड एरर. यू कैन कम अप विथ these equations readily, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना. X is equal to 80 squared, y equal to 280. Some pointers will help you. एक तो y का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर t स्क्वायर, और x का कोई स्क्वायर नहीं है तो x में वो t स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है, and then you can just see that this fits well here. Suppose you square y, so you will get 4a squared t squared. Suppose you multiply x by 4a. You basically get the same thing, y squared equal to 4x, 4a squared t squared on either side. Okay, तो ये हो गए आपके parametric equations. Any doubt here? No, sir. Got it. Okay, now look, if t is positive, p lies in first quadrant, obviously. And if t is negative, p lies in the fourth quadrant. That's common sense, right? Because in the case of parabolas,
Okay, y squared equal to 4x, the role of y coordinate, sorry, the range of y coordinate is from minus infinity to plus infinity. x के लिए वैसा नहीं है, there is no negative x coordinate possible here. Okay, so I hope you understood that. As t tends to infinity, you'll go on getting all the points on the first branch, and as t tends to negative infinity, आपको ये मिलेगा. ठीक है, results pertaining to y squared equal to 4x, one is the parametric equations. Okay. अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, because we will discuss the length of lattice rectum, I think you will be able to answer that. My question is, suppose we keep the equation y squared equal to 4x unchanged, but suppose we increase the value of a. Okay, suppose we increase the value of a. My question to you is, as a increases, will the parabola get stretched or will the parabola shrink? अगर a बढ़ेगा तो yes. So the parabola narrows for when a decreases. Yes, parabola will narrow for decreasing a, parabola will broaden for increasing a, and the explanation will come from the length of the lattice rectum. Okay, the length of the lattice rectum is 4a. तो अगर आपका पैराबोला आपको नैरो कर रहा है तो आपको a का वैल्यू घटाना पड़ेगा ऐसे स्मॉल a, और आपको बढ़ाना है तो लेंथ ऑफ lattice rectum भी बढ़ाना चाहिए. Got it? Let's see it here. I am first decreasing a. You can see that the parabola is narrowing, and when a is equal to 0, it is going to give us y equal to 0, two overlapping lines. ठीक है? And as we increase it, it tends to dominate, but near origin it tends to dominate the, or it gets closer to the y-axis, but when you zoom out, it will again be seen to be having its original shape. ठीक है? Cool. तो ये पता नहीं कैसे पूछेंगे, लेकिन पता होना चाहिए इसको. ओके, पूछ सकते हैं ना कि भाई ए बी चेंज किया हाइपरबोलाज में तो क्या होगा इफेक्ट हाइपरबोला का. ठीक है, कूल. हाँ, सो वन यूज ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशंस इज देयर इन फिजिक्स. वी नो दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ignoring the air resistance and other effects, considering it as a motion under gravity, the trajectory of the projectile is a parabola. Correct? तो इसमें हमारे जो x और y के इक्वेशंस है, okay, those equations are x is equal to v cos theta t and y is v sin theta t minus 1/2 gt स्क्वायर. यहाँ पे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ही है, बिकॉज v cos theta is a constant, so this is f of t. This v sin theta is a constant and g/2 is a constant, so this is g of t. करेक्ट? हालांकि फिजिक्स में t के वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाहर नहीं जाएंगे. सो t here will be in the range t 0 to time of light. तो ये फिजिक्स में. मैथ्स में अगर हमने ये कंसिडर करना स्टार्ट किया तो इट कैन थियोरेटिकली गो टू इन्फिनिटी. दैट्स व्हाट वी हैव सेड हियर. Okay, but the only difference is in y squared equal to 4ax, the quadratic term happens to be in x, whereas in this, the quadratic term happens to be with y,
सेकेंडली इट हैज़ अ नेगेटिव साइन, तो ये जो हमारा पैराबोला रहेगा ये कुछ ऐसे रहेगा. And we know it from our discussions from project animation. But the point is, पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो है मैथमेटिक्स में, उनका एक यूज फिजिक्स में क्या है? अगर आपकी बॉडी उस ट्रेजेक्टरी और उस पाथ को फॉलो कर रही है तो आप उसके जो पैरामीटर है उसको टाइम कंसिडर करके यू कैन एक्चुअली टेल द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. Okay, so these are also parametric equations. But the thing is, when we study those in physics, no one tells you that they are parametric equations of parabola. Correct? ठीक है? Alright. Now we come to the equations of tangents and normals. Remember, these results are again applicable only to y squared equal to 4ax. The first one is only the one that I'll recommend you to memorize. That is equation of tangent at x1 y1, which is a point on the parabola. ठीक है? तो इसको कैसे कर सकते हैं? आसान है. जो चेंजेस हमने सर्कल के लिए किए थे ना, वही चेंजेस हम करेंगे पैराबोला के लिए भी. सर्कल्स के लिए क्या चेंज किया था? x squared was broken down to x1, y squared was broken down to y1. Same thing here. Y squared will be broken to y1. Now here it is x, so it can't be broken down to root of x into root of x1. तो हम क्या करेंगे? उसको 2x कंसिडर करके उसको x plus x1 लिखेंगे. We had done the same thing in the general equation of a circle. That 2gx, if you remember, we had written it as g into x plus x1. Okay, तो ये हो गया equation of tangent in our normal, or I would say not normal, equation of tangent in the general form. उसके बाद आप tangent का parametric equation भी निकाल सकते हो, वो आप पर है. यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट is 1 upon t. So how did we find this? Okay, well, आप कहेंगे कि भाई टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर्ड है, तो टी को उस तरफ भेज देंगे तो ऑब्वियसली स्लोप हो जाएगा 1 upon t, वाई इक्वल टू एम एस प्लस सी. But there is an alternate way to find that. If you don't remember the equation of tangent in parametric form, आप ये याद रखना कि slope of tangent होता है dy by dx. और हमने differentiation में ये already सीखा है कि if we have a parametric function, then dy by dx is dy by dt upon dx by dt. Correct? But what is dy by dt? dy by dt is 2a. And what is dx by dt? 2at. Correct? dy by dt is 2a, dx by dt is 2a. So even if you forget what the slope of the tangent is for parabola, you can quickly derive it using this. dy by dx is equal to 1 upon t, and that basically gives you slope of normal as minus t. Raise your hands if you understood that. Okay, good. Yeah, this third one is the condition of tangency. Like, when can our line y equal to mx plus c be a tangent to our parabola y squared equal to 4ax? The condition for tangency again involves c,
and C should be equal to A by M. Let us check this now. Okay. Okay, so let us fix the value of A to 1. Okay, let us fix the value of A to 1. And now what I'm going to do is, I'm going to, let's say, fix the slope. And let's take A by M, so 1 by. So currently it is tangent here. And as I change M, you will see that, well, as we increase M, you will see that the line will become more and more vertical. Okay, but it is basically sliding. Okay. And as we decrease, you will go on getting lines which are tangents to this parabola, but which are flatter and flatter. At 0, there is no tangent, obviously. It will be tangent to infinity, and then the moment you make it slightly negative, you can see the tangent appearing in the 4th quadrant. See, and then it will again. ओके तो जब आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m ये लाइन दी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई अगर m चेंज हो रहा है, ओके m चेंज हो रहा है, तो उसका जो एनवेलप है, एनवेलप ऑफ टेंजेंट्स, वो एनवेलप ऑफ लाइंस, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट अ parabola. Okay, now I have brought up this point because in discussing differential equations, do you remember we had discussed what we call as singular solutions? उसका और इसका कनेक्शन है, अभी मैं आपको बताऊंगा. Look here. You may refer to our lecture on 29th of August, where we talk about the solution of differential equation. Okay. Now the point that I am trying to make is y equal to x squared by 4, which we know is a parabola. Okay. And then y equal to cx minus c squared, which we know is a line. Okay. Now we realized that both these things, both of them satisfied this differential equation. हालांकि इसमें जो y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर था वो था एक लाइन, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 ये एक पैराबोला है. In this case we have arbitrary constants. That means we have something in our hand which we can change, but without losing it to be a solution of that differential equation. In the y equal to x squared by 4 case, there is no such possibility. Now if you decide to plot this, what, y equal to cx minus c squared, those lines will be found to be tangential to y equal to x squared by 4. Let's figure it out. Okay, I'm going to hide everything. Okay, but I'm going to take y equal to x squared by 4, and I'm going to take y equal to cx minus c squared. Okay, now I want you people to understand the resemblance between this singular solution case of differential equations and the topic that we are currently discussing, that is condition of tangency. Look here. Just focus on the black parabola and this red line. जैसे आप c के वैल्यूज को चेंज करेंगे आपको टेंजेंट्स मिलेंगे. Yes, you are getting tangents. मतलब अगर आप पैराबोला नहीं ड्रॉ करते, suppose you didn't draw the parabola, but you drew infinitely many such lines,
those lines will actually give rise to an enveloping, I would say, structure, and that structure will be parabolic. Okay, लगभग वैसा ही कुछ हो रहा है हमारे केस में क्या? Okay, so instead of y equal to x squared by 4, we now have y squared equal to 4x. Okay, so let me hide that black parabola now. Instead of y equal to cx minus c squared, we now have y equal to mx plus cy. That way. वहाँ पे c वेरी हो रहा था, अभी यहाँ पे हम m वेरी कर, क्योंकि c वहाँ पे स्लोप था. So what do you see happening here? You can see that those lines are actually enveloping our parabola. तो इसका भी आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो, जिसके आपको मिलेंगे एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, वो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, और एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो रहेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ओके, दैट्स द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक. समझा क्या या नहीं समझा? यस और नो? सर ये लास्ट वाला जो आप बोले रिपीट कर दीजिए. Okay. We are discussing a case of some lines which are tangents to a curve. ठीक है? Now, those lines were varying in slope and intercepts. Okay? But those lines shared one common characteristic. What was the common characteristic? Those lines were the general solution of some differential equation. यहाँ तक clear है? Yes. That differential equation also possessed a solution which did not contain any arbitrary constant or constants, and when plotted geometrically, those lines and that new equation which did not contain any constants, arbitrary constants, they were connected. उनमें क्या कनेक्शन था? उनमें ये कनेक्शन था कि जो भी लाइंस हमने ड्रॉ की, सारी की सारी उस पैराबोला को टेंजेंशियल थी. Whatever lines we drew, all of them were tangents to that curve. ये समझा? हाँ सर. तो यही मैंने यहाँ पे सिर्फ हमारे केस में, अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसमें अप्लाई किया. as we change m, we will get multiple tangents, and if you draw only these lines, they will seem to be creating a parabola. Okay, अभी क्लियर है क्या? नहीं? यस सर क्लियर है, बट वो m का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्यों? वरना फिर टैंजेंट नहीं होगा वो डबल. और Once you fix a, then value of m is actually arbitrary constant here, है ना? m का वैल्यू क्यों रेस्ट्रिक्ट करोगे? सिर्फ 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो स्लोप है, सॉरी, या हॉरिजॉन्टली हो सकता क्योंकि 1/m आ रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए नहीं हो सकता. Why would you otherwise restrict values of m? ओके सर, गॉट इट. ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा. In differential equations, we saw general solution and singular solutions. Okay, in differential equations, we saw general solution and singular solution of same differential equation. General solution contained arbitrary constant. Singular solution never contains any arbitrary constant.
nor their values, वरना वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना. Okay, so which differential equation or did we consider, वो हम यहाँ पे लिख देंगे. ये हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन, and this was our singular solution. Okay, this was the differential equation, this was the general solution, this was the singular solution. Our observation turned out that y equal to cx minus c squared, okay, where c belongs to R, forms an envelope of tangents to y equal to x squared. Okay, do you agree to this? अभी यहाँ पे एक ही वैल्यू प्लॉट हो रहा है डेस्मोस में, अगर चाहो तो और थोड़े रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हम प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर्ड, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 3x माइनस 9 एंड सो ऑन. ओके, तो इसका जो ये इंटरसेक्शंस आपको दिख रहा है, आई नो इट्स अ बिट मेसी बट स्टिल. ओके, लुक एट द पैटर्न, y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर. तो अगर c 1 रहा तो c स्क्वायर 1 हो जाएगा, अगर c 2 रहा तो c स्क्वायर 4 हो जाएगा, अगर c 3 रहा तो c स्क्वायर 9 हो जाएगा. ओके, एक मिनट, हम इन सब टेंजेंट्स का एक ही कलर करके देखेंगे, कुछ रिवील हो रहा है क्या पैटर्न. Yeah, so you can see that all of these are touching the parabola. तो अगर हम सिर्फ वो पॉइंट्स को ही फोकस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक एनवेलप मिलेगा ही, और माइनस करेंगे तभी कोई असर नहीं होगा उस पर. Okay, so this is actually the parabola that you are going to get eventually. Okay, it will create an impression of parabola and that parabola will be this. ठीक है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर. Got it? तो वही हमने लिखा था, y equal to c x minus a squared, c belongs to R, forms an envelope of tangents to y equal to x squared by 4. Similarly, given y squared equal to 4ax, y equal to mx plus a by m forms an envelope of tangents as m varies. Okay, that's what I was trying to discuss for so long. डिफरेंशियल इक्वेशंस में सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो डिस्कस किया था वो यहाँ पर एप्लीकेबल है. इसका मतलब सॉरी, अगर आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ओके, लेट मी मेक इट क्लियर. If you form a differential equation out of this, treating m as arbitrary constant, okay, try this. Form
a differential equation out of y equal to mx plus a by m, treating m as arbitrary constant. वो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. सी इफ y squared equal to 4ax satisfies it. What is your guess? It should satisfy. वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, करके देखो, नहीं आया तो हम उसको कल डिस्कस करें. क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? क्या करना है? एक लाइन का इक्वेशन है y equal to mx plus a by m, where a is a fixed constant, not arbitrary. M is an arbitrary constant, M can vary. Follow the procedure that we did to form a differential equation from its general solution, that is eliminate M. एक ही बार differentiate करना है आपको क्योंकि एक ही arbitrary constant है तो order 1 होंगे. Then you got a differential equation. Go to y squared equal to 4ax and see if that y squared equal to 4ax जो भी dy by dx वहां से आपको मिलेगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, करना चाहिए. ये सब लोगों को समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. Okay, so please do that. Okay, it will be a good exercise combining differential equations and parabola. ठीक है? Okay. Now we come to chord of contact. Okay, now we come to what we call as chord of contact. So what is this chord of contact? Look, the chord of contact from a point not on the parabola, not on the parabola, is y1 is equal to 2 into x plus x1. तो ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट का ही है ना? But what was the difference? The difference was, in the first case, this point was on the parabola. Okay, and now this time it is not on the parabola. Let's see graphically what this means. ठीक है, देखेंगे. तो choose another Desmos window. Let's take y squared equal to 4ax with a1. Now we'll take a point which is not on the parabola. Okay, कोई भी point ले लो. Let's take -2, 4. Okay, एक मिनट, -3 लेंगे, -3. Okay, -3, 4. तो अभी आपको क्या करना है? y1 is equal to 2a times x plus x1. एक मिनट. y1 is equal to 2a into x plus x1, is that right? y1 is equal to 2a into x plus x1. Okay, that is that. Yeah. So you might ask, what are we actually getting? Okay, we are getting a line which apparently well, seems to be having no relation with the point. Okay, but here's the thing. अगर आपने इस पॉइंट से tangents निकाले parabola को, okay, because of the curvature of the parabola, the way it is, for any point which is outside that convex region, do you agree that there will be two tangents possible? भी आपको दिख रहे हो यहाँ पे, एक आप ऐसे निकाल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक ऐसे निकाल सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये जो दोनों tangents रहेंगे ना, ये tangents के points of contact यहाँ पर. Okay, let me repeat.
you will be given a parabola and a point outside the parabola. If you form its equation, okay, which equation? Equation of the form y1 is equal to 2a into x plus x1, जो टेंजेंट के तरह ही है लेकिन टेंजेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो पैराबोला पे नहीं है. ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज this is giving you a line. What kind of line is that? The point of intersection or points of the line with the parabola, those points are actually the points of contact of the tangents drawn from the external point. Okay, we'll try to do it on GeoGebra because in GeoGebra it is more convenient to draw the tangents directly. Okay, look here. We'll keep the values same. Y squared equal to 4ax. तो ये आपका पैराबोला हो गया. कोई भी एक पॉइंट ले लो. Okay, this can be moved anywhere. ठीक है? Okay. Now what I'm going to do is I'm going to implement that y1 is equal to 2a into x plus x1. So y into y coordinate of a equal to 2a into bracket x plus x1. Okay, so as I change a, I can see that this line is also changing. Okay, this line is also changing. And secondly, that line is intersecting the parabola at two different points. Okay, now according to my claim, if you look at this point in the first quadrant and this point in the second quadrant, वहां पे अगर हमने A से tangents निकाले तो वो रहेंगे उसके points of contact. Let's see. Tangent from A to the conic equation. Okay, वो वहीं पे intersect हो रहा है. आया अभी आपको समझ में? If I change this A, okay, if I change this A, then you will still get those tangents making their points of contact on the line y1 is equal to 2a into x plus x1. ये आपको समझ में आया? Yes or no? Clear है ना? ठीक. Well, unfortunately there can't be any tangents because if the point is inside, but the moment it is outside you can definitely have tangents. Okay, तो सिर्फ आपको मैं ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस फिगर के जरिए. A is your x1 comma y1. Okay, A is your x1 comma y1. This is your chord of contact, this blue line, and these will be the points of contact from x1, okay, points of contact of tangents from x1 y1 to y squared equal to 4x. Okay, cool. You might also be asked to find the joint equation of the tangents. Who knows? ठीक है? Okay. ये और भी थोड़े डिटेल्ड हैं. बहुत सारे पॉइंट्स है. अब अगर आप आर्यंस का देखोगे तो उसमें उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स और इसके बारे में बताया है, तो अब आप सिर्फ एक ही कंसिडर करेंगे, which is equation of chord joining T1 and T2. Now these T1 and T2 are actually parameters. I don't see any difficulty in getting this equation. You may try to remember or memorize them, लेकिन अगर आपको मैंने पूछा कि tell me equation of the chord joining two points whose parameters are T1 and T2, it's easy. What you will do,
we'll first find the coordinates associated with T1, then you'll find coordinates associated with T2, and then you will find the equation of the line joining the 2 points using 2 points form. इसमें सिर्फ आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, मीनिंग if your chord contains the focus, then the endpoints of the chord, okay, let's say they have parameters T1 and T2, their product will be -1. Okay, let me repeat. अगर आपकी कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, अगर आपकी कॉर्ड फोकल कॉर्ड है मतलब वो फोकस में से पास हो रही है, तो वो कॉर्ड जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी पैराबोला को, फोकस यहाँ पे होगा किधर, तो अगर ये हो गई आपकी फोकल कॉर्ड, ओके, तो अगर इस पॉइंट को कहो P1, लेट्स से इट हैज पैरामीटर T1 एंड सपोज दिस इज P2, इट हैज पैरामीटर T2, तो अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 इंटू T2 हो जाएगा -1. प्लीज नोट, T1 and T2 are not slopes. They are not slopes. Rather, T1 and T2 are parameter values where the focal chord meets the parabola. ठीक है, क्लियर है? Yes, is this result clear? Yes, sir, clear. Yes, sir. चेक करेंगे. We'll check. Okay. तो सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ करेंगे. Okay, that's our parabola. Then we need a point on it. Right? We need a point on it. First, let's put a focus. Okay, then we'll need a point on it. Okay, and now let us draw a line passing through B and A. ठीक है, अभी इस लाइन को हम इंटरसेक्ट कराएंगे फिर से उस पैराबोला को. इंटरसेक्ट F एंड इक्वेशन फॉर्म. तो इसका जो D पॉइंट है ना, उसका हमें अभी कंसर्न है क्योंकि C तो B के साथ ओवरलैप हो चुका है. ओके, सो we are now concerned with the parameters of B and D. And what have we noted is the product of the parameters of B and D should be -1. Okay, तो हो सकता है क्या, चेक करेंगे. We will take the help of y coordinate. Y coordinate is 280. तो अगर हम लोगों ने y1 लिया, y1/2a लिया, तो वो हो जाएगा T1, और y2/2a लिया तो वो हो जाएगा T2. तो हमें अभी क्या चेक करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 4a², वेदर इट इज -1 और नॉट. चेक करेंगे. Product of the y coordinates of B and D divided by 4 times a². अभी आप कहोगे ये कोइंसिडेंस है. It's not coincidence. Okay. As I change B, its coordinates are obviously changing, but the coordinates of D are also changing, but this is not changing. yb into yd upon 4a². What does that result teach you or tell you? If you have a focal chord of a parabola, focal chord मतलब chord जो focus में से पास हो रही, ठीक है, the product of the parameters at the end points of the focal chord is -1.
Is it clear? Yes? Yes, clear. Yes, sir. Clear. Okay, good. So that's the end of the theory part of parabola. We start with ellipse. So I want you people to have this figure in front of you where your plane is going to cut the cone at an angle with its axis. Okay. In planetary motion, which we have covered in gravitation, we have Kepler's laws, right? And one of the laws is that the Earth and the other planets revolve around Sun in elliptical orbits. I hope you remember that law. Okay. But the description or the statement of the law doesn't end there. They say the planets revolve in elliptical orbits with Sun as one of the foci. Okay, so in the case of parabola, we did not have more than one focus, but for ellipse and hyperbola, we will find that there will be two foci and therefore there will be two direct traces as well. Correct? So keeping that in mind or recollecting that from physics, that ellipse has two foci, we start with the application of the focus directrix property. अच्छा, ये याद आ रहा है ना सबको? केपलर्स लॉ में एक स्टेटमेंट था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में. यस? Yes. sir. Oh. अच्छा. Now the description of the focus directrix property of ellipse is no different from that for parabola. But what is different is the value of the eccentricity. Okay. So, eccentricity of ellipse, it always lies between 0 and 1. Okay, eccentricity of ellipse always lies between 0 and 1. Okay, now in our standard notation, we take S as the focus, right? And L as our directrix. Okay, and then we say that let P be the locus of the point, okay, on ellipse, which meets the focus directrix property. So what is it? SP is equal to EPM. Okay, now I won't write the equation again because you know to find the distance SP we use distance formula, and to find the distance PM, the blue distance here, we use the formula for length of perpendicular from a point on a line. तो वो सबको याद आ रहा है. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि because the eccentricity E of the ellipse is always less than 1, okay, the eccentricity E is always less than 1, what we can say is P is always closer to focus than to directrix. क्यों? क्योंकि फोकस का जो डिस्टेंस है या फोकल डिस्टेंस जो है वो SP है ना, और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है वो PM है. एंड बिकॉज SP इज E टाइम्स PM वेयर E इज लेस देन 1, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि SP हमेशा PM से कम होगा.
and therefore the any point P on the ellipse is always going to be closer to the focus than to the directrix. Have you understood this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Then you can, of course, derive the equation of the ellipse, but it's a bit more time consuming, so I'm avoiding that. We have done it already for parabola, okay, in its standard form. Okay, so we now move to the standard form of equation of ellipse. Okay, now we know that any conic section is or will be represented by जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर्ड एक्स वाई ये 3 टर्म्स रहते हैं सेकेंड डिग्री के, एक्स और वाई टर्म्स रहते हैं फर्स्ट डिग्री के, और एक कांस्टेंट टर्म रहता है. बट दैट एक्चुअली कवर्स ऑल ऑफ द कोनिक सेक्शंस इंक्लूडिंग द डीजेनरेट कोनिक सेक्शंस. ये आपको याद आ रहा होगा. तो हम लोगों को वो सब नहीं लेना है, ओके, बिकॉज वी वुड लाइक टू स्टडी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स. तो इसलिए हम हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में सिलेक्ट करेंगे ताकि हम लोगों को उस कोनिक का बहुत आसान फॉर्म मिलेगा. राइट? Yeah. So you may remember how we chose the axis for a circle and for a parabola. एक सिर्फ रिमाइंडर के लिए हम पैराबोला का फिर से देखेंगे कि पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके, उसके लिए हमने क्या किया था. उसके लिए हमने फोकस चुना था एक्स एक्सिस पे, राइट, और डायरेक्ट्रिक्स चुना था वाई एक्सिस को पैरेलल. Okay, so this was our chosen point for the focus of parabola, and this was our chosen line for the directrix of the parabola, and then it reduced to y squared equal to 4x. I hope you people remember this. Okay, so similar to parabola, where we are very particular in selecting the point as the focus and the line as the directrix in terms of coordinate geometry, ellipse के लिए भी हम लोगों को बहुत particular हम रहते हैं. Okay, so how does it work? In the case of ellipse, okay, in the case of ellipse, what we do is we again select our focus on the x-axis. Okay, so we select our focus as AE, 0, and we select our directrix as x is equal to A upon. ठीक है, तो इलिप्स का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो इलिप्स के ऑफ कोर्स बाहर होता है. नो पॉइंट इज एवर गोइंग टू इंटरसेक्ट, no point is ever going to lie on the डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि उसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर एक पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पर है तो PM 0 है. ऐसे तो नहीं है क्योंकि फोकस इज डिफरेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स इज डिफरेंट. ठीक है, तो ये हमारा चोजन पेयर है, इसका फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का. ये क्यों करते हैं? टू मेक द इक्वेशन सिंपल. Okay, to make the equation simple. Observe that in this case we have only two parameters A and E, है ना. तो अभी हम अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मतलब क्या, ये हो गया हमारा S, ये हो गया हमारा L, और इस पे अगर हमने ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगाए, okay, if we apply this property SP equal to EPM to that chosen pair of point and line, तो हम लोगों को एक equation मिलेगा, and we cannot expect that equation to have anything except X, Y, A and E, correct? So if we do that, applying SP equal to EPM, that is focus directrix property,
we get. तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप एक बार घर पे ये डिराइव करना आफ्टर आवर सेशन. We get x squared upon a squared plus y squared upon a squared into 1 minus e squared equal to 1. ठीक है, x squared upon a squared plus y squared upon a squared into 1 minus a squared equal to 1. This is the standard form of equation of ellipse. अभी जब हम हाइपरबोला देखेंगे तब हाइपरबोला के केस में भी आपको ऐसा ही एक इक्वेशन आएगा, लेकिन हाइपरबोला का जो एक्सेंट्रिसिटी होता है वो एक से बड़ा होता है. दैट्स वाई दिस टर्म इफ यू राइट इट इन दिस फॉर्म a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, तो वो नेगेटिव होगा बिकॉज e स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. So what we do is we write it as e squared minus 1 and we change the plus sign to negative sign. Okay, minus sign. That's the change that takes place when we study the hyperbola. Please note that this change in the equations of ellipse and hyperbola is there only because of the value of e. Ellipse के लिए eccentricity का value 1 से कम है, parabola के लिए 1 है और hyperbola के लिए 1 से ज़्यादा है. Okay, so and in parabola the term e never appears because e is equal to 1. So even if you don't write it, it's fine. I hope you people are getting it. तो इलिप्स के लिए चोजन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर आपने याद रखा तो बाकी का आपको आसानी से आ जाए. ठीक है, ओके. So that's the standard form of equation of ellipse. Now it so happens that because of the way this equation contains even powers of x and even powers of y, the focus directrix property is satisfied by all the points on the ellipse with reference to ae comma 0 as the focus and x equal to a by e as the directrix, जो मैंने यहाँ पे निकाला है. Okay, but in addition to this, this is also satisfied by yet another pair of point and line. तो हम वो भी अभी दिखा देंगे. ठीक है, it's somewhere here. Its equation is x equal to negative a by e. ओके, और ये जो करस्पॉन्डिंग फोकस है f1 लिखा है इस फिगर में, उसको द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी नेगेटिव ए कॉमा 0 एंड f2 विल बी पॉजिटिव ए कॉमा 0. Okay, and as I said, the point P will always be closer to the focus than to the directrix. ठीक है, I agree we haven't yet derived, but I have told you how to derive the equation. SP इक्वल टू ई पे आप अप्लाई करो, ई को लेस देन 1 है तो वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो what we now do is we avoid using eccentricity there and we introduce this change in our equation. तो y स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है उसको हम a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं लिखते हैं कन्वेंशनली, उसको हम b स्क्वायर लिख देते हैं. And that is where we get the standard equation of ellipse, x squared upon a squared plus y squared upon b squared equal to 1. ठीक है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Got it? Okay. Cool. Now we again come to the set of terms that we assign to any conic. First thing is focus or foci. We obviously know what these are, a comma 0 and minus a comma 0. There are two foci for the ellipse and these foci are always inside the ellipse. Okay, that's the foci. Now what is major axis and minor axis? Look, both these are axes of symmetry. Okay,
major axis and minor axis, both of them are axis of symmetry. But then how do we make the distinction between major and minor axis? Look, major axis is axis of symmetry. Okay, axis of symmetry on which foci lie. Okay, and the minor axis is the axis of symmetry perpendicular to minor axis. Major axis. Okay, quite often instead of considering it as a line, we treat the major axis and the minor axis as the segments. Okay, actually वो lines है, लेकिन हम उनको segments treat करेंगे, तो क्या हम उनका length निकाल सकते हैं? क्या तो निकाल सकते हैं. Okay, so the length of the major axis is found to be 2a. I'll show you how. And the length of the minor axis is 2b. Okay, provided a is greater than b. अभी इनके लेंथ्स कैसे निकालेंगे आप? For that, let's go back to the figure. Look, in this case, because the ellipse is wider at the x-axis and narrower along the y-axis, clearly the foci will lie on the x-axis, and the distance between the two extreme points where the ellipse meets the x-axis, its length will be considered as the length of major axis. ठीक है, मतलब कौन सा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा मेजर एक्सिस. क्लियर? एंड हाउ टू फाइंड दिस? इट्स इजी. You let the ellipse intersect the x-axis and you find the coordinates of the points of intersection of the ellipse and the x-axis. तो वो बहुत ही आसान है. ये 0 हो जाएगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि x-axis से इंटरसेक्शन ले रहे हो आप, तो x² आ जाएगा a², तो 2 पॉइंट्स आएंगे x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, and the distance between them is 2a. I hope everybody got that. So that's 2a. And then length of the minor axis becomes 2b, where you have to consider this particular distance. This is the minor axis. Okay, raise your hands if you understood what major and minor axis of ellipse are. Okay, cool. Acha, now how do we define the center? Do you remember how we had defined the center? If not, pay attention. Center is the point of intersection of the axis of symmetry. So in our chosen coordinate system, the point of intersection of the axis of symmetry is actually the origin itself. Note that this won't always be the case. Okay, this won't always be the case. अगर थोड़ा सा शिफ्ट किया इलिप्स ऊपर या नीचे, तब अकॉर्डिंगली सेंटर उसका शिफ्ट होगा. Okay, yes. Then we come to latest rectum. What is latest rectum? Latest rectum is basically the focal chord. मतलब ऐसे कॉर्ड्स जो फोकस में से पास हो रहे हैं, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. Okay, focal chord perpendicular to major axis. Does anyone know the length of the focal chord for ellipse and for ellipse for time being? नहीं पता है तो अभी हम निकालेंगे इसका. कैसे निकाल सकते हैं? Look,
if I want to draw the focal chord, okay, if I want to draw the focal chord, what I need to do is I need to first draw a perpendicular from the focus to where? Perpendicular to the major axis and let it intersect the ellipse in it. Okay, so that's this point. If you take its reflection, okay, if you take its reflection along x-axis, then you will get the other end of the latest rectum. Can we find its length? The process is simple. What you do is you substitute the coordinates of the point F2, the x coordinate particularly, because this point and this point, both of them will have the same x coordinate as F2, क्योंकि वो vertical line है ना, तो vertical line पे सभी points के x coordinates identical होते हैं. Okay, तो ये आपको डालना है यहाँ पे. तो ये अब हम अभी सॉल्व करेंगे. तो देखिए, okay, we are finding the length of the latest rectum now. Our job is to put x as AE. ठीक है, our job is to put x as AE, so this will be a squared e squared. We are expecting two values of y which are equal and opposite, तो ये चला जाएगा a squared a squared. तो y squared will be equal to 1 minus e squared, okay, into b squared. Okay, y squared is equal to 1 minus e squared into b squared. So what will be y? Plus or minus under root 1 minus e squared into, करेक्ट. तो हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है. सो वी नीड टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स दैट वी हैव गॉट हियर. ओके, सो इफ वी डू दैट इट विल बी 2 times b into root 1 minus e squared. ओके, वेयर डिड दैट 2 कम फ्रॉम? 2 कहाँ से आया? इजी. 2 आया क्योंकि यहाँ से ऊपर तक जितना आप जाओगे उतना ही आपको नीचे जाना है, बिकॉज द अदर एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, isn't it? तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, इसलिए 2. ओके, एंड नाउ वी वंस अगेन इन्वोक दिस रिलेशनशिप. ओके, वी इन्वोक दिस रिलेशनशिप एंड ट्राई टू एलिमिनेट e. तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए. What I'm going to do is I'm going to replace 1 minus e squared by, I'm going to replace 1 minus e squared by b squared upon e squared. Clear? And that actually simplifies our expression a lot, क्योंकि वो जो b squared upon a squared है उसका root आएगा b upon a into 2b, so that will become 2b squared by a. Okay, it is expected that you know this expression for ellipse and for hyperbola. कई बार ऐसे आता है कि कुछ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ देंगे और कुछ पैरामीटर देंगे और बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालो या एक्सेंट्रिसिटी निकालो. ओके, सो यू आर सपोज टू नो दिस. ओके, सो लेट मी राइट इट हियर. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b squared by a. सबको समझ में आया लेटेस्ट रेक्टम क्या है? तो कई बार ना ये लोग इनका प्लूरल यूज करते हैं, बिकॉज द एलिप्स हैज 2 फोकाई. यू कैन ड्रॉ 2 chords, 2 focal chords परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. तो उसका प्लूरल है लाटेरा रेक्टा. Okay, that is a Latin plural, or you may just say latest rectums. Okay, you can just use the English plural there, but don't be surprised to see the word latera recta there. Okay, that is just the plural of latest rectum. ठीक है? Okay, तो मैं ये डिलीट करूँ क्या रहने दो ये वाला पार्ट? Shall I keep it in the text? हाँ सर, रहने दीजिए. ओके,
तो लिख दो यहाँ पे जो भी वर्किंग है, फाइंडिंग लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर. ठीक है, डन. Cool. Now let us see some results pertaining to ellipse. Fine. So in this figure, almost everything is presented. Ellipse is there. C is the center. Right, and of course it is at the origin because of the choice of the axis. And what is AA dash? Okay, AA dash is major axis. So CA dash is semi-major axis. Now this should again remind you of one of the laws of Kepler again, particularly the law of periods. तो वो जो law of periods है ना केपलर का, उसमें बोला है कि the square of the time period of the planet, okay, period of revolution, is proportional to cube of the semi-major axis. Raise your hands if you remember that. तो वो semi-major axis क्या है? This is actually the semi-major axis. आया सबको ये याद? ओके, ये केपलर्स लॉ, मतलब केपलर के दो लॉज में इलिप्स का या इलिप्स के टर्म्स का इंक्लूजन है. फर्स्ट इज दिस इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट, द प्रीवियस वन, एंड दिस इज द लॉ ऑफ पीरियड्स. ठीक है, ओके. देन बी डैश विल बी योर minor axis, and CB will be semi-minor axis. Which is B, और ये हो जाएगा E. ठीक है, cool. और बाकी सब चीज़ें आई होप यू पीपल नो. LL dash is the latest rectum. Yeah, that's it. And SP is equal to EPM, and same thing applies to S dash and M dash. So S dash P is equal to E into PM dash. तो ये जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है, ये दो पेयर्स ऑफ पॉइंट लाइन सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, तो दो फोका होता है एलिप्स को और दो डायरेक्ट ट्रेसेस भी होता है. ठीक है, इट्स अ क्लोज्ड कर्व, foci lying inside the ellipse. Okay, looks like a circle but not actually a circle. We shall now see what happens if we decrease the eccentricity of the ellipse and let it tend to 0. Okay, आपको अभी easily वो पता चल ही जाएगा, मतलब जियोजेब्रा की भी ज़रूरत नहीं है. Okay, क्या कोई बता सकता है क्या? If eccentricity tends to 0, shape of ellipse gets more and more circular. Again, you people have the benefit of calculus because we already covered it. देखो, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स का है वो ये है. Correct? Now, when E tends to 0, 1 minus E square tends to 1. तो हमारा जो इक्वेशन है वो सर्कल के इक्वेशन में कन्वर्ट होगा जितना E कम है उतना. So it then becomes a circle. Correct? Second point is, if E tends to 1, okay,
अगर E1 को टेंड कर रहा है तो क्या होगा, किसी को पता है? Yes, please. Of course, we will end up with a singularity there because, like in the case of circle, हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहाँ पे और हमें इन डिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा. लेकिन अगर हमने वन सब्स्टिट्यूट किया तो वो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है. ओके, सो एलिप्स गेट्स मोर एंड मोर पैराबोलिक. ओके, तो ये हम अभी जियोजेब्रा पे देखेंगे. ठीक है. And see, now you can also guess it because parabola's eccentricity is equal to 1. तो आपको आपने अगर ई को 1 के करीब लेते हो आप, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इलिप्स से बड़ा बड़ा होता जाएगा. मैं सी दैट. ओके, लुक. Okay, so what I'll do is I'll first build an ellipse. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये जो ओ एक मिनट, हाँ सॉरी, what this has done is it has taken E as the calculus E, तो ये हम नहीं ले सकते, इसको C ले लेंगे. इसको squared by a squared plus y squared upon a squared into bracket 1 minus, इसको d ले लेंगे. ओके, या तो हमारा d जो है ना वो एक्सेंट्रिसिटी है. सो लेट मी डेलिबरेटली रेस्ट्रिक्ट इट्स रेंज फ्रॉम 0 to 1. ठीक है. नाउ यू सी द चेंजेस. Currently the eccentricity is 0.4. Okay, currently the eccentricity is 0.4. If I increase the eccentricity, what are we expecting? We are expecting that the ellipse becomes more and more parabolic. Let's see. Okay, तो क्या हो रहा है? The ellipse is actually shrinking. Okay, the ellipse is actually shrinking, and the more you make it closer, okay, these ends, okay, the two ends, I would say the two vertices of the ellipse, they will diverge and they will go to plus infinity and minus infinity respectively. Okay, yeah, see, तो दिस इज रिजेंबलिंग पैराबोला. आप ये प्रूव कर सकते हो, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पैराबोला जिसको आपको आदत है देखने की, वो एक इस शेप का है, समथिंग लाइक दिस, राइट. सो दिस इज इंडीड अ पैराबोला और पैराबोलिक शेप ऑलमोस्ट, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन योर एक्सेंट्रिसिटी इज वेरी क्लोज टू 1. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर एक्सट्रीम. क्या है वो दूसरा एक्सट्रीम? द अदर एक्सट्रीम इज व्हेन the eccentricity decreases and it is very close to 0. ओके, तो ये पॉइंट 1 है और ये ऑलमोस्ट आपको सर्कल दिख रहा है. इसको और कम करूंगा तो वो परफेक्टली सर्कुलर हो जाए. सबको समझ में आया है? If eccentricity of ellipse is close to 0, it resembles a circle. If eccentricity of ellipse is close to 1, then it resembles parabola. But
Not exactly parabola because it is still a closed curve and parabola is an open curve. Raise your hands if you understood that. Cool. Okay. Now let's discuss the tangents and normals part. And of course the parametric equations. जो सर्कल के लिए हमने किया था वही हम ellipse के लिए भी करेंगे. So the parametric equations of the ellipse are x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta. Theta is called the eccentric angle. तो ये eccentric angle क्या चीज़ है? Okay, eccentric angle is nothing but the usual angle in the polar coordinates. तो मान के चलो ये आपका पॉइंट P है. ओके तो जब आप P को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, ओके व्हेन यू ज्वाइन द पॉइंट P एंड पॉइंट O, ये एंगल आपको मिलेगा एक्सेंट्रिक एंगल. ठीक है, तो एक्सेंट्रिक एंगल जब 0 होगा तब आपको ये पॉइंट मिलेगा, π/2 के लिए ये मिलेगा, पाई के लिए ये मिलेगा, 3π/2 के लिए और फिर 2π के लिए ये पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, दैट्स द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ellipse और इक्वेशंस. ओके कूल. नाउ वी गो टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो ये वही है जो पहले सर्कल के लिए हमने किया था और पैराबोला के लिए भी किया था. क्या किया था हमने? x² को रिप्लेस किया था x1 से, y² को रिप्लेस किया था y1 से. करेक्ट फॉर टेंजेंट. ओके फॉर नॉर्मल ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इट. तो इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वुड बी x(x1) अपॉन a² plus y1 upon b² equal to 1. How many of you remember this? Tangent at circle or tangent to circle at a point, same form. Okay, I am not recommending you to memorize the equation of the normal, but I am recommending you to recall the fact that slope of the normal is -1 times the slope of the tangent. ओके तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है या वो आप इससे निकाल सकते हो. इट विल बी -x1/a² इंटू b² बाय y1. ओके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a² y1 अपॉन b² x1. और फिर ये स्लोप का इस्तेमाल करके आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो, है ना. y minus y1 is equal to m normal into x minus x1. करेक्ट. तो टेंजेंट का आप इक्वेशन मेमोराइज करो, नॉर्मल का करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है फाइन. एंड ऑल्सो स्लोप इज dy/dx ऑल्सो, उससे भी आप निकाल सकते हो. अगर भूल गए कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, it is dy/dx at x1 y1. How can we find it? By implicit differentiation. है ना, implicit differentiation से भी आपको निकाल सकते हैं. Again we are getting the benefit of calculus because we have studied all these things already in the calculus. ठीक है ओके. इसमें किसी को कोई कुछ डाउट है? यस No, sir. नो क्लियर एवरीथिंग. ओके ऑलराइट देन लेट्स गो टू द कंडीशन फॉर टेंजेंसी. Okay, this condition is very particular because it wants us to have the equation of the ellipse in its standard form. So
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन कब टेंजेंट हो सकती है? इलिप्स की जो सिमेट्री है, इससे आपको ये पता चलेगा कि एक ही स्लोप के दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। ओके, एक ही स्लोप के दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, इसीलिए सी के दो वैल्यूज पॉसिबल, क्योंकि स्लोप कैन नॉट चेंज। करेक्ट? सो द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगेन इट कैन बी डिराइव्ड बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विथ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, दैट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो कर सकते हो। एंड इफ यू रिमेंबर फॉर सर्कल्स we had c squared equal to a squared into m squared plus 1. Of course, because for an ellipse we don't have a equal to b, आपको क्या करना पड़ेगा? b स्क्वायर को यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा। ओके, तो इलिप्स के लिए वो कंडीशन है c इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर्ड m स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर। Let's check it now. Okay, let us check the condition. Okay, तो let's keep this ellipse. एक मिनट, अभी हम लोगों को b चेंज करना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे x स्क्वायर्ड बाय 9 प्लस पाई स्क्वायर्ड बाय 4 इक्वल टू 1। That's our ellipse. ठीक है? And suppose I want to find, let's say, y equal to mx plus. Now I know that my condition for tangency is c squared should be equal to a squared m squared plus b squared. ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मुझे रूट लेना पड़ेगा। Okay, a squared m squared, so 9m squared plus 4. Correct? Now look here. As I change m, the point of contact is changing, but the line is not changing. I mean, the behavior of the line as a tangent is not changing. It seems like the line is rolling without slipping on the ellipse. Correct? Now this is only covering the first and the second quadrants. What are we supposed to do then? अगर हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया and if we change it to minus, then we will actually get the tangent parallel to this, है ना? So as I change m, we will go on getting the two parallel tangents. Has everybody understood this? Yes. Yes, sir. Got it. Okay. तो इससे या इसमें से वो एक पॉसिबल क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैविंग सो एंड सो स्लोप टू एलिप्स। पूछ सकते हैं, है ना? तो वो दोनों कवर हो जाएगा, एलिप्स भी कवर हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कवर हो जाएगा। Find the joint equation of pair of tangents to ellipse, to given ellipse having given slope. तो ये स्लोप निकालने के लिए वो और भी कुछ दे सकते हैं, लेट्स से परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, पैरेलल टू दैट लाइन, ऐसे। ठीक है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे आएगा? दो लाइंस आ जाएंगे आपको, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस दिस, सेकेंड वन इज y इक्वल टू एम एक्स माइनस दिस। ओके, बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली वैलिड। ठीक है, कूल। अभी और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि the farthest these tangents can be is 2a, the distance between the two vertices on the x-axis.
The closest these tangents can be is when the tangents are horizontal, where the separation distance between the tangents will be 2b. और बाकी सभी tangents के लिए, pair of tangents के लिए, वो जो distance रहेगा उन दोनों में से, दोनों tangents में, वो 2a से कम और 2b से बड़ा रहेगा. Correct? When I make m0, the tangents are perfectly horizontal, and this is where the tangents are closest. Right? That is the distance of the length of the minor axis. And if you continue to increase this, the distance is going to increase between the tangents, and it will become maximum, the perpendicular distance, when they are exactly vertical. Okay? Cool. Okay. Now we come to the chord of contact from x1. Now what is this chord of contact? ये देखा है हमने सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में, ये पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अभी इलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में फिर से देखें. Okay, so what we do is we consider ellipse and a point outside the ellipse. Okay, now just like for a circle, if we have a point outside the ellipse, we can draw two tangents to the circle. Similar to that, for a point which is outside the ellipse, हम दो tangents निकाल सकते हैं. Okay, we can draw two tangents to ellipse. Okay, now what is the chord of contact? The chord of contact is the chord joining these 2 points of contact of the tangents drawn from P. तो ये है आपका chord of contact. And this has the same equation as that of tangent. Its equation is x(1) upon a squared plus 5y1 upon b squared equal to 1. I have an animation for this, which we will see at the end, okay, because it is covering a circle, ellipse as well as hyperbola. Okay, so this is the chord of contact. But the most important point which I find or I feel here is the chord of contact has essentially the same equation as that of tangent. Tangent का भी वही है, लेकिन tangent के लिए x1 y1 ये ellipse पर lie होता है. अगर वो point ellipse के बाहर है, तो अगर आपने वो equation बनाया तो आपको tangent नहीं मिलेगी. आपको क्या मिलेगा? You will basically get the chord of contact. What is chord of contact? From a point outside the ellipse, two tangents can be drawn to ellipse. Wherever those tangents make contact with the ellipse, join those points of contact, you will get chord of contact. Raise your hands if you understood that. ठीक है, chord of contact सबको समझ में आ गया. For example, अगर आपको निकालना है इस इलिप्स के लिए, चाहो आप एक पॉइंट ले लो इधर भी, लेट्स से यू टेक दिस पॉइंट, ओके, whose current coordinates are 4,3. ठीक है, तो अगर इसका chord of contact आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? x(1) upon a squared, तो it will become 4xy9, ओके, प्लस y squared by 4 है, y coordinate कितना है उसका? 3, तो 3y by 4 equal to 1. Which means if we want to find the tangents here, or the tangents from A to this ellipse, you are very sure that one of the points of contact will be in the second quadrant and the other one will be in the fourth quadrant. Check करेंगे. Tangent from A to equation. See, the three things are concurrent there, the ellipse,
the chord of contact and the tangent. आया समझ में? That is how chord of contact behaves. In fact, the chord of contact finds or gives us an easier way of actually finding the points of contact. आपको ellipse का equation और chord of contact का equation simultaneously solve करना पड़ेगा. ओके, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, ऑलराइट, दैट्स रिगार्डिंग द chord of contact. Now we go to the equation of pair of tangents from x1 y1. ये सर्कल के तरह ही है. S(S1) is equal to t squared, ये उसका जॉइंट इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का. तो यहाँ पे S क्या है, S1 क्या है और T क्या है. मैंने बोला था ये आपको सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में. अभी हम उसको फिर से रिविजिट करेंगे इलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, सो लुक एट chord of contact gives you the equation of the line joining the points of contact. But is there any way to get the equations of the tangents? Yes, there is a way. कैसे निकालेंगे उसको? So the way to get it is this. S is equivalent to x squared by a squared plus y squared by b squared minus 1. Okay. S1 is equivalent to x1 squared upon a squared plus y1 squared upon b squared minus 1, and t is equivalent to, or t represents, x1 by a squared plus y1 by b squared minus 1. मतलब टेंजेंट के इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड 0 किया तो. करेक्ट. So using this we can easily find the joint equation of the pair of tangents from a point outside the ellipse. अभी चेक करेंगे कि ये वाकई में सही है क्या. ठीक है, ओके. S(S1) is equal to t squared is what we are looking for. Okay, S(S1) equal to t स्क्वायर. ठीक है, S(S1) इज इक्वल टू टी स्क्वायर. कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, मेकिंग श्योर दैट वन विच वी राइट ऑन द राइट हैंड साइड कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर्ड बाय 9 प्लस y स्क्वायर्ड बाय 4 माइनस 1. ओके, दिस इज S. नाउ व्हाट इज S1? तो S1 के लिए x और y को पूरा ही रिप्लेस करना है a के कोऑर्डिनेट से. तो a के कोऑर्डिनेट से 4 3, तो x स्क्वायर्ड की जगह आएगा 16, y स्क्वायर्ड के जगह आएगा 9 माइनस 1. ओके, अभी RHS में क्या आएगा? t स्क्वायर्ड. तो t मतलब वो जो 4x अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 4 माइनस 1 है वो आएगा. दैट इज x(x1) अपॉन a स्क्वायर्ड प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर्ड माइनस 1. ओके, तो कर देंगे वो 4x by 9 plus 3 by 4 minus 1. You don't see anything happening there because we have already drawn those tangents. Look, I'm hiding everything. Okay, so currently on your screen you can only see the point, the ellipse and the chord of contact. तो अभी मैं S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर्ड को रिप्रेजेंट करूंगा. आपको वही दो टेंजेंट्स नजर आएंगी जो ए से पास हो रही है. ओके, लेट मी हाइड दिस. लेट मी शो द टू टेंजेंट्स. सी, तो दिस इज एक्चुअली द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. एनी डाउट है? No, sir. It's clear, right? S(S1) is equal to t squared gives us the pair of tangents. So joint equation दे रहा है वो, है ना? Okay. Yeah. So the next thing is the director circle. What is director circle?
Director circle is locus of a point such that tangents drawn from it to given conic or to given ellipse are at right angles. Okay, and you can see that this circle is also centered at origin and its radius is actually root of a squared plus b squared. Okay, तो इसका अभी हम डेमो देखेंगे जियोजेब्रा पे. क्या आपको विजुअलाइज करना है? एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर्ड अपॉन ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन बी स्क्वायर्ड इक्वल टू 1. उस इक्वेशन को करस्पॉन्डिंग हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. ओके, और अगर हमने इस सर्कल पर जो भी पॉइंट लेंगे वहाँ से अगर हमने टेंजेंट निकाला तो वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर रहेंगे. विल चेक. ओके, एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड. ए हमारा 9 है ए स्क्वायर्ड और बी हमारा 2 है तो बी स्क्वायर्ड. करेक्ट. सो I'd like to choose a point. I'd like to choose a point on the circle. That is our point B. क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा? अगर B से हमने टेंजेंट्स निकाले इलिप्स के लिए ओके, ओह सॉरी, टू नॉट इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 1. तो वो टेंजेंट्स हमेशा 90 डिग्रीज एंगल करेंगे. ओके, ये हमारा क्लेम है. इस एलिप्स के लिए हम वो क्लेम वेरीफाई करेंगे. तो लेट्स चेंज द कलर. ठीक है, तो जैसे भी मैं पॉइंट बी को मूव करूंगा ये जो एंगल है बिटवीन जे एंड J2 वो 90 आपको दिखाई देगा. ठीक है, लुक, द पॉइंट B is moving along the director circle making right angles, the tangents, and those are simultaneously tangent, those lines are tangential to ellipse. आया आपको समझ में? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? हाँ सर. Okay. Now, I would like to tell you one more interesting result about ellipse, and there are actually two instances which I remember from NEST where there was a question directly based on this. In fact, they had asked to check whether the result is true or not. उसका प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपको वो रिजल्ट पता है तो ही बेहतर है. प्रूव कर सकते हो आप. आई हैव प्रूफ, आई विल लेटर ऑन सेंड द प्रूफ टू यू. तो द रिजल्ट इज दिस. सपोज यू टेक एनी ellipse, okay, any ellipse if you take, and let this be the major axis, let this be the minor axis. ठीक है, तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे. Okay, suppose this is one focus and suppose this is the other focus. Okay, so the result tells you that अगर आपने P को ज्वाइन किया फोकस 1 और फोकस 2 को,
Okay, suppose you join the point P with the foci, you will get an angle. This angle is bisected by the normal at P. ये result है. Okay, let me repeat the result. The result is, if you take the point P anywhere on the ellipse and join the point with the foci, you will get an angle. That angle is always bisected by the normal at P. Okay, this angle is always bisected by the normal at P. ये standard result है. Okay, now because the normal is bisecting the angle, so is the tangent. Obviously, has to. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये दो एंगल्स भी सेम ही हो जाएंगे. कौन सा? ये वाला और ये. Okay, this has been asked in NEST. Maybe when we'll solve MCQs, I will actually show the question also. The normal at a point bisects the angle between focal radii at that point. Clear है? Yes, sir. We can make it on GeoGebra, but I guess we are running out of time. So, okay, let's do it. Let's do it for Ellipse. Okay. ठीक है, तो अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें हाइड करनी पड़ेंगी. डायरेक्टर सर्कल में हाइड कर रहा हूँ, बी हाइड कर रहा हूँ, टेंजेंट्स दोनों हाइड कर रहा हूँ और ये एंगल भी हाइड कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी हमें लेना पड़ेगा एक पॉइंट ऑन इक्वेशन 1. Okay, now we also need the foci of the ellipse, so let's show the foci. Foci are D and E. ठीक है, तो आपको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा सेगमेंट DC और सेगमेंट CE. ओके, फिर आपको लेना पड़ेगा angle bisector of DCE. Okay, angle bisector of DCE. Okay, this is angle bisector of DCE. अभी अगर हमने ये चेक किया कि C पर जो भी टेंजेंट है, वो टेंजेंट और ये एंगल बाइसेक्टर N, इनका अगर एंगल 90 है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए. ठीक है, लेट्स डू इट. टेंजेंट at point C to the conic equation 1. And if we now go for the angle between the lines, which two lines? Tangent is P and normal is N. Okay, it's calling it 270. इसका ऑर्डर रिवर्स करके देखेंगे, शायद 90 दे. It's 90. Okay, now is this merely a coincidence that for this particular point C it is giving 90? It's not. No matter where you take C, that angle will always be bisected. ठीक है, मतलब DCE का जो बाइसेक्टर है वो क्या है? नॉर्मल. कैसे चेक किया? पहले एंगल बाइसेक्टर निकाला हमने जियोजेब्रा यूज करके, फिर we found a tangent at C and then we found the angle between that angle bisector and the tangent at the point. It never changes, it remains 90, verifying that angle bisector itself is the normal. Okay, so please remember this. It is an important result for Ellipse. ठीक है, okay. Yeah, so the last point pertains to the area of the ellipse. The area of the ellipse can be found out using integration applications of definite integral. तो एरिया ऑफ एलिप्स का मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ और कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ. यू कैन टेक इट एज एन इंटीग्रेशन एक्सरसाइज. सो एरिया ऑफ द एलिप्स इज पाई AB. ओके, एरिया ऑफ द एलिप्स इज पाई AB. तो इसका प्रोसेस ये है, just to get a feel of how it works.
The process is this. Okay, what you do is you take the portion of the ellipse in the first quadrant. Okay, first quadrant में जो भी हमारा portion है ना वो आपको लेना. ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका a. ठीक है. Now what is the equation of the ellipse? It is x squared upon a squared plus y squared upon b squared equals 1. Now if you just focus on this branch, rather this portion of the ellipse, okay, that portion of the ellipse, its equation would be y equal to positive b times root of 1 minus x squared by a squared with x lying between 0 and a. करेक्ट. तो इसको हमें करना पड़ेगा थोड़ा सिंप्लीफाई. तो ए स्क्वायर डिनोमिनेटर से बाहर ले लो तो वो a हो जाएगा एंड हियर इट विल बी रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. And this is going to serve as our integrand. Again, integration is going to come to our rescue because we already studied that. Definite integrals application as area. So area will be 4 times integral 0 to a dx. और यहाँ पे integrand ये टर्म है. ठीक है. y 4 times because of the symmetry about the ellipse about x and y axis. Raise your hands if you understood that. How many of you have derived this formula? If you haven't, highly recommended that you derive it now. क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपके इंटीग्रेशन फार्मूला आपको कितने याद हो रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो वो भी you'll get it. And secondly, the area problem वो भी हो जाए. ठीक है. So this is about area of the ellipse. And now I have one thing to cover which you probably know, and that is the sum of focal distances of a point on ellipse is always constant. And is equal to length of measure axis. Okay, in other words, S1p plus S2p is always 2a. अभी आप कहोगे प्रूव कैसे करोगे इसको? कैन यू प्रूव इट? प्रूफ आसान है. देखिए, लेट्स रिकॉल दैट S1p is equal to EPM1 and S2p is equal to EPM2, where E is the eccentricity, M1 and M2 are the feet of the perpendiculars drawn from P on the direct axis. ठीक है. तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आपको E टाइम्स मिल जाएगा PM1 plus PM2. करेक्ट. नाउ PM1 plus PM2 is actually the distance between the direct traces. कैसे? वो फिगर याद करिए. This figure. P is here. Okay. तो P आप कहीं पर भी ले लो. PM डैश और PM इनका जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब M और M डैश का, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. वो कांस्टेंट होता है 2 times AE. Sorry, 2 times A by E. Sorry, 2 times A by. Is this clear? One directrix is x is equal to A by E. The other directrix is x is equal to minus A by E. The distance or the distance between them will be
twice a by e. तो आपका पॉइंट P किधर भी हो इलिप्स पे, m और m डैश का जो टोटल डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. pm and pm dash will change, but the total distance is never going to change. So what is the result then? The result is the sum of the focal distances of a point on ellipse is always constant. क्या आ गया वो distance? Twice a by e, eccentricity will go, it's 2. Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay. Cool. Okay. So let's start discussing the last conic, that is hyperbola. Now, it also has focus directrix property. In fact, all conics have. The only difference is that in hyperbola, the eccentricity e is greater than 1. Okay, eccentricity of any hyperbola is always greater than 1. Everything else is the same. So S is the focus, L is the directrix, and as P moves in the xy plane, it maintains this relationship, SP equal to EPM. Okay, SP equal to EPM, this relationship is maintained, then you get hyperbola. Okay, now you can say, you see in the ellipse we said because of the eccentricity less than 1, that the point P is closer to the focus than the directrix. Here we can say that P is closer to directrix than to Q, because focal distance is SP. That's wrong, and I just let bad thoughts linger for too long. Okay, focal distance is SP and the distance to the directrix is PM, और PM को आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 1 से बड़ा है eccentricity, correct? तो P is closer to the directrix than to the focus. Raise your hands if you understand this. Okay. Now we will go to the details. आप derive कर सकते हो, इसका आगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आपको मिलेगा. कैसे पता ही है आपको, फिर भी लिख देते हैं. SP eccentricity times PM. We even did we wrote the same thing for parabola as well as ellipse, and we have to. Okay, there is no other way out. ठीक है, सिंप्लीफाई करो, hyperbola will check. Okay, so we now return to the standard form of the equation of that. The standard form is similar to ellipse but not same. तो क्या फर्क है दोनों में? In ellipse we have a plus sign here, in hyperbola we have a minus sign. ठीक है? And just like in the ellipse we brought a new number or new letter b as a denominator of y, we do the same thing here, but there is a change here, and that change is ellipse में b squared को कैसे हमने बताया था? It was a squared into 1 minus e squared, because we knew that eccentricity was less than. In the case of hyperbola, we know that eccentricity is greater than 1. तो आपको b squared को मतलब पॉजिटिव नंबर आपको चाहिए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे e squared minus 1 into a squared को b squared सेट करो. Okay, b squared is set as a squared into e squared minus 1. Okay, now let's look at the figure here. The figure has two branches. Branch 1, branch 2. Okay, and because of the way the equation is there, it is symmetric about both x-axis as well as y-axis. Even powers of x symmetric about y, even powers of y symmetric about
x. This curve will intersect at 2 points with x-axis, but it doesn't intersect y-axis. उसका रीजन आपको यहाँ पे मिलेगा. अगर आपने इसको 0 किया, if you want to find its intersection with y-axis, तो आपको मिलेगा y squared equal to minus b squared. तो y आपको मिलेगा प्लस और माइनस ib imaginary root. तो clearly the hyperbola doesn't intersect the y-axis. This hyperbola, ठीक है, doesn't intersect the y-axis. What are the other details? Look, this is the first focus here, S. This is S dash. SP is equal to EPM, and we know that it is closer to the directrix than to the focus. वो आपको पता है, ठीक है? Okay. What other details do you see here? Let's try to find the distance between the points A and A dash. तो A होता है हमारा a, 0, A dash होगा minus a, 0, तो A dash होगा हमारा 2a. In ellipse, we had called it major axis. In the case of hyperbola, we call it transverse axis. Okay. Although we know that hyperbola doesn't intersect the y-axis, हम 2 points उस पर ले लेंगे y-axis पे, 0, b, 0, minus b, analogous to ellipse, and this length, which is 2b, this is called as conjugate axis. Okay, this is called as the conjugate axis, and the equations of the direct traces, they are no different from what they were for ellipse. तो direct traces के equations वही आएंगे. क्या? x is equal to plus or minus a by e, और फोका भी वही आएंगे जो ellipse के लिए थे, plus or minus a, c. ठीक है? So that is the similarity. In fact, even the latest rectum LL dash, इसका लेंथ आप निकाल सकते हो. LL dash is the latest rectum. The length is 2b squared upon a. तो ये सब चीज़ें इलिप्स के साथ सेम है. हालांकि 2 टर्म्स हमने नए इंट्रोड्यूस किए. We didn't call a dash major axis, we called it transverse axis. We didn't call b dash minor axis, we called it conjugate axis. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है. Also remember this relation, sometimes it is important in solving the problems. Cool. We have already covered this, so I won't be spending some time again. फोका का हो गया प्लस और माइनस a, 0, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b. हाँ, सेंटर के बारे में बात करेंगे. सेंटर इज वेयर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीट. ओके, तो हाइपरबोला को 2 ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक y एक्सिस, एक x एक्सिस. दे मीट एट द सेंटर. करेक्ट. तो सेंटर इज ओरिजिन. लेटेस्ट सेक्टम का 2b स्क्वायर अपॉन ए लेंथ होता है. ठीक है. ओके, नाउ एज यूजुअल let us see the results pertaining to this specific case of hyperbola. x squared upon a squared minus y squared upon b squared equal to 1. अभी यहाँ पर अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस चाहिए तो कैसे आप उसको निकालोगे? लुक, except for parabola, for circle, ellipse and hyperbola we use trigonometric functions. However, for ellipse, because we had a positive sign, we could use functions cos theta and sin theta there. But for hyperbola we cannot, क्योंकि वो difference 1 है, तो sum 1 नहीं है उनका. ठीक है. तो here we parameterize the hyperbola
using the identity 1 plus tan squared theta equal to sec squared theta. Okay, and we note that the difference between sec squared theta and tan squared theta is always 1. So we let x as a sec theta, we let y as b tan theta, and then if you put these here, आपको समझ में आएगा कि वाकई में वो आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद a को कैंसिल का होगा, b will also get cancelled because of b squared, and then it will be sec squared theta minus tan squared theta, which is okay. Here the angle theta that we have used is essentially the same angle which we use in polar coordinates. जो r theta वाला एंगल है ना, वही एक्सेंट्रिक एंगल है. ओके, चाहो तो लिख देता हूँ यहाँ पे. एक्सेंट्रिक एंगल क्या है? eccentric angle is the angle that the radius vector OP makes with the positive direction of x-axis. Okay, this is radius vector, ये theta है. Okay, that is theta. तो वो आपका जो r theta वाला एंगल थीटा है वही आपका eccentric angle हो जाएगा. Okay, now I have a question for you. That question is, between 0 to 2 pi, do we take all values of theta or some values of theta are missing or don't appear? Think about it. When you are at a, what is happening? Theta is 0. Okay, when you are at a dash, what is theta? Pi. तो मैं ये कह रहा हूँ कि as we start moving along the hyperbola from a, theta increase तो हो रहा है. Okay, theta is going to increase. But are there any values of theta which are not allowed or which are prohibited? Tell me. Question clear है सबको? Yes? Pi by 2. Okay. Only pi by 2? Okay, theta pi by 2 and theta 3 pi by 2 are prohibited. Are there any other values which you think are prohibited or all values are allowed? Others, what do you think? Question clear है क्या? जैसे आप इस हाइपरबोला पे और दूर दूर तक जाओगे तो ऑब्वियसली थीटा बढ़ रहा है, ये तो आपको दिख रहा है ना, it is increasing. But my question is, as she correctly said, pi by 2 cannot exist because for pi by 2 the point has to be on y-axis. लेकिन y-axis पर तो हमारा point कभी जाएगा नहीं. Correct? But are there any other values less than pi by 2 which are prohibited? Yes, what do you think? Think about it. When we come to the discussion on asymptotes, I will answer that question. Okay? Question is, are other values of theta prohibited? Okay, we will come to that. Okay, so parametric equations is clear. Now we go to tangents and normals. अभी ये आपको पता है तो प्लीज बताइए. Suppose we have a point p x1 y1
on hyperbola x squared upon a squared minus y squared upon b squared equal to 1. What is the equation of the tangent? x1 by a squared minus y1 upon b squared equal to 1. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को मैंने आपको बोला है कि मत उसको ध्यान में रखो. You know the slope of tangent anyway. What is the slope of tangent? It is dy by dx. Okay, get dy by dx from derivatives or from slope of tangent. ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? एनीवन? m tangent, it would be x1 b squared upon y1 a squared. ठीक है, we have used the standard logic that if the equation of the straight line is ax plus by plus c equal to 0, तो उसका स्लोप क्या होगा? माइनस a by b. करेक्ट. तो वो यूज करके ये स्लोप आ गया. फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हो. y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव y1 a स्क्वायर्ड अपॉन x1 b स्क्वायर्ड x माइनस x1. अभी ये कैसे आया माइनस y1 a स्क्वायर्ड अपॉन x1 b स्क्वायर्ड? बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. Product of slopes of two perpendicular lines is -1. Slope of tangent is known. Slope of the normal can be easily obtained. Clear this point? Not recommending you to memorize the equation of the normal. Tangent का करो, वो सेम ही है, right? Clear है यहाँ तक? हाँ सर. Yes, Clear sir. है, ठीक है. तो we will now just keep checking everything. Go to GeoGebra now. Let's go to the hyperbola. Some values. X squared by say 9 minus y squared by 4 equal to 1. तो ये हो गया आपका हाइपर. ठीक है, अभी आपको एक पॉइंट लेना है हाइपरबोला पे. तो लेट्स टेक इट. नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड x into x1 upon e squared minus y into y1 by b squared equal to 1. We are expecting tangent. It is. Okay, we are expecting a tangent and it is indeed a tangent. Clear? And then you can easily find the normal also. Okay. Now, let's also try to find out the eccentricity of the ellipse, of the hyperbola. अभी एक्सेंट्रिसिटी के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था वो फॉर्मूला था b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड इनटू ब्रैकेट वो एक्सेंट्रिसिटी स्क्वायर -1. करेक्ट. तो वी कैन सॉल्व इट. अभी हम इसका एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे. एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक इक्वेशन 1 इट इज 1.2. अब ये वाकई में 1.2 है क्या? कैसे चेक करोगे? गो टू a स्क्वायर्ड विच इज 9 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1.2 आया है इसका स्क्वायर -1. व्हाट नंबर आर वी एक्सपेक्टिंग? 4 विच इज द b स्क्वायर. इज ऑलमोस्ट देयर विच मीन्स 1.2 इज अप्रोक्सीमेट और भी थोड़ा उसमें आएगा. ठीक है, तो वी हैव वेरीफाइड द फॉर्मूला. b स्क्वायर इज इक्वल टू a squared into bracket e squared minus 1. Let me show that formula once again. This one, ये formula. b squared is equal to a squared into e squared minus 1. Okay, I'm telling you ये formula काफी important है. Okay, we put the value that GeoGebra gave for eccentricity, squared it, subtracted 1 from it, multiplied it by 9 a squared, we got b squared. ठीक है. Okay, so that's tangents and normals for hyperbola. Tangents equation is t equal to 0. Okay,
Now, other things are very similar to ellipse. Condition for tangency, y equal to mx plus c can be a tangent when c squared is a squared m squared minus b squared. तो यहाँ पे और एक कंडीशन भी आपको लगेगी, वो कंडीशन ये है कि a squared m squared has to be greater than b squared, वरना tangent possible नहीं है. क्यों नहीं है possible? Because c squared can't be negative because we are dealing with real numbers. So unlike circle and ellipse, जहाँ पे tangent का कोई भी slope possible है, so basically line of any slope can be tangent to a circle as well as to an ellipse. It's not the case for hyperbola. The line of any slope cannot be a tangent and the answer is clear because of this negative sign. ठीक है, तो मिनिमम क्या होना चाहिए उसका स्लोप? क्या हम निकाल सकते हैं क्या m मिनिमम? या वी कैन. m minimum should be b by a. Is this clear? Why the minimum slope condition is there? Otherwise we can never draw a tangent. समझ में आ रहा है ये सबको? Clear? Yes, sir. Okay. अभी चेक करेंगे. Okay, let's check it. Let us write this point. Okay, और eccentricity का भी हम डिलीट कर देंगे. एक मिनट रहने दो कोई. Let's keep it. अच्छा. I'm going to take a point here. And I wish to draw the tangent from this point, okay, from this point to ellipse, to heaven. So tangent passing through this. एक मिनट, हमें अभी ये कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है. What can we do? To implement this condition, x plus or minus a squared minus b squared. Okay, let's do one thing. हम पहले b से tangent निकालेंगे. Okay, let's draw tangents properly. Okay, tangent from b on hyperbola equation. ठीक है, तो ये तो हो गया. We will take this tangent which is in the second quadrant, first quadrant, fourth quadrant. ठीक है, तो ये tangent ले लेंगे. GeoGebra is calling it f, so we will go for the tangent f. We will go for tangent f. अभी ये जो tangent है ना, इसका जो equation है, okay, इसका जो equation है, ये हम लोगों को y equal to mx plus c इस फॉर्म में चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? I will first of all keep y on LHS. Okay, I will send 11.12x on the right side. Okay, of course it will acquire a negative sign. So negative 11.12x. ये तो नहीं चेंज नहीं होगा. 33.07. That is not going to change. अभी इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना चाहिए? 2.16 से डिवाइड करना चाहिए. Correct. So this is now the line h and you can see that it is overlapping with f. अगर मैं वो हाइड करूँगा तो वो लाइन थोड़ी कम ब्राइट हो जाएगी. The moment I bring in h,
इट्स सो बेसिकली इट्स द सेम है. तो हमें अभी क्या चेक करना है? हमें अभी ये चेक करना है कि इसका जो c है दैट इज 33.07 अपॉन 2.16, इसका जो स्क्वायर है वेदर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड m स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड और माइनस b स्क्वायर्ड, वो हम लोगों को चेक कर. ठीक है, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कंडीशन फॉर टेंजेंसी. कैसे करेंगे? पे अटेंशन. सबसे पहले तो हम a स्क्वायर्ड m स्क्वायर्ड प्लस और माइनस b स्क्वायर्ड का वैल्यू सॉरी माइनस b स्क्वायर्ड का वैल्यू निकाल. ओके, a स्क्वायर्ड m स्क्वायर्ड प्लस और माइनस b स्क्वायर्ड, लेट्स फाइंड आउट. a स्क्वायर्ड इज 9, a squared is 9 into minus 11.12 by 2.16, ये हो गया a squared m squared, माइनस हम लोगों को करना है b squared which is 4. ओके, वो कितना आ रहा है हमारा? 234.53 आ रहा है. अभी हम लोगों को किसका स्क्वायर करना चाहिए? 33.07 अपॉन 2.16 का स्क्वायर, क्योंकि वो हमारा c है, y इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, तो लेट्स डू इट. वी आर एक्सपेक्टिंग अ नंबर क्लोज टू 234.53. See, it turned out to be 234. That's how the condition for tangency is verified. So given any slope m, okay, given any slope m, we have to first make sure कि वो b by a से related है. ओके, b by a से बड़ा होना चाहिए हमारा स्लोप, तभी tangent possible है, वरना tangent possible नहीं. Is this clear to everyone? Apart from condition of tangency, ellipse के लिए कोई ऐसा condition नहीं था. Line of any slope can possibly be a tangent. Yes, have you followed this? Yes, sir. Clear? Okay, so let me just add that point here. Unlike yes, Shashwat. So it will be the root of a square m square minus b square in the second equation, right? Yeah. Also, why are you listening to such a loud music? I had to mute you. Me, sir? Yes. When? Perhaps you are not there. Even now I can hear the music. There's no music, sir. Others, can't you hear that music? Yes? Oh, sir, sorry, my Spotify was on and it was on a different speaker. Okay, unlike circle and ellipse, where line of any slope can be a tangent, for a hyperbola, okay, for a hyperbola, only those lines with slopes greater than b by a can be tangents. This can be seen from condition for tangency. ठीक है, you cannot have c squared less than, or you cannot have c squared negative. a squared minus m squared cannot be less than b squared. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना. इस पर मैंने तो कभी देखा नहीं है, एटलीस्ट आइसर में क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, ओके, कूल. देन वी हैव कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ये आपको पता है व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अ पॉइंट विल बी गिवन not on the conic
such that tangents are drawn from that point. What will you see? The chord of contact is the chord joining the two tangents' point of contact with the conic. Okay, मतलब अगर sketch visualize किया तो कैसे देखेगा? Suppose this is the hyperbola. ओके, मान के चलो ये आपका एक पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ से निकाला, दूसरा यहाँ से निकाला सपोज, तो ये हो जाएगा उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. कूल. Does anyone remember the equation of chord of contact? Yes. So the same as tangent equation. Yes, very good sir. टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी इक्वेशन होता है. x(x1) by a squared minus y(y1) by b squared equal to 1. चेक करेंगे. ओके, चेक करेंगे. तो b है हमारा पॉइंट, करेक्ट, b इज आवर पॉइंट. अभी हम लोगों को क्या चेक करना है? x into x coordinate of b upon 9 minus y into y coordinate of b upon 4 equal to 1. We are expecting a line passing through these 2 points. See, that's the line. तो ये हो गया हमारा chord of contact. ठीक है. वेल, वी हैव वेरीफाइड इट ऑल्सो फॉर एलिप्स कि हम पहले वो टेंजेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे हाइपरबोला के साथ, फिर उसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही रहेगा. ठीक है. तो आई होप you got it, so I'm not repeating that exercise of finding the points of intersection on GeoGebra. ठीक है. So this is how the chord of contact is going to be. Got it? x(x1) upon e squared minus y1 upon b squared is equal to 1. ठीक है. Okay. All right. Now let's proceed towards equation of pair of tangents. तो ये joint equation है. Same thing for ellipse. क्या condition है, क्या equation है? S(s1) is equal to t square. ये S(s1) क्या है? S is our huge one. X squared by a squared minus y squared by b squared. What is S1? x1 squared by a squared minus y1 squared by b squared minus 1. On this side, it is x(x1) by a squared minus y(y1) by b squared minus 1 का square. Okay. Please note that this is same as that of ellipse and even of our circle. ठीक है. तो चेक करेंगे. S(s1) is equal to t squared, pair of tangents from x1. Let's see. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हटा देंगे. अभी हम लोगों को b के कोऑर्डिनेट्स और हाइपरबोला का इक्वेशन यूज करके वो जो दोनों टेंजेंट्स है ना उसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है. ठीक है. तो मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ. ठीक है. सो द टेंजेंट्स आर इन नाउ रेड एंड ब्लू कलर. अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? ओके, व्हाट शुड वी डू? वी शुड गो टू S(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर. तो S क्या है? हाइपरबोला का इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज 0. So it will be x squared by 9 minus y squared by 4 minus 1. ये हो गया आपका s. ठीक है. अभी s1 तो क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ b का स्क्वायर अपॉन 9 एक मिनट. ये
I don't know what it did, but okay, anyways, I think we can still recover it. Okay, minus S1 है ना, तो y coordinate of b का square divided by 4 minus 1, तो ये हो गया SS1 इक्वल टू हम लोगों को करना चाहिए t स्क्वायर। अभी t स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? t स्क्वायर के लिए सबसे पहले यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 1, and here it will be not x squared not y squared, x into x coordinate of b minus y into y coordinate of b. Sorry, just went off. I don't know what is happening. Let me delete this. Okay, one last try. Bracket equal to bracket square. ठीक है, तो यहाँ पे x squared by 9 minus y squared by 4 minus 1, यहाँ पे x coordinate of b का squared upon 9 minus y coordinate of b का squared upon 4 minus 1, और यहाँ पे आएगा x1 minus y1 upon b squared minus 1, x into x coordinate of b upon 9 minus y into y coordinate of b upon 4 इक्वल। अभी मैं 4 अगर टाइप करूँगा तो ये जो हमारे टेंजेंट्स है ना, इस पर दो ब्लैक लाइंस ओवरलैप करने चाहिए डेटा। ठीक है, तो that's how the joint equation is obtained. S is the first bracket, S1 is the second bracket, and on the right hand side we have got t square. If I hide this, हम लोगों को वो ओरिजिनल दो टेंजेंट्स मिलेंगे through B. And see, even if I move it, though those black lines are still going to overlap with the blue and the red. ठीक है, SS1 equal to t square. तो ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Cool. Okay. Yeah, now we move to director circle. What is director circle? Director circle is locus of a point from which tangents drawn to a hyperbola are at right angles. Okay, उसका इक्वेशन है x squared plus y squared is equal to a squared minus b squared. चेक करेंगे, ठीक है, लेट्स चेक इट फॉर आवर हाइपरबोला. ओके, तो क्या इसमें हम लिखेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट such that tangents drawn from it to given hyperbola are perpendicular to each other. ठीक है, तो let's see this now. Hiding this. Okay, तो सबसे पहले तो हम लोगों को सर्कल निकालना पड़ेगा. x squared plus y squared equal to 5, which is 9 minus 4. ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल. लेट्स पिक अ पॉइंट ऑन इट. Point on equation 4. This is point C. Oh, sorry, equation 5. No, equation 5. Yeah, equation 5. So C never leaves the circle. अभी C से tangents निकालेंगे hyperbola को. Tangent from C on the conic equation 1.
ओके, तो एंगल भी निकाल लेंगे उसका, एंगल बिटवीन लाइन विच लाइन्स I and J or J. Let point C move. The tangents are always at right angles. ठीक है, that is the director circle. अभी शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे हमने a squared minus b squared लिखा, ओके यहाँ पे हमने a squared minus b squared लिखा, तो this is applicable only when a is greater than b, correct? So suppose we take a hyperbola whose b squared is greater than a squared, then what will happen to the director circle? Does anyone know the answer? क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्वेश्चन ये है कि अभी हमारा हाइपरबोला कौन सा है? वी आर सिलेक्टिंग हाइपरबोला x squared by 9 minus y squared by 4 equal to 1. So here a squared is 9 which is greater than b squared which is 4. ठीक है, तो इसीलिए a squared minus b squared हमारा पॉजिटिव आ रहा है. अगर हम x squared by 4 minus y squared by 9 ये हाइपरबोला सिलेक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? चेक करेंगे, ओके चेक करें. बाय द वे, डज एनीवन नो द आंसर टू दिस? Would it be plus, not like would it be symmetric across the y-axis? No, that is y squared by 4 minus x squared by 9. Oh, okay. I'm not sure then. So will it be b square minus a square? चेक करेंगे. तो मैं इसके लिए दूसरा पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके. तो विच हाइपरबोला डिड वी सिलेक्ट? x squared by 4 minus y squared by 9 equal to 1, ओके. और अभी श्रेय has suggested the same circle, सही है ना श्रेय? यही बोला था ना आपने? Yes. ओके. Point on equation 2. Point on equation 2. इसके बाद tangent from A on equation 1. ओके, दिख रहा है क्या 90? No, sir. हाँ नहीं दिख रहा है. तो फिर क्या इसका जवाब हो सकता है? यस. तो इसके अभी दो पॉसिबिलिटीज है. एक पॉसिबिलिटी ये है कि डायरेक्टर सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट. ये एक पॉसिबिलिटी है, और it exists but we don't know its equation. Rather, it exists but its equation is definitely correct. तो क्या करने का, अभी कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? इलिप्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि वहाँ पे a squared plus b squared था, करेक्ट. बट फॉर हाइपरबोले लाइक दिस x squared by 4 minus y squared by 9 equal to 1 where a squared is less than b squared, at least
considering our current case, we can conclude that the equation is not x squared plus y squared is equal to a squared minus b squared. Come on. ठीक है, तो I leave this question open. थोड़ा आप भी सर्च करिए, अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो हम इसका आंसर कल दे देंगे. इधर मैं आपको प्रूफ सेंड करूँगा, या अगर आपने भेजा तो that will be good. But you have now understood that the case of hyperbola is not as easy all the time as it is for ellipse. सबसे पहले तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमने देखा था, जैसे कि इलिप्स में कोई भी स्लोप हो तो टेंजेंट पॉसिबल है, हाइपरबोला के लिए वैसे नहीं है. ठीक है, क्लियर है व्हाट यू वांट टू प्रूव? ठीक है. Okay, now what Mangalam said will also take care of that possibility. She said, let what did you say, y squared by 4 minus x squared by 9 equal to 1. यही कहा था ना आपने? Yes, sir. Okay. Squared by 9 minus y squared by 4 equal to 1. ये हमारा पहला हाइपरबोला था. ठीक है, लेट मी हाइड द टेंजेंट्स. अच्छा दैट ओके, पहला हाइपरबोला हमारा था 9 4 9 4. ठीक है, अभी यहाँ पर भी आप देखिए कि इट्स नॉट एक्चुअली मेकिंग इट अप बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन. अगर आपने टेंजेंट्स निकाला यहाँ पे फ्रॉम ए टू विच कोनिक, इक्वेशन 3. ठीक है, लुक इट्स नॉट 90, इट्स नॉट 90, तो वो पॉसिबिलिटी तो हमने कवर कर दी. लेकिन अगर हम इस हाइपरबोला का इक्वेशन चेंज करते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज y squared by 4 minus x squared by 9 equal to 1, if I take y squared by 9 minus x squared by 4 equal to 1, और अगर हम उसको अभी टेंजेंट निकालेंगे, ओके, डज इट, will it work? It will. Let's see. Okay, it is working. See, the tangents are indeed at right angles. Correct. So the same director circle or same circle is functioning as director circle for two hyperbolas. Excuse me. One hyperbola is x squared by 9 minus y squared by 4 equal to 1, जो पहले आपने कंसिडर किया था वो, और दूसरा y squared by 9 minus x squared by 4. ठीक है, so what we have done is we have not only shifted x and y, okay, we have not only shifted x and y, rather we only shifted x and y and made the changed their signs. Okay, let me repeat that and write it here. If a squared is greater than b squared, then x squared by a squared minus y squared by b squared equal to 1, and look carefully, equation 5 is y squared by 9 minus x squared by 4 equal to 1. Y squared by a squared minus x squared by b squared equal to 1. Same director circle.
I hope you followed this. Yes? Yes, sir. Okay. Cool. Let's go ahead. Tangent and normal at the point bisect the angle between focal radii at that point. This is also a very well-known result. We stated it for ellipse, and now we are going to check it for hyperbola. Okay, let's do it. So we'll return to this figure. डायरेक्टर सर्कल को हाइड करेंगे, सी को हाइड करेंगे, टेंजेंट्स को हाइड करेंगे, एंगल को भी हाइड करेंगे. तो अभी हमारे पास सिर्फ हाइपरबोला जो है इक्वेशन 1. ओके, तो लेट्स गो टू द फोका. ई एंड डी आर द फोका. ठीक है, अभी हम लोगों को एक पॉइंट लेना है ऑन हाइपरबोला. Okay, we have to take this point and we have to join D, F and FE. Segment DF, segment EF. अभी हम लोगों को इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है. एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल D F E. Okay, and we would like to see whether this is indeed the tangent at F. तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? Well, we have to draw the tangent itself and see if it is overlapping with the angle bisector. ठीक है, we have to draw the tangent at F. To equation 1, we are expecting that it overlaps with the black line. It is. एक मिनट, हम इसका कलर चेंज करके उसको वेरीफाई करेंगे. लेट्स मेक इट राइट. ठीक है, अब देखो, अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर को हाइड किया तो हम लोगों को टेंजेंट मिल रहा है. ओके, वी आर गेटिंग टेंजेंट एट F. Suppose we bring in the angle bisector, then what we will find is it is overlapping with the red line. Correct? Which proves that tangent and of course normal, they act as angle bisector. ठीक है? और this is true even if we move this point anywhere. ठीक है? Vertical है तो angle है 90-90, है ना? And this. ठीक है, got it. Can check it even here. Same property shared by both ellipse and hyperbola. Cool. Okay, तो ये मैं पेस्ट कर देता हूँ. One second. This bisects this. ठीक है, cool. Now we will talk about some things which don't exist for ellipse. Okay, first is the asymptotes. Okay, and now we will also answer two questions which we raised in our previous discussions in the same lecture, जिसमें पहला था वो eccentric angle का value. और range of values. Okay, values of eccentric angle, and the second case is the minimum value of the slope. Okay, the minimum value of the slope. Okay, what was it? B by. Okay, B by. किधर है वो हमने लिखा था? Condition for tangency में हमने लिखा था B by. ठीक है, so we'll answer both these questions. Okay, so what I will do is I will plot two lines. Okay, I will plot two lines
one having slope b by a and the other having slope minus b by a, and see what happens to these lines when we connect them to the hyperbola. Okay, what happens to these lines when we connect them to the hyperbola? X squared by a squared minus y squared upon b squared equal to 1. Check करेंगे. Look here. ओके तो सबसे पहले हम लोगों को कौन सी लाइन निकालनी है? y इक्वल टू b बाय a x. Okay, and the second line that we are going to draw is y equal to minus 2 by 3x. Okay, क्या दिख रहा है आपको अभी? Okay, first of all, you see that these lines are actually getting closer to the hyperbola, but they never really meet the hyperbola. Okay, such lines are called asymptotes to hyperbola. Okay, such lines are called asymptotes to hyperbola. और इनका जो joint equation है, okay, the joint equation of these lines. Now we can find the joint equation because we know from pair of sentence कि कैसे निकालते हैं दोनों लाइंस का joint equation. क्या करना चाहिए हम लोगों को? सबसे पहले तो एक साइड इक्वेशन की जीरो करनी चाहिए, तो वी विल गेट b अपॉन ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस वाई इक्वल टू जीरो. और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? x को इस तरफ लेके आओ, सो b अपॉन ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. दिस इज द जॉइंट इक्वेशन. सॉरी, ठीक है. तो वो a प्लस बी ए माइनस बी यूज करो और चेक करो क्या मिल रहा है. बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. डिवाइड बाय बी स्क्वायर. Sorry. See. Okay, so these are actually the asymptotes to hyperbola. Have you understood this? Yes? Yes, sir. Yeah. Clear. इसका मतलब अगर आपने कोई भी एक लाइन सिलेक्ट की जो ओरिजिन से पास हो रही है, okay, this is important because we are now coming to this. Okay, we are now coming to that. Listen to me carefully. If we take any line which is passing through origin, but which lies in this angular region and this angular region in the xy plane, tell me, do you agree to this? It is never going to intersect the hyperbola. Agreed? Yes. It is never going to intersect the hyperbola. इसका क्या conclusion आपको पता चल रहा है? Okay, what is the conclusion that you can draw from this? Pay attention. The conclusion is, for range of eccentric angles, we note that theta should be in between. सबसे पहले क्या आएगा आपका? tan inverse of b by a
और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस b by a. Is it clear? Yes. Have you followed this or no? Yes, of course. तो एक्सेंट्रिक एंगल्स के लिए ये रेंज है. इसके बाहर का अगर आपने एंगल लिया तो वो कभी भी एक्सेंट्रिक एंगल नहीं हो सकता. Got it? You can see that. Okay, you can see that from the figure. ठीक है. But then what about the slope? Okay, what about the slope of tangent then? इसके लिए आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो. mn is equal to b by seems to be contradicting this, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि थीटा tan इनवर्स ऑफ b by से ज़्यादा नहीं हो सकता, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि mn ही b by a होना चाहिए. Well, see, if you now enter this region and imagine a line passing through origin or any line parallel to that, आपको क्या मिलेगा? You'll find that this line is always going to intersect the hyperbola at two different points, considering the symmetry. So that can potentially never be a tangent. Clear? That can potentially never be a tangent. However, if you consider lines which have slope greater than that of the blue line, okay, sorry, the orange line, जैसे कि वर्टिकल लाइन अगर आपने चेक किया तो उसका इंक्लिनेशन b by a से बड़ा है, इट्स नेट, और tan इनवर्स ऑफ b by a से बड़ा है. ठीक है. तो ये जो दोनों एंगल्स है, ये किसे प्रोहिबिट कर रहा है? दिस इज प्रोहिबिटिंग द एक्सेंट्रिक एंगल फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड tan इनवर्स ऑफ b by a और फॉलिंग बिलो tan इनवर्स ऑफ माइनस b by उस. और ये जो रीजन है द ब्लू वन, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टेंजेंट्स जो है उनका स्लोप, क्या वो जो टेंजेंट्स है उनका स्लोप अगर वो वो ब्लू जोन में है उनका स्लोप, तो हम वैसा टेंजेंट हाइपरबोला को नहीं निकाल सकते. मेक सेंस? Yes, sir. यस. ओके, तो m in तो हो गया. ठीक है. Well, let me just add this. Okay. For range of slopes, okay, for range of slopes of tangents, we note that, okay, वो जो इनइक्वालिटी थी वो एक्चुअली हमने आई वुड से कंप्लीटली सॉल्व नहीं की क्योंकि स्क्वायर था, तो एक बार वो ठीक से सॉल्व करेंगे. Okay, so m squared should be greater than b squared by a squared. So m should be greater than b by a or m should be less than minus b. ठीक है. क्लियर? ए b by से ज़्यादा होना चाहिए या माइनस b by से कम होना चाहिए? Have you followed this? Well, we missed the point that because we took the square root, the negative roots are also possible. We missed that point and we have covered it. ठीक है. Now, one last point remains to be discussed, and that is rectangular hyperbola. Okay, rectangular hyperbola. इसके बारे में आपको दो चीज़ें ही बताऊंगा. First is its eccentricity. The eccentricity of rectangular hyperbola is √2. Okay, the eccentricity of rectangular hyperbola is √2. Let us invoke the relationship between b, a and e that we had written for hyperbola.
तो b स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर -1 विच कंक्लूड्स दैट a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर्ड माइनस y स्क्वायर्ड इक्वल टू 1, सॉरी a स्क्वायर थोड़ा सर्कल की तरह होगा हो रहा है ये, जैसे इलिप्स में a और b सेम रहेंगे तो हमें सर्कल मिलेगा, वैसे हाइपरबोला में अगर a और b सेम हो जाएंगे तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ओके, एनालॉगस टू ellipse becoming a circle when a equals to, ठीक है, when a equals to। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट, इफ axes are rotated by 45 degrees, then the equation transforms to xy equal to constant। ओके, तो अगर आप चाहो तो ये आप होमवर्क के लिए ले सकते हो। क्या लेना है आपको होमवर्क के लिए? ये वाला। ओके, चाहो तो यहाँ पे मैं कर दूंगा या फिर आप होमवर्क के लिए ले सकते हो। व्हाट वी हैव टू डू इज दिस, सपोज दिस इज आवर हाइपरबोला। एक मिनट, वो हम स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे उसका। C4, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक्सेस को रोटेट करना चाहिए बाय 45। ठीक है, तो ओके, if we rotate the axis in such a way that the x-axis becomes y equal to x, मतलब ये लाइन, ओके, एंड y-axis becomes y equal to minus x, मतलब ये लाइन, तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इफ यू रोटेट द एक्सेस। अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इसको। इफ यू आर ओके, टेक इट एज होमवर्क।